कर देते हैं। भारत भी खुश और हमारा कोई नुकसान भी नहीं होगा, इसलिए कि वैसे भी निकम्मे निखट्टू किसी काम के तो रहे नहीं है, तो इनको उठाकर किसी को दे दो तो उससे बेटर है कि भारत को ही दे दे। तो मोदी जी भी जरा खुश हो जाएंगे और जरा पानी शानी जो बंद करने की बातें कर रहे हैं ना, तो वो बातें जरा करना बंद कर देंगे। बल्कि ऐसा ना होगा अभी फ्लड आने वाले, अभी मानसून की बारिशें शुरू हो गई है और मोदी जी खुशी के मारे, पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि जी हम हाफिज सईद और मसूद अजहर जो है भारत को दे सकते हैं। इस खुशी में मोदी जी जो है वो जब ज्यादा बारिशें होंगी, आपको तो पता ही है ना, बिलावल साहब ने भी कहा था जब बारिश होती है तो पानी आता है और जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। तो जब वो ज्यादा पानी आएगा तो मोदी जी कहेंगे सारे गेट खोल दो और सारा पानी पाकिस्तान में भेज दो, यहाँ पे हम लोग सारे चबड़ चबड़ कर रहे होंगे। लेकिन बात सारी ये है कि मुझे ये लगता है कि अब पाकिस्तान ने सोचा है कि ये लोग कब से मांगे जा रहे हैं भाई। 5-6 साल तो मुझे हो गए इंडियन टीवी पे जाते हुए। पहले दिन जब मैं गई थी वो दिन है और आज का दिन है। ये लोग हर शो में बुलाकर कहते हैं हाफिज सईद दे दो, हाफिज सईद दे दो, हाफिज सईद दे दो। और अब जब हम देने को तैयार हैं, हम कह रहे हैं ले लो भैया, हमारे किस काम का, ये निकम्मा निखट्टू आप ही ले जाओ, शायद कोई मटर वटर ही छील दे। तो बात ये कि अब इंडियन मीडिया कह रहा है कि ऐसे कैसे हम ले लें, है हमने मतलब ठीक है हमने मांगा था, लेकिन ऐसा थोड़ी कि आप दे ही दोगे। लेकिन भाई आप लोग ले लीजिए, इसलिए कि हमने उसी तरह के हो सकता है 10-20 और तैयार कर लिया, हमारा क्या पता भाई, खाली थोड़ी बैठे रहते हैं हम लोग आप लोग की तरह। लेकिन बात सारी ये कि हाफिज सईद और मसूद अजहर अब हो गए एकदम बेकार, जगह जगह पे इनका नाम खराब हुआ है। हर जगह बच्चे बच्चे को पता है कि ये लोग टेररिस्ट हैं, तो इसलिए कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल तो रहे नहीं है। हमने इनको हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है, जेल में नहीं डाला, ये याद रखिएगा। जेल में जो बैठे चक्की पीस रहे हैं ना, उनका नाम है इमरान खान। लेकिन हाफिज और इमरान खान टेररिस्ट नहीं है, वो तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। उससे पहले क्रिकेट क्रिकेट खेला करते थे और हाँ वर्ल्ड कप भी ले आए थे एक बार। तो इमरान खान जेल में है और चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। और उसके बाद ये साहब जो है हाफिज सईद, इनको जी हाँ हमारे यहाँ साहब कहा जाता है, बड़ी इज्जत की जाती है। लेकिन बात सारी ये कि बिलावल साहब की ये बात सुनने के बाद कि बिलावल साहब ने कहा कि हाफिज सईद को भारत को दे देंगे, उसके बाद भी ना कोई प्रोटेस्ट हुआ, ना हाफिज सईद के घर से कोई बाहर आया, ना उसकी पार्टी से कोई बाहर आया। हाँ बस एक बेटा उसका आया और उसने आके एक वीडियो बनाकर और एक वीडियो मैसेज दे दिया है कि जी ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, मेरे अब्बा जी का नाम उधर दे रहे हो और उनको उठा के वहां पे भेज रहे हो। अरे शुक्र करो, आजकल तो भारत वीजा भी नहीं दे रहा। मेरे कितने सारे दोस्त हैं जो भारत जाना चाहते हैं और वीजा अप्लाई करने के बाद बैठे हुए, और मैं भी इंतजार कर रही हूँ उनका वीजा लगे, ये वहां से वहां जाए तो मैं एमडीएच की लाल देगी मिर्च का पैकेट मंगवाऊं। एक साहब मेरे लिए लेकर आए थे हमारे एक दोस्त, लेकिन अब वो खत्म हो गया वो पैकेट। असल में खत्म नहीं हो गया, वो बेचारे 4 लाए थे, लेकिन हमारे रिश्तेदार ऐसे है ना, जैसे ही पता लगा ओहो इंडिया से मिर्ची आई, हालांकि इंडिया की मिर्ची हमें लगती बहुत है लेकिन फिर भी इंडिया की मिर्ची आई, वो फिर मेरे घर से आके पैकेट उठा के ले गए कि छोड़ा मेरे पास। और अब वो मेरे पास भी खत्म होने लगा। खैर मैं अपनी दो बड़ी कहानी नहीं सुनाना चाह रही थी, मैं आपको ये बता रही थी कि वो अगर हालात अच्छे होते और वीजा शीजा लग रहा होता तब की और बात थी। लेकिन अब तो बिना वीजे के हम हाफिज सईद और मसूद अजहर देने को तैयार हैं। वैसे भी पानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 26 करोड़ लोग जिस कंट्री में रहते हो, उस कंट्री के पॉलिटिशियंस को यकीनन अपनी कंट्री के लोगों का सोचना चाहिए कि 26 करोड़ लोग जो हैं वो बेचारे प्यासे मर जाएं। उससे बेटर है कि हाफिज सईद और मसूद अजहर को उठाकर भारत को दे दीजिए, उसके बाद मोदी जी जाने थे, उनका काम जाने। अभी भी देखिए ना वो क्या नाम है, तवक्कुर राना, तो नाम इतने मुश्किल मुश्किल रख लेते हैं टेररिस्ट, मुझे समझ नहीं आती इनके नामों की। खैर तावुर हुसैन राना, हाँ जो तावुर हुसैन राना जो है जी, आपको पता है कि वो भी अमेरिका ने पकड़ के जो है वो भारत को दे दिया। अब भारत उससे पूछ रहे हैं क्या क्या उगलवा रहे हैं कि तोबा तोबा में तो कह भी नहीं सकते। यहाँ पे आप लोगों को अगर पता करना है तो आप लोग अपना मतलब इंडियन टीवी जो है जाके देख लीजिए, जहाँ पे वो बता रहे हैं कि तावुर हुसैन राना ने कैसे कैसे एलिगेशन लगाए हमारे सीधे साधे शरीफ शरीफ भाई लोग के ऊपर। तो जी अब ये कि जाहिर है कि भाई लोग पैसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन खैर एक खबर और भी चल रही है और वो ये कि आसिफ अली जरदारी साहब को हटाकर और वो बड़े अब्बू जो है ना उनको प्रेसिडेंट बनाने की बात की जा रही है। पहले भारत ने हमारे चैनल ब्लॉक किए, अब पाकिस्तान ने भी चैनल ब्लॉक करने के लिए कह दिया है। इस वजह से हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उसको हाईलाइट करते हैं। तो अगर ये सुनेंगे नहीं और ये अपने आप को सही करते रहेंगे, यही समझते रहेंगे कि हम सही हैं, तो फिर जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान फेस कर रहा है, चाहे वो इकोनॉमी हो चाहे वो सिक्योरिटी को लेकर हो, तो आपके ख्याल से क्या ये सही हो पाएगा? और पूरी दुनिया में इनके इस किस्म के लेटर्स का, इस किस्म के ब्लॉक करने का क्या इंप्रेशन जा रहा है? बहुत नेगेटिव इंप्रेशन जा रहा है। अभी वो जो
मुझे किसी ने फॉरवर्ड किया था वो जो लेटर है, वो इंस्पेक्टर, मेरा हम नाम ही है, सब इंस्पेक्टर एम वसीम खान उसका नाम है, उसकी तरफ से वो लेटर लिखा गया है यूट्यूब को। तो अब वो लेटर पूरे इस वक्त सोशल मीडिया पे घूम रहा है, पूरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर हो रहा है। और जियो न्यूज तक ने अभी खबर चला दी है उसके बारे में, लेटर भी दिखा दिया है, और दूसरे चैनल्स भी सब कुछ कर रहे हैं। तो अब इससे क्या इंप्रेशन जाएगा कि किस तरह का मुल्क है, किस तरह की रियासत है कि जो एक यूट्यूब चैनल से खौफजदा है। यार आपके अपने भी तो चैनल्स चल रहे हैं ना, आप अपने चैनल्स के जरिए जो आपके अपने खास लोग हैं उनको कहें कि ये जो कुछ कह रहे हैं इसको काउंटर करें आप। एग्जैक्टली होना तो यही चाहिए। अगर ये गलत बात कर रहे हैं, इनकी बात में कोई वजन नहीं है या झूठ पे मबनी है या ये फैला रहे हैं, तो फिर ये जो मुनीब अख्तर है और वो मुबशर लुकमान है और भी काफी सारे हैं, उन सबको कहें ना यार आप आए आके ये जरा आरजू काजमी जो कह रही है इसको काउंटर करें, मतियुल्लाह जान को काउंटर करें, असदूर जो कह रहा है उसको आके फॉल्सिफाई करें, आप ये करें आप। सर अपने शोज में बुलाएं, टीवी पे बुलाएं, सामने बिठाएं, बैठ के बात करें। ये तो जो इनको जो लोग पसंद नहीं होते या इनको लगता है कि ये सच बोल रहे हैं या इनकी कोई सच्चाई बता रहे हैं या इनके खिलाफ बोल रहे हैं, ये तो उनको बैन ही कर देते हैं कि ना टीवी पर आ सकते हैं ना कहीं आ सकते हैं। ये छुपाने से तो कुछ नहीं होगा। बहुत से लोगों को बैन किया हुआ है इस वक्त। हाँ, बहुत से लोग जो हैं वो इस वक्त बैन हुए हैं और वो टीवी पे नहीं आ सकते। वो टीवी के अलावा किसी भी ऑफिशियल मीडिया है उस पे वो नहीं आ सकते। तो बस ये एक यूट्यूब था एक जो अमेरिका से ऑपरेट हो रहा था, तो अब वो उसको भी लेटर लिख दिया है कि यार ये जो लोग हैं इनको इनके प्रोग्राम नहीं आने चाहिए यूट्यूब पे बैन करें इनके चैनल्स, पाकिस्तान में नजर ना आए, पाकिस्तान में नजर ना आए जी। तो अब बात ये है कि ये क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, 21वीं सदी है और हर तरह की आईपीटी भी अवेलेबल है लोगों को अब तो, यानी आप यहाँ घर में बैठ के दुनिया के किसी भी का कोई भी चैनल देख सकते हैं और CNN न्यूज है और BBC है, हर चीज अवेलेबल है, इवन इंडियन चैनल्स तक लोग देख रहे हैं यहाँ पे बैठ के। और बेशुमार YouTube चैनल्स हैं जो कि दूसरे मुल्कों से ऑपरेट हो रहे हैं। तो अब आप चाहते हैं कि आपकी जो आवाम है बिल्कुल गूंगी और बहरी हो जाए, वो ना कोई बात सुने ना कुछ बोलें, बस सिर्फ वही मीडिया पे नजर आए जो आपको पसंद है। तो आप ये किस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। देखें, डाइवर्सिटी और डिफरेंस इन ओपिनियन जो है, यही चीजें जरूरी होती हैं एक सोसाइटी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए, सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए। आप की जो भी पॉलिसी है उस पॉलिसी को अगर हर कोई कहेगा ठीक है, तो फिर उस पॉलिसी की खामियां सामने नहीं आएंगी। तो ऑपोजिशन का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है हर डेमोक्रेसी में, मीडिया का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है हर डेमोक्रेसी में। आप अगर ऑपोजिशन खत्म कर देंगे, आप अगर डिसेंटिंग वॉइसेस जो हैं मीडिया पे उनको खत्म कर देंगे, पाबंदियां लगा देंगे, तो फिर आपको तो सिर्फ वही फीडबैक मिलेगा ना जो आपके खुशामदी देंगे, ये भी सही है और ये भी ठीक है और ऐसा भी सही है और ये जो आप कर रहे हैं आहा हा कमाल, फिर तो यही होगा। तो सर उसका नुकसान भी तो होगा इनको, सर उसका नुकसान उठाएंगे ना अगर ये हर जगह से वाह ही लेंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मेरा पॉइंट है कि जब सिर्फ खुशामदियों की बात आप सुनेंगे तो आप फिर गहरे गड्ढे में भी गिर सकते हैं, क्योंकि खुशामदी तो यही कहते रहेंगे ना जी कि बस कोई बात ही नहीं जनाब, आप क्या बात है, आप जो कुछ कर रहे हैं, दुनिया अश अश कर रही है, आप चलते जाएं, आप आगे बढ़ते जाएं, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि आगे एक गड्ढा भी है। हाँ। तो इसलिए
आप जो डिसेंटिंग वॉइसेस हैं उनको आप इनकरेज करें, और ये सब लोग जो हैं असतूर हो या मतीउल्लाह जान हो, आप हो, और हम लोग सारे इस मुल्क के साथ हम सिंसियर हैं, हम पेट्रियाटिक सिटीजन्स हैं इस मुल्क के, हम इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे, ये आगे जाए, दुनिया में इसका नाम हो, ये हमारी ख्वाहिश है। तो हम जो भी बात करते हैं ना, वो अगर क्रिटिसाइज भी करते हैं तो वो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है। बिल्कुल। हम ये नहीं कहते कि इस मुल्क को खत्म कर दो, हम ये कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो बुराइयां हैं, इस मुल्क के अंदर जो मुख्तलिफ डेफिशिएंसीज हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए। सर जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे मैं बात करती हूँ, मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करती हूँ कि वो ठीक नहीं है, यहाँ पे उसको ठीक होना चाहिए। माइनॉरिटी के साथ हम गलत कर रहे हैं, माइनॉरिटी के राइट्स होने चाहिए। बलूचिस्तान में जो गड़बड़ चल रही है, केपीके में जो चल रहा है, और बाकी जगह पे जो जिस तरीके से होता है, जैसे पाकिस्तान हर जगह पे वो सब मजाक ही उड़ाते हैं भारत में कि हम कटोरा लेके घूमते रहते हैं, हमें अच्छा तो नहीं लगता सुनकर। हम चाहते हैं इकोनॉमी ठीक हो, उसके ऊपर अगर हम बात नहीं करेंगे तो ये तो इसी तरीके से चलता रहेगा। इनका ख्याल है अगर खबर नहीं आएगी, पाकिस्तान के मीडिया पे खबर नहीं आएगी, यूट्यूब पे खबर नहीं आएगी, तो दुनिया को पता नहीं लगेगा। ये समझ के बैठे कि खबर कहीं से भी लोगों को नहीं मिलेगी। दुनिया में तो खबर आज के जमाने में तो नहीं रोकी जा सकती, नहीं रोकी जा सकती। खबर जो है वो आपको, अवाम को, यानी आप ये देखिए कि जिस जमाने में सिर्फ पीटीवी होता था, उस जमाने में भी लोगों के पास बीबीसी अवेलेबल था, और हमारी अक्सरियत, इवन ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी जो नहीं थे, वो भी बीबीसी सुनते थे, वो सैरबीन सुनते थे। वो ज्यादा क्रेडिबिलिटी थी बीबीसी की रेडियो पाकिस्तान के मुकाबले में, पीटीवी के मुकाबले में, लोग वहां से इंफॉर्मेशन लेते थे। दोस्तों, पाकिस्तान में एक बड़ा खेला हो गया है और हाल में ही इस्लामाबाद के कोर्ट ने 27 बड़े यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने का आदेश दे दिया है। इसमें आरजू काजमी का भी चैनल शामिल है। अब ये कोई मामूली चैनल नहीं है जिसमें पीटीआई का आधिकारिक चैनल है, इसके साथ साथ पूर्व पाक पीएम इमरान खान का यूट्यूब अकाउंट है, नामी गिरामी पत्रकार जैसे मतीउल्लाह जान, आसद तोर, मोहित पीरजादा और कई बड़े दूसरे जो चैनल हैं वो शामिल हैं। अब आरोप ये था इन चैनल पर कि ये सरकार और आर्मी के खिलाफ फेक, भड़काऊ और डराने वाला कंटेंट फैलाते थे और भारत को मसाला देते थे। और 8 जुलाई को कोर्ट के आदेश के बाद यूट्यूब को नोटिस दे दिया गया है कि भाई इन चैनलों को ब्लॉक कर दो। अब इस ऑपरेशन में साइबर सुरक्षा की बड़ी ताकतें लगी थी। पाकिस्तान की सरकार हो गई, सेना हो गई, खुफिया एजेंसियां सब मिलकर कंटेंट पुलिसिंग कर रही थी। लेकिन जैसे कोर्ट ने ये पास किया, वैसे ही इमरान खान का खुद का चैनल बंद कर दिया। क्यों बंद किया ये तो वही जानते हैं, और सब जानते हैं कि काहे बंद किया होगा। बात यह है कि जब चैनल बंद हो गए ऐसे अचानक से, तो पाकिस्तान में फ्री प्रेस और फ्री स्पीच की जो थोड़ी बहुत जगह बची थी, लगता था कि भाई, और हम लोग भी हैरान होते थे कि भाई पाकिस्तान में रहकर ये कैसे बोल लेते हैं, वो खत्म हो गया है। अब आईएसआई सेना ही डिजिटल तरीके से हुकूमत चलाएंगे, चैनल चलाएंगे और जो चाहेंगे वही बोलेंगे। और अगर किसी ने हल्का सा भी जबान खोलने की कोशिश की तो ब्लॉक मार दो। वैसे तो जो पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स थे, ये लोग हमेशा भारत के साथ अपने आप को कंपेयर करते थे कि भारत ऐसा, हम ऐसे, भारत की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुंच गई, हमारी इकोनॉमी कहाँ चली गई। ये सब करने का मौका नहीं मिलेगा। बेचारे अब ऐसे ही घर पर बैठे रहेंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। क्या चैनल बंद होने चाहिए थे? कमेंट करके बताएं। It would not be wrong to say that Brazil will eat India's rice. Because during PM Narendra Modi's visit to Brazil, when India was talking to its president Lula Silva, Brazil showed interest in Indian rice. India is the world's largest rice producer, and this is why Brazil has now shown interest in it and wants to trade rice with India. So, this is the reason that everyone eats the money that India gives. Everyone eats India's money. They live on it. They live on it. So the Brazil delegation made a very specific mention of importing rice from India. India is the world's largest producer of rice and is being considered as a possible source of imports. Sir, today we will talk about Modi ji. Brazil has given him the highest civilian award. Sir, what does this matter? Wherever Modi ji goes, he brings back a civilian award. It means something fishy is going on.
See, the first thing is that Pakistan is against India and India opposes it strongly. One thing is that it has included this point in its diplomacy that it will not let Pakistan get the upper hand anywhere, or it will not say anything in favor of Pakistan anywhere. A trade deal has been done. This is being said. So look, the trade deal will happen. You are leaving aside these small trade deals. This is a recognition of India's rising stature by the International Committee of Nations. So India's stature is increasing. People are now ready to give India the place that India deserves. That means, We have seen the mixed views of India's and Brazil's culture there. Sir, what you want to say is that ever since Narendra Modi has gone on a 5-nation tour, we have seen something new, especially if we talk about business. India is the largest producer of rice in the world, and this is the reason why India is increasing its footprints in the world through its rice diplomacy, and now a new name is going to be added to it, Brazil. So Brazil has given the highest civilian award to G, sir. What does this matter? Wherever Modi G goes, he brings back the civilian award. It means that there is something fishy. Yes, here we call it dal makhani, which is a black dal. You don't know, there is no dal in your place. You have become a dal main patapat type of person. Pakistan is left with only one path. See, this is a recognition of India's rising stature by the International Committee of Nations. So India's stature is increasing. People are now ready to give India the place which India deserves. For the last 1,000 years, India has seen a lot of problems. It has seen bloodshirts, and since then it was not able to get up. India had started doubting its identity and its image a lot. Plus, some Indians also worked to increase this doubt further. But Prime Minister Modi ji did the work of reviving that sleeping soul of India in the Indian way. I am very clear that the transfer of power was done by the British in 1947, which is called transfer of power. I do not consider it as Independence Day. India's independence will come when India will connect with its roots again. When it will have cultural independence. Right now, if you call India a Hindu nation, then some people start protesting, as if I don't know what is wrong in being a Hindu nation. They don't even understand what a Hindu nation is. When you start teaching your history, they say that cultural saffronization is happening. Yes, you even ask Pakistan that why are you erasing the Mughals? That Pakistan which has erased the whole of India from its history book. He is asking us, why don't you teach the Mughals? Hello friends, welcome to my new video. Friends, our Prime Minister Mr. Narendra Modi had gone on a tour of 5 countries. So when our Prime Minister Modi ji went to Brazil, he held a BRICS meeting, and after that meeting he came to Brazil's capital Brasilia. There was a lot of discussion with the President of Brazil about the agreement between India and Brazil. Many meetings were held, and during those meetings, the President of Brazil made a request to our Modi ji that India is number 1 in the world in terms of rice production, and at present India had put a complete ban on the export of rice. Meaning that the Indian companies in any corner of the world could not export rice. He had requested that we like Indian rice very much. Brazilians also praise the production of rice in India, and we like Indian rice for its good quality. So my request to you is that please remove the ban and make a rice agreement with Brazil, because without Indian rice, there is a lot of instability in Brazil regarding food. Because there are other countries around the world that produce rice. But the people of Brazil like Indian rice. But India had put a ban on the export of rice, due to which Brazilian companies were not able to purchase rice from Indian companies. So maybe Modi ji has given a green signal to this, and now India has come to an agreement with Brazil and will export rice to Brazil, and Brazil will get the benefit of rice. This is a very good news for the people of Brazil, because this matter was going on for a long time. Seeing this, the media of Pakistan has become so nervous that has India become such a powerful country in rice production that a country like Brazil has to make a request. Come on friends,
Let's watch the video and I will meet you at the end of the video. So, the contribution of Prime Minister Modi ji in making India India and giving it an Indian identity is incomparable, and now people are accepting India as India. The whole world is now ready to embrace the Indian leadership in a way, and it was not possible for anyone else to represent India except the personality of Prime Minister Modi ji. Many Indians will come who will take India to even greater heights. I have full faith in this. But Admi ji, Prime Minister Modi ji has worked to awaken the soul of India. He has worked to instill confidence in Indians. So, this advertisement is just this sentence. Please forgive me, this advertisement. He is given the highest civilian award. When he goes somewhere, Sanskrit mantras are chanted. When he goes somewhere, he is welcomed in Indian attire and costumes in Indian culture. He is not saying bad things about the West in Western clothes. The West is also as good as our culture. I am not saying bad things about the West, but I am saying that when Prime Minister Modi goes, he does not need to be Western. Earlier, our people were dying to be Western. Now that is not India. So I am saying that Prime Minister Modi has done the work of awakening the moral consciousness and spiritual consciousness of India. That means, We have seen the mixed fusion of the culture of India and Brazil there. What Sir wants to say is that ever since Narendra Modi has gone on a 5-nation tour, we have seen something new. Especially if we talk about business development, those who are doing lithium business from Argentina can say in Brazil that they have organized their Summit 2025 to develop and strengthen multilateral relations. Then after that, if we talk about Brazil, you can see here also that they have received a very great warm welcome. So, India's relation with Brazil is looking very great, and we can say that it is looking very wonderful. After this, he is going to visit Nagini. So what is the situation that you see? That's so many visits, so many things, to strengthen our cultural roots by going to other countries. First of all, PM Modi has come here last time on 3.0. So after that, I think that whenever summer starts here in June to July, Modi Sahab goes on a tour. even now, these 2 months of June to July were for his visit, and in this, see, he has attended BRICS. India has attended SCO. Now, he was on a 5-nation tour. About India, you can say that Narendra Modi has a great edge in his Christmas personality, that Narendra Modi has an impressive relationship with any country in the world. You can take any country. Modi Sahab's relation with it is very up to the mark. And wherever he goes, whichever country he recently visited after 30 years. What is the name of that country? Sir, he visited Argentina after 57 years. That means you can say that he visited Argentina after 57 years after Jawaharlal Nehru. No, rather Lal Bahadur Shastri visited it last time after that, and then he is visiting now. So wherever he is visiting, now again. Because earlier there was a challenge in front of India, when the relations between Pakistan and India got spoiled. Then after that they had a challenge of their defense. Friends, did you see the video? How the Pakistani media is agitated that India has become so powerful in terms of rice production that the president of Brazil had to make a request to Prime Minister Modi ji? Because India had put a ban on export, due to which Brazil, or any other country, was not able to import rice from India. Because India has put a complete ban on rice and many other things. We'll describe in another video. The news that is going on right now is that the President of Brazil has specially requested Prime Minister Modi ji that we like the quality of Indian rice very much. The rice of India is famous all over the world and we like it very much. Therefore, we want you to remove the ban on its exports so that the companies of Brazil can import it. They can import Indian rice and that rice can come to Brazil. Prime Minister Modi ji thought about it and probably gave the green signal, and very soon in the future, an agreement will be made between India and Brazil so that Indian companies can easily export rice to Brazil. So the media of Pakistan is very upset that we are dying of hunger here. No one is coming forward to help us. When India goes to any corner of the world,
the Prime Minister of India gets so much respect. Secondly, many people have expectations from the Prime Minister of India that this is our work. This is our work. Like the President of Brazil requested for rice. This is a big thing in itself. It may seem very small to you, but it is a very big thing. Rest friends, you people watch the entire video. If you have not subscribed to the channel, then please subscribe to the channel. Like the video, share the video. See you in the next video. Till then, Jai Hind, Van Mataram. ये कोई तरीका नहीं है, मगर हिंदुस्तान बाज नहीं आता है। क्योंकि भारतीय नौसेना को 17 नए आधुनिक युद्धपोत मिल सकते हैं। इसके साथ ही 9 नई पनडुब्बियों को भी नेवी में शामिल करने की योजना है। ये प्रोजेक्ट करीब 2.4 लाख करोड़ रुपए का होगा। बड़े पैमाने पे ये जो फ्रिगेट्स हैं, इनको इंडियन नेवी के अंदर लेके आ रहे हैं। क्या पाकिस्तान के खिलाफ नई जंग का इम्कान बढ़ने? इस साल, अगले साल का तो बहुत, आज उन्होंने 52 सैटेलाइट्स भी कह दिए कि जी अप्रैल, अगले साल के अप्रैल तक 52 हमारे ये वॉर सैटेलाइट्स भी ऑन हो जाएंगे। दे आर डूइंग द लीथल जॉब। वो एक लीथल जॉब कर रहे हैं इस वक्त, कि वो कहते हैं कि जी हाँ, हमें हर कीमत के ऊपर जो है वो तबाही मचानी है। Once Israel defeats Iran, Pakistan is next। और उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, इजराइल इंडिया के साथ मिलके इन पर हमला भी कर सकता है। भारत ने बहुत ज्यादा पैसा जो है वो लगाना शुरू कर दिया है जब से भारत की नेवी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे इंडक्शंस हो रही हैं। ग्रेटर इसराइल का भी जिक्र किया है, तो यू थिंक अब ये क्या इसराइल अपने ग्रेटर इसराइल के हदफ की तकमील की तरफ जा रहा है? आपको याद है ना, आज तक मुसलमानों की चीखें निकल रही हैं। जब हिंदू अस्त्र और शस्त्र के साथ जागते हैं तो फिर मुसलमान भागते हैं। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने राइट आफ्टर इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बाद ये कहा था कि अगला हमला नेवी करेगी पाकिस्तान। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय नौसेना अपनी ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि करने जा रही है। सरकार ने लगभग 17 नए युद्धपोतों और 9 पनडुब्बियों को मंजूरी देने की तैयारी कर ली है। ये परियोजना करीब 2.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली है और इसमें अगली पीढ़ी के फ्रिगेट, मल्टीपर्पज पोत और स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक ये सब कुछ अलग अलग मंजूरी प्रक्रिया में है। फिलहाल देश में नौसेना के 61 युद्धपोत और पनडुब्बियों का निर्माण अलग अलग चरणों में जारी है और नए जहाज भी देश में बनाए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक 70,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट 17B के तहत 7 अगली पीढ़ी के फ्रिगेट और 2 मल्टीपर्पज पोत बनाने का प्रस्ताव जल्द ही आएगा। वही प्रोजेक्ट 75 इंडिया आई के तहत 70,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 अत्याधुनिक पनडुब्बियों और प्रोजेक्ट 75 एड ऑन के तहत करीब 36,000 करोड़ रुपए में 3 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां भी बनाई जाएंगी। भारत ने बहुत ज्यादा पैसा जो है वो लगाना शुरू कर दिया है जब से भारत की नेवी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे इंडक्शंस हो रही हैं। अभी पता ये चला है कि इंडिया जो है वो इंडिजिनस फ्रिगेट्स INS महिंद्रागिरी जो है वो इंडियन नेवी को ज्वाइन करेगा 2026 में। 7 फ्रिगेट्स हैं और ये इनका प्रोजेक्ट है 17A नीलगिरी क्लास INS महिंद्रागिरी। ठीक है जी। अब इसको ये कह रहे हैं एंड दैट इज एट द डॉक ऑफ इन मुंबई का जो डॉक है वहां पे है। अब मजे की बात ये है कि इंडिया जस्ट नॉट दिस बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है। एक तो ये इंडिजनाइजेशन की बात कर रहे हैं, इंडिजनाइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द मिलिट्री प्रोडक्ट्स कर रहे हैं। आर्म्ड वेसल्स का एक मोमेंटम है जो बिल्ड हुआ है। आपको याद है थोड़े दिन पहले, जस्ट फ्यू डेज बैक, नॉट ये लंबी बात नहीं मैं कह रहा, थोड़े दिन पहले इंडिया और जो इंडिया की जो लीडरशिप है उन्होंने ये फैसला किया कि हम 1 लाख करोड़ रुपया लगाने वाले हैं ऑन मिसाइल्स एंड वेपन्स परचेजेस। 1.5 लाख करोड़, 1.46 लाख करोड़। और ये जो वेपन्स डिफेंस प्रोडक्शन है, इट हैज रीच टू द ऑल टाइम हाई। ये ऑल टाइम हाई है। इसमें किसी किस्म की वो कोई नहीं है, रुकावट नहीं है, कुछ भी नहीं है। दे आर डूइंग द लीथल जॉब। वो एक लीथल जॉब कर रहे हैं इस वक्त।
कि वो कहते हैं कि जी हाँ, हमें हर कीमत के ऊपर जो है वो तबाही मचानी है। और वो क्या तबाही है कि हमें हर कीमत के ऊपर जिसे कहते हैं ना वेपन्स भी खरीदने हैं, मैसेजिंग भी करनी है, और जिसे कहते हैं ना ये अब बताना है कि इंडिया के अंदर जो कमी कुताही रह गई थी उसको पूरा करना है। दिस इज व्हाट दे वांट। सो ये जो चीज है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया इज सेइंग कि हम बड़े पैमाने पे ये जो फ्रिगेट्स हैं इनको इंडियन नेवी के अंदर लेके आ रहे हैं। अच्छा, इंडिया की जो नेवी है ऑलरेडी वो कभी मरीन राफेल खरीद रहे होते हैं, कभी वो अमेरिका से जो है वो ड्रोन्स खरीद रहे होते हैं इंडियन ओशन के लिए। दे हैव बीन डूइंग दिस। और ये इंडियन नेवी जो है, अगर मैं लिंक करूं, अगर आपको याद हो, मैं इंडियन नेवी को लिंक करूं उसकी उस सोच से कि जब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने राइट आफ्टर इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बाद ये कहा था कि अगला हमला नेवी करेगी पाकिस्तान पे, और उसको लिंक करूं कि ये जो 1.5 लाख करोड़ का असला ये खरीद रहे हैं, और इनकी ये जो नेवी है विच हैज ये जो नए मैंने आपको बताया ये जो महिंद्रा गिरी जो शिप है, इसके अंदर जो कैपेबिलिटी है मॉडर्न, चलो जो हर होती है, लेकिन इट हैज सरफेस टू सरफेस एंड सरफेस टू एयर एंड अंडर वाटर कैपेबिलिटीज मौजूद है। ये 7 फ्रिगेट्स हैं जो दे आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड अंडर द प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास। और ये आप समझ लें कि इंडियंस अब ये कहते हैं कि इसके अंदर ब्रह्मोस भी होगा, एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि ब्रह्मोस भी होगा, ब्राक मिसाइल्स भी होंगे, टोर्पीडोज भी होंगे, रॉकेट लॉन्चर्स भी होंगे, AK-630 गन्स भी होंगी, और हवा में भी मार सकता है, जमीन पे भी, अंडर वाटर भी, और इसके अंदर इंटेग्रल हेलीकॉप्टर्स भी होंगे। जस्ट लुक एट दैट। सो ये आपको याद होगा, इनमें से जो 7 फ्रिगेट्स की बात हो रही है, इनमें से एक INS नीलगिरी जो है वो नरेंद्र मोदी ने आई थिंक इस साल जनवरी में ही उसको कमीशन कर दिया था। सो INS नीलगिरी बस बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना इट वाज समथिंग यू नो एक लीडशिप थी इस क्लास की। और अब जो आपको पता है पाकिस्तान ने तो जब शिप्स वगैरह लेनी हो तो हम क्या करते हैं, हम तो फिर जाते हैं सीधा बाहर से मंगवाते हैं, बिकॉज हमें तो कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसके अलावा इंडियन नेवी ने ऑर्डर्स भी दिए हुए हैं। सो इंडिया ये कह रहा है कि जितनी बड़ी हम इकोनॉमी है, इफ वी आर अनएबल टू डिफेंड आवरसेल्फ, if we are unable to protect ourselves, if we don't have the bigger navy, the navy which goes beyond Indian borders. Turkish media has reported that after offering its SS-400 Awade long-range land attack cruise missile to Greece last week, India has now offered the Gram supersonic cruise missile to Cyprus. So India basically wants to send a message to Turkey in a diplomatic way that if you are coming to Bangladesh, then we are again going to the Gulf, where you have fought with that country, and it can also become a cause of trouble for you that India is going to give its long-range land attack cruise missile to Greece. There is a lot of tension between Greece and Turkey that Indian missile will fire on Turkey, and it is a very strong missile. Turkey has expressed its fear of this thing, and we have taken advantage of China's technology. Pakistan considers us as a friend and enemy. They consider us as an enemy of India. And Turkish defense analysts have written that the deployment of such systems will increase and Cyprus will complicate Turkey's defense calculus. India should not do anything that will create a big problem or a big tension. India is heaping troubles upon Turkey one after the other. India has tightened its circle around Turkey. If you are weak, then you will have to live under the powerful in the world. India's leadership does not want to take decisions or take relations with Pakistan, and now there is anger in Pakistan. Even here people are saying,
What is this? We always want to talk to them. They want to fight with us. They say we will attack. They say we will give you a hard time. Who are you? What is your status? If the Pakistani government does this, then Pakistan's entire national security will be in danger. The airbases that were targeted by Indian BrahMos missiles include Sargodha's Karana Hills and, along with that, Musaf Air Base. That Pakistan's Shaheen-1, Shaheen-2, Shaheen-3, Gori, all the missiles that Pakistan has, Abdali, all of them are flops in front of our one missile. They are saying such things. Did you understand, viewers? India has called Kybris in Kybris, which means in the wrong way is also called Kybris. If we say it in English, it is also called Cyprus, but its correct meaning is Kybris. So we have built our relations with Kybris. Now you will say that Turkey is building relations with Bangladesh. Its border is with India, so it is understandable. So why is India building relations with Kybris? And how is this a matter of trouble for Turkey? How is Turkey being answered? So there is not so much distance between Kybris and there is a proper history of conflict between Kybris and Turkey. Now India has made a separate country where the Greek Nijat Kybris became a separate country which was accepted by the world. Now India is increasing its relations with them at a very fast pace. This is not a new thing. In 2022 also, Prime Minister S. Jaishankar visited on their behalf. Last year, India's Prime Minister Narendra Modi visited. And what agreements were made in that? Most of the agreements were about defense equipment only, from India's side that we will provide military support to Kybris. We will establish our defense relations with Kybris. So India basically wants to send a message to Turkey in a diplomatic way that if you are coming to Bangladesh, then we are again going to Kybris, where you have fought with this country and it can also become a cause of trouble for you. Turkey is obviously saying that it does not matter to us. Kybris is not yet so big that it can compete with us. This is the style of being a part of the European Union. The Greeks live mostly in Bangladesh, so the problem can be with Turkey. But outside, Turkey says that it does not matter much to us. We will give Bangladesh whatever they want as per their demand. We will definitely give them that. Whereas India is looking at it from this angle that Turkey, China, Pakistan are trying to spoil my image in this region, and by doing all these things around me and by getting all the natives on their side, they can create problems for me. So all these complicated games are going on in this region. India is not a country, nor is it our rival. We think more that we have to go against it and make an alliance with other countries. It is possible that that country may or may not favor someone. So, what does India do? India works together with everyone. It means that they have good relations with everyone. They have thought of something for their people, that is, they are taking very good steps. The news is that India has made a great missile which is being made very fast, and now there are 6 countries which want to buy those missiles from India. What is the reason that India has gone so far ahead in technology? Not only in technology, let's talk about automobile industry. There are many such fields in which it has gone ahead. Other countries of the world are buying missiles. What would you like to say? I mean, recently I also read about India that they have made that missile. So they are going ahead, that is, they are probably doing that mission on Mars. They are going to launch our Chandrayaan-3. Our country is happy to get the loan from IMF, but what is their celebration? They are improving their technology. That is, they are improving the students. They are improving technology and they are growing. Their focus is on growth. On growth. No doubt their focus is on growth. The people of Pakistan also want us to move towards development, but we are not being given a vision. If we are told about defense, the people of Pakistan, students of Pakistan, in schools, universities, colleges all over the world, then who are we told about when we have to compete in terms of defense? Defense is obviously told to India only. Our entire focus is on defense. We have thought that only India is in front of us. However, India is not thinking this. There is an international think tank called SIRI, i.e. Stockholm International Peace Research Institute. This is a Swedish think tank which assesses nuclear weapons and the threats related to them. SIPLI has released a report which is related to India's Operation Sindoor. This report is also important because it has been revealed in this report that during the Pak-India tension, on the night of the 9th of May, India had targeted 3 important air bases of Pakistan.
It has been revealed in the report that during this 4-day battle, India had specifically targeted a mountain range near Sargada on the night of the 9th of May. According to SIPRI, there was a revelation that this mountain range was being used for Pakistan's nuclear experiments, and along with this, it has also been revealed that a vehicle was present at the Musif airbase of Sargada which was going to carry nuclear weapons. That is, a jet fighter jet was present at the Musif airbase which was going to be airborne after loading nuclear weapons. According to this report, the ADOF targets hit by Indian BrahMos missiles included Karana Hills in Sargada, which was a designated site of Pakistan for nuclear experiments. Along with that, Musaf airbase was also targeted. Along with that, C-41, a network of command and control centers near DG Khan, was also targeted. This was because India tried to test Pakistan's understanding of the fact that how nuclear infrastructure can be destroyed within the framework of conventional warfare, or nuclear infrastructure can be hit, or by hitting near nuclear installations, a message can be sent that we can hit such structures of yours, after which your capability of first strike or security deterrence can be affected. You will remember that Indian Prime Minister Narendra Modi had mentioned this in one of his speeches when he mentioned the new normal. While announcing his new normal doctrine, he had also disclosed that we should not be threatened with nuclear war. We will not be afraid of the threat of nuclear war. This means that the missiles that were fired on Musaf Airbase Sargada or Karna Hill Sargada were in fact a message, and this message was taken very seriously by Pakistan. And then Pakistan had replied that if Pakistan uses its nuclear doctrine as a result of any action taken by you, then you will not have the capacity to counter it because your command and control will in fact neither be under your command nor will you have control over it. If there is control over it and someone will have command, then it will be of the Jinnat of Pakistan. Friends, Turkey is trying to form an alliance against India by bringing together Bangladesh, Pakistan and Azerbaijan, and China is pulling the strings behind all this. So, these 5 countries are trying to hatch a conspiracy against India. But in return, India has created a big circle against Turkey. Because you know that Cyprus and Greece have a score of 36 with Turkey. So India is going to arm these 2 countries. That is, India is going to give its weapons to these 2 countries. Earlier, India had offered its long-range missile, which can strike up to 1,500 kilometers, to Cyprus. But now India has offered its Brahmastra, i.e. BrahMos, to Cyprus. Obviously, no country in the world has the capability to stop it. So Turkey will not be able to stop this Brahmastra of India at all. So, if Cyprus uses India's BrahMos, then it can cause a big blow to Turkey. Due to which the Turkish media is now scared. The Turkish media is panicked and is screaming, shouting and telling the world. That is, it is saying that India is trying to make its region a battlefield. But what is it that Turkey is trying to do around India? The news has been given by the Pakistani media that Turkey is going to set up an arms factory inside Bangladesh. So if Turkey is saying this to India, then what kind of roses is Turkey going to grow inside Bangladesh? Muslim countries can do anything against others, but if another country does even a little thing against them, then these people start playing the victim card. Their screams can then be heard till the skies. But if Turkey understands even now, then it is fine.
Otherwise, India will tighten Turkey's circle so much that Turkey will start feeling its land unsafe. When damage starts to come inside Turkey, then the people of Turkey itself will start abusing Erdogan that Erdogan made India his enemy by following Pakistan or by listening to China, and along with that, his region also became his enemy. Rest of the friends, if you like the video then please like it. If you are new on the channel then please subscribe. See you in the next video. Till then, Jai Hind. जब दुनिया की बड़ी ताकतें अमेरिका, चीन और ब्रिटेन भारत को सिर्फ तेजस MK2 और एमका प्रोजेक्ट में उलझा मान रही थी, तब भारत ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि पूरी दुनिया की बक्की रह गई। आपको जानकर गर्व होगा कि भारत ने चुपचाप 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने का काम शुरू कर दिया है और इसकी टेक्नोलॉजी ने अमेरिका और चीन के डिफेंस एक्सपोर्टर को झकझोर कर रख दिया है। अब दुश्मनों पर हमला मिसाइलों से नहीं बल्कि लेजर से होगा, और वो भी इतनी गोपनीय तरीके से कि दुश्मन को भनक तक नहीं लगेगी। पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा यानी 16% उन्होंने इजाफा किया है जो नए हथियार खरीदने हैं। अब ये किसके लिए खरीदने हैं? ये हमारे लिए खरीदने हैं ना, और किसके लिए खरीदने हैं? बेकारी को कौन पूछता है? आखिर भारत के फूफा फाइटर जेट की खासियत क्या है? अमेरिका क्यों बौखलाया हुआ है? चलिए जानते हैं। जब दुनिया सोच रही थी कि भारत अभी तेजस MK2 और एमका प्रोजेक्ट में फंसा हुआ है, तब भारत के वैज्ञानिकों ने एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया, फूफा, यानी कि फ्यूचर अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। हाल ही में एक रहस्यमयी तस्वीर लीक हुई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया अपनी ओर। ये तस्वीर भारत के 6th जनरेशन फाइटर जेट की थी जो पूरी तरह से स्टेल्थ है, AI पावर्ड, लेजर वेपन और हाई स्पीड तकनीक से लैस है। वार्न करना चाहता हूं, खबरदार करना चाहता हूं कि इजराइल का एक इत्तेहादी इंडिया जो है वो जनूबी एशिया में भी एक नई जंग छेड़ने के लिए तैयारियों में मसरूफ है। कम से कम हमारे पास वेपन्स ऐसे होने चाहिए या पैसे ऐसे होने चाहिए जो हम वो हथियार खरीदें जो इंडिया से बेहतर हो। इंडिया के हथियार बेहतर, इंडिया के पास आदमी ज्यादा, इंडिया के पास इन एवरी सेंस। तो इस वक्त बहस हो रही है और बात हो रही है, दुनिया को इस बात पे परेशान कर दिया है कि उसका जो नया 6th जनरेशन हैवी स्टेल्थ जेट है उसका एक लेटेस्ट जो कॉम्बैट जिसे आप कहते हैं ना प्लेन उनके हाथ में आ गया। भारत की जंगी तैयारियां अरूज पे हैं। मैं आपको कई दिनों से बता रहा हूं कि भारत एक बड़ी और फैसलाकुन जंग के लिए पर तोल रहा है। जय हिंद। तो दोस्तों, भारत बना रहा है दुनिया का सबसे घातक और सबसे एडवांस 6th जनरेशन फाइटर जेट, जिसको देख करके चीन, पाकिस्तान समेत अमेरिका की भी नींद उड़ चुकी है। पहले वीडियो देखेंगे फिर बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट। सवाल ये उठता है कि अमेरिका और चीन इस जेट से इतना घबराए हुए क्यों हैं? बल्कि अभी तो भारत ने काम शुरू ही किया है। दरअसल अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत है और उसने अपने F-22 रैप्टर और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं, लेकिन भारत ने कम संसाधनों में ऐसा 6th जनरेशन फाइटर जेट तैयार करने का काम शुरू कर दिया है जो इन प्रोजेक्ट को टक्कर दे सकता है। फूफा की खासियत की बात करें तो ये कंप्लीट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, जिससे ये जेट रडार में नजर नहीं आएगा। AI कंट्रोल्ड वेपन सिस्टम से लैस है ये, और ये फूफा पूरी तरह से मानव रहित यानी अनमैन्ड होगा, यानी इसे पायलट की जरूरत नहीं होगी। ये जेट मिसाइलों की जगह लेजर बीम से दुश्मनों को ध्वस्त कर देगा। अगर दुश्मन इस पर हमला करता है तो ये खुद को ऑटोमेटिक रिपेयर कर सकता है। ये बिना आफ्टर बर्नर के हाइपरसोनिक स्पीड पर उड़ सकता है। जब अमेरिका को इस प्रोजेक्ट की भनक लगी तो पेंटागन में हड़कंप मच गया, क्योंकि भारत के इस कदम से अमेरिका का सैन्य दबदबा कमजोर पड़ सकता है। अब सिर्फ अमेरिका ही नहीं, चीन भी इस प्रोजेक्ट से डरा हुआ है। चीन के पास J-20 और J-31 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट हैं, लेकिन चीन को अब डर है कि भारत का फूफा जेट उनकी पूरी वायुसेना को बैकफुट पर धकेल सकता है। लेटेस्ट और ये जो 6th जनरेशन जो फाइटर है, ये आप समझ लें इसकी जो बहुत सारी एट्रीब्यूट्स हैं जो कि सारी बात है एक तो इसको डिस्टिंग्विश करती हैं बाकी जो फाइटर जेट्स हैं। पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर जेट तक तो पहुंच रहा है, खरीद रहा है। गो के हमारे बारे में ये कहा जा रहा है कि हमारी इकोनॉमिक हालात तो ठीक नहीं है, लेकिन जारी बात है इंडिया को भी तो कम्पीट पाकिस्तान ने हर कीमत पे करना ही करना है। और दूसरी तरफ ये तकरीबन चाइनीज ने
दुनिया का सबसे बड़ा $137 बिलियन डैम जो है वो ब्रह्मपुत्रा के करीब जो है इंडियन बॉर्डर के करीब वो बना रहे हैं। और आप ये समझ लें कि इंडियंस उस पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये एक शोर मच जाएगा। दोनों इश्यूज पे बात करनी है, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी गपशप जो है वो 6th जनरेशन फाइटर जेट पे बात की जाए। सूबा है जो अकेले सरवाइव कर सकता है? कौन सा सूबा है जो अकेले बचेगा 15 दिन भी पाकिस्तान के बगैर? पाकिस्तान से अलग होके देखें, पाकिस्तान आर्मी वहां से निकलती है, उसके बाद 15 दिन अगर आजाद रह सके तो आप मुझे बताएं। अगर आप बचे हुए हैं आज की, यहाँ रूस दाखिल नहीं हो गया पहले, और चीन दाखिल नहीं हो गया, और ईरान दाखिल नहीं हो गया, और अफगानिस्तान और जहन्नुम के कुत्ते और अमेरिका और इंडिया, तो सिर्फ एक फौज की वजह से जो यहाँ मौजूद है, जिसको तुम आज गोलियां मार रहे हो, जिसकी तुम गाड़ी के नीचे आईडीज लगाते हो, जिसके जवानों को तुम शहीद करते हो, ये फौज है जो तुम्हारी औरतों की इज्जत बचा रही है। कोई गैरतमंद औरत अपनी बेइज्जती और बेहरमती की बात पब्लिक में नहीं करती। इसराइलियों ने क्या क्या जुल्म फलस्तीनी औरतों पे नहीं किए? एक फलस्तीनी औरत कभी नहीं बोलती कि हमारे साथ इसराइल ने क्या किया। अफगानी औरतों के साथ क्या क्या जुल्म अमरीकियों ने किया, एक अफगानी औरत नहीं बोलती। इनके साथ कुछ भी नहीं किया पाकिस्तान आर्मी ने, और सड़क पर चीखें मार रही होती हैं कि हमारी शलवारें फाड़ दी तो कपड़े फाड़ दिए। ऐसी बेगैरत औरतें हैं ये, अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल आलमीन। कोई मुसलमान औरत पब्लिक में इस तरह चीखती चिल्लाते नहीं है तवाइफों की तरह कि हमारे कपड़े फट गए और हमारी शलवारें उतार दी। जिस तरह इमरान करता था ना, हर एक को रुसवा करता था कि इसको नंगा करके मारते हैं, नंगा करके मारते हैं, नंगा। किसी की इज्जत नहीं छोड़ी उसने अपनी पार्टी में, और ना औरतों की ना मर्दों की। जिसको पकड़ते चीखना शुरू कर देता था, नंगा करके मारते। किस किस्म का लीडर है जो अपनी सारी कौम की इज्जत बचाने और पर्दे रखने के बजाय कुत्ते की तरह जलील करता है सबको? यही हाल इन बीएलए की औरतों का है, बीएलए के दहशतगर्दों का। औरतें आगे करते। अब मजाक का वक्त नहीं है, पूरी दुनिया इस वक्त एक्सपैंड कर रही है, सरहदें तोड़ के बाहर निकल रही है, पाकिस्तान को हड़प करना चाह रही है। इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाना चाह रहा है, उसकी राह में सिर्फ रुकावट पाकिस्तान है। अखंड भारत वो बनाना चाह रहा है, उसकी राह में सिर्फ पाकिस्तान है। हम इतनी बड़ी बड़ी उम्मत रसूल की इज्जत और आबरू को मारंग और मंजूर पिश्तीन और इमरान के हवाले नहीं कर सकते। अगर ये रास्ते में आते हैं सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत की हिफाजत करने में, फिर इनको एलिमिनेट कर दे। आगे बहुत खौफनाक जंगें पूरी दुनिया में आने वाली हैं, खित्ते में आने वाली हैं। इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसमें एक तो ये है कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। ये जो रडार है उसको मिनिमाइज करता है, जो इंफ्रारेड जो सिग्नेचर्स हैं उनको भी मिनिमाइज करता है, और ये डिटेक्शन में नहीं आता। इसकी पहली जो कैपेबिलिटी है, जो इसकी एट्रीब्यूट है। सेकंड ये है कि ये एआई को इंटीग्रेट करता है, जितने के एज ए स्टेल्थ बॉम्बर इट्स अ बिग मशीन। ये बहुत बड़ी मशीन है जिसको पीएलए जो है वो इंडक्ट ऑलमोस्ट कर चुका हुआ है, और बहुत सारे जो जिसे कहते हैं ना जो टेक्नोलॉजी के हवाले से जो माइलस्टोन्स हैं चाइनीज अचीव कर रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट बेसिकली फोर्स्ड इंडिया टू गो फॉर राफेल। मुझे लगता है कि राफेल इज वहां पे नहीं है जहां पे अब देखे ना, कहाँ 6th जनरेशन फाइटर जेट। ये कोई मजाक थोड़ा ही है, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ये। दोस्तों आप लोग जानते हैं भारत एमसीए यानी कि 5th जनरेशन फाइटर जेट पर तो काम कर ही रहा है, उसी के साथ भारत 6th जनरेशन फाइटर जेट फूफा पर भी काम कर रहा है। यह फाइटर जेट दुनिया का सबसे घातक और सबसे खतरनाक फाइटर जेट होने वाला है, और इस पर अभी दुनिया सोच ही रही है, लेकिन भारत ने इस पर काम स्टार्ट कर दिया है और अमेरिका की भी नींद गायब हो चुकी है। अच्छी दोस्तों, यह फाइटर जेट पूरी तरह से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा और एआई से चलेगा। जी हाँ दोस्तों, और ये अनमैन्ड भी होगा, यानी कि इसको उड़ाने के लिए किसी भी पायलट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह फाइटर जेट रडार की पकड़ में नहीं आएगा, एक प्रकार से अदृश्य होकर के उड़ेगा, जिसको किसी भी रडार से पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और यह फाइटर जेट इन्हीं खासियतों की वजह से बहुत ही ज्यादा एडवांस होने वाला है और दुनिया का पहला 6th जनरेशन फाइटर जेट हो सकता है, अगर भारत इसे पहले बना करके तैयार कर लेता है। बाकी दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देख ली है, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। साथ ही अपने चैनल मेरा हिंदुस्तान न्यूज को भी लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं। PM Modi is currently on a foreign trip to Namibia. He has created a stir as soon as he reached there. Then why should we not say good to him? The person sitting on the prime minister's seat
who has to meet the world, stands like this. He has a different class. He takes the whole world along with him. You did not understand what I said. Half the world is angry with us. Half the world is our friend. And before today, no prime minister was welcomed in this country at night. But the talk was about the emerging global leader PM Modi, and this is his charisma which is bothering the enemy countries. Modi ji has been given the highest civilian award by Brazil. Sir, what does this matter? Wherever Modi ji goes, he brings back a civilian award. There is no class like Modi. No one is afraid like this. The ruler who stands and talks like this, looking into the eyes of the whole world. He does not let India degrade anywhere. He does not let it come down anywhere. So the purpose is that such people then progress and This picture of PM Modi is being shared extensively on social media. This picture of the grand welcome of PM Modi with traditional dance is telling that after 27 years when the Prime Minister of India reached Namibia for the first time, how strong the picture is. And I want that a class like Modi ji should come in Pakistan. There should be such a mind. There should be someone who uses such policies that can change the map of our Pakistan. The contribution of Prime Minister Modi ji in giving India an Indian identity is incomparable, and now people are accepting India as India. The whole world is now ready to express the Indian leadership in a way. Hello, welcome to Breaking Raj News. Friends, Prime Minister Narendra Modi, who went on a foreign tour of 5 countries, has reached his last stop Windhoek, the capital of Namibia, where he was given a grand welcome. Not only this, Namibia gave a grand welcome to PM Modi by breaking all protocols in the night itself. PM Modi was also honored with Namibia's highest award. PM Modi could not stop himself and was also seen playing drums. This video of PM Modi is going viral. PM Modi was also honored with Namibia's highest award. A day earlier, PM Modi was also honored with the highest honor in Brazil. Brazil honored PM Modi with its highest honor on Tuesday during his state visit to the country. Neighboring Pakistan is surprised and upset to see the grand welcome of PM Modi, who visited 5 countries, and the agreements made during his many visits. Yes, friends, seeing all this, Pakistan has been forced to say that if only we had a PM like Modi, then our situation would not have been worse than the bus. So friends, let's go and see what Pakistani media has to say on this. So officially, I will always see Modi ji above the Prime Minister's seat. I always want this, and I have always said this. I say this to you today as well. Believe me, Indians must be very unlucky, and believe me, if they missed such a leader and Rahul ji. I am not saying bad things about Rahul ji. Look, he also has a role. His family has a role in India. I am not saying bad things about anyone, but believe me, I want to say this to Indians about Rahul Gandhi. He is not judged at all on the basis of the Prime Minister's seat. I don't think that he has a personality. The person who sits on the Prime Minister's seat, who has to meet the world, stands like this. So, I did not see that quality in Rahul ji. Yes, if he becomes the CM of a city, if he becomes the CM of a state, then it is understandable. But if he becomes the Prime Minister of the whole country, madam, look, he was a Sikh and he also became the Prime Minister. Before that, there was Vajpayee Sahab. He became the Prime Minister. Many Prime Ministers have come to India. Has anyone of Modi's class come to India? A ruler who is not afraid or scared, who stands up and talks like this. He looks the world in the eye. He does not let India degrade anywhere. He does not let it come down anywhere. So the purpose is that such people progress. And I will always wish Modi ji that if India wants to progress further, India wants to beat China in the economy, India wants to be #1 in the world, then believe me, as long as Modi ji is alive, let him stay on the seat. He will change your fate. Now see, houses have been built for those people who used to live in slums in India. You must have also heard about the poverty of India. We used to hear that there are no washrooms in India. People in India do not have roti to eat. They sleep on the ground. People sleep on the platforms. Today, the same India is there that they have better and cheaper roti than us. They have more electricity than us and cheaper electricity. Now you see that we buy the world's most expensive electricity. We buy the world's most expensive flour. We buy the world's most expensive sugar. That is, we buy each and everything.
then why should we not do good to them? Why should we not appreciate them that they look after their people and do something that will benefit the common man? We will talk about that which will benefit the common citizen. The common man who is sitting hungry and thirsty at home and he goes out of the house and everything is available to him at cheap rates. What else would he want? Then I would say that Indians are unlucky if they have such a prime minister. What does Pakistan have? He is not able to support his own country. Look, madam, those political statements have to be made. Because it is a country, there is a whole series. So political statements have to be made in Saudi Arabia, Arab Emirates, all of them are giving statements against Israel at this time. Pakistan, look, this is politics. So I will try to see whether the statement given by Modi ji should be taken as political or not, whether it is also political or Modi ji is really of a different class. He takes the whole world along. You did not understand what I am saying. Half the world is angry with us. Half the world is our friend. And most of our friends are those from whom we take loans. Until we become powerful. Until we get rid of these loans. Just now I was hearing somewhere that India had also taken loan from IMF at some time. They had kept the gold prices low. Yes, now see, they have even come out of the debt. Now look at how big their economy is, that if I tell you, you will be surprised that they are carrying such a big economy. There was a time when they were only in debt. Now, there was a time when we were giving loans to a country like ours, a rich country of this time. We had given loans. And today we are so trapped in debt that to pay the installment of the loan, which is to be paid after a month, we have to take more loans. We have to pay the installment by taking more loans. So the thing is that the people who brought us to this position, look, so much debt. Pakistan is a barren land. Pakistan produces everything on its own. Pakistan used to export. Pakistan is supplying it all over the world. Who are those people who, despite having so much, trapped us in more debts? Do we also want Modi ji or someone like Modi? Look, I never said that we want Modi ji in Pakistan. This is wrong. Whoever does this says absolutely wrong things. I never said this. I like Modi ji's class. I like his quality. I like his work. I like his policies. And I want a class like Modi ji to come to Pakistan. There should be such a mind. There should be such a person who can use such policies that can change the map of our Pakistan. Our Pakistan should also reach the skies. We should be free from debts. Our export should happen. Dollars should come to Pakistan from all over the world. Recently you must have seen, madam, that in the whole of Pakistan, whenever you used something for yourself, it was from China. Each and everything. There must be something in your house too, right? Search the whole house. Everything in your house will be from China. There would be only cement, probably, with which that building was built. There is no one like Pakistani Modi ji. Yes, he started Made in India in India. He started a movement. He did proper work on that movement. At that time, we used to think that India does not have modern technology. There are no modern things, but they kept working on their Made in India because we kept getting modern things from China. They kept getting everything from China. But they kept failing. They kept failing in the eyes of the people. Their people kept following them, but they kept working on their Made in India. When their Made in India became successful, today the whole world has become dependent on India. Modi ji has been given the highest civilian award by Brazil. Sir, what does this matter? Wherever Modi ji goes, he brings the highest civilian award. It means that there is something fishy. Here we call it dal makhani, which is black dal. You don't know that there is no dal in your place. You have become a dal main pata pat type of person. Pakistan is left with only path. See, this is a recognition of India's rising stature at the international level. So India's stature is increasing. People are now ready to give India the place it deserves. For the last 1,000 years, India has faced a lot of problems. It has seen bloodsheds, and since then it has not been able to get up. India started doubting its identity and its image. Plus some Indians have also increased this doubt. But Prime Minister Modi ji has revived that sleeping soul of India in an Indian way. I am very clear. Prime Minister Modi ji's contribution in giving India an Indian identity is incomparable, and now people are accepting India as India. So, Friends, you have seen that after seeing the charisma of PM Modi, who went on a tour of 5 countries,
Pakistan is forced to praise PM Modi even if it does not want to. So friends, what do you have to say about this whole news? Do tell us in the comment box. If you like the news, do not forget to like and share it. To stay connected with all such news, keep watching Breaking Raj News. These pictures have tarnished the reputation of America and Britain. The aircraft, which is called the world's most dangerous fighter plane, is being dragged to India. Justified British F-35B still fighter jet, while's most advanced warplanes, has been finally told to a hunger. And this plane is one which can neither be repaired nor can it fly. Huge embarrassment for UK. It is likely to be dismantled partially to be able to transport it in a cargo plane, is what sources say India today. After getting humiliated by America, it will go back to UK. Donald Trump is constantly pressuring India to buy F-35 fighter planes. But now this fighter jet has become a victim of jokes, insults and memes in India. Bhaiya, if there is a hydraulic problem, then the engine can start. Its engine is not starting. This is the biggest thing, that the engine is not starting. Sir, no doubt F-35 is the world's renowned fighter jet, but even that has been detected by India. Think for yourself, India has detected it as well. This is a different level of technology. Jai Hind, friends. So friends, India has destroyed the powers of America, and now the whole world is spitting on countries like America and Britain. And this plane is one that can neither be repaired nor can it fly, and no explanation is coming from America or the UK. Just a small news came. The news was that after dismantling it piece by piece, a transport aircraft will come. It will be sent back inside that. After getting a cut in the nose of America and the UK, it will go back. Friends, you think about it. First they said that there was a mechanical failure. You think about it, it was a mechanical failure and the part got damaged. You could have changed the part. It's been 20 days and the part is not getting changed. That means something very big has happened, due to which the Western powers are not ready to admit it. I will give you an example that a small part inside your vehicle got damaged. You will take it away by towing it or call a mechanic. He will come and change the part. You can drive your vehicle again. We are talking about F-35B. This is the plane that could never have stood still in its life. It can never stand still like this. If there is a hydraulic problem, then the engine can start. Its engine is not starting. This is the biggest thing, that the engine is not starting. That means there is something wrong with its electronics. Now if there is a problem in the electronics also, then you can check sitting in America that which wire is bad where, which software has a glitch. Now you can repair it from there itself sitting in America. Now the news is coming that the Americans are not able to enter inside it because all the electronics have failed. That is why I am asking, did India use the EMP technology that we have on this plane, and did it in such a way that the entire plane cannot fly again? We cut off its wings. Along with this, we have not bought planes from them but also from the British, Americans and the lobby that repeatedly told us not to buy Russian planes. Because there is no benefit in buying 57. We will have to buy F-35. After this, did we permanently silence that lobby? Because it was necessary for them to give this answer. Actually, you people already know that for the past several weeks, the British Navy's F-35 fighter aircraft manufactured by America is lying like garbage in India. And now this British Navy's F-35 fighter aircraft equipped with American 5th-generation modern technology is being dragged like a bullock cart and taken to the hangar. India has clearly told Britain to vacate the place as soon as possible. Pick it up and take it away, and if it cannot fly, then load it like garbage in another aircraft. But vacate our place. Let us tell you that the United States of America used to talk big about this fighter aircraft. They used to say that no radar in the world can detect this fighter aircraft, because it is the world's most modern 5th-generation fighter aircraft. But the truth is that when a few days ago,
an aircraft carrier of the British Navy, HMS Prince of Bill, reached the Indian Ocean about 185 kilometers from Kerala for a naval exercise. Then India's Advanced Air Defence System detected the British Navy's F-35 advanced fighter aircraft manufactured by America in its radar and found out which aircraft it was and which country's aircraft it was. Some media reports even said that because America and Britain felt that they had the world's most modern fifth-generation fighter aircraft and India would not have modern radars to detect it, that is why they sent it here to assess India's preparations on the pretext of this naval exercise. Britain and America wanted to know to what extent India is prepared for war, and that is why they did all this to get information about India's air capacity and surveillance in the southern region of India. America, along with its best friend Britain, had created the pretense of this fake operation to extract information about India. Sources even say that history is witness that whenever America has carried out any intelligence operation against India, Britain has been its biggest ally. We have seen all this in the past and still see it. However, all this is still being discussed and media reports say that all these things can be 99% true. F-35 which is stuck in India. So let's understand, sir. What is the story behind this? Namaskar, sir. Welcome to the show. Daddy, my namaskar to you and your viewers. And this incident of F-35 has different interpretations. Some say that it had come to Indian space to program India's air defense network. Some are saying that its algorithms got locked. Precautionary things. Now, it may be that I am not here to contest anyone in this. But, I have my own opinion, and to what extent people agree with my opinion, I leave it to the viewers. But, there are some facts, you know. I talk on the basis of facts. So you see, let me say in the beginning itself that I believe that these European countries, especially Britain, this is their ploy against America and against Trump. And the backdrop of this is that you see, just now the 23-member NATO summit took place in Egg. It was decided there that they will increase their defense spending from 2% to 5%. Okay, sir? Now when it increases from 2% to 5%, what will be its effect on American industries? More than double. So NATO members decided that when they are increasing that percentage of their GDP on defense spending, they will also increase their defense production. So they have said that 3.5% will be spent on core defense requirements and the remaining 1.5% will be invested at defense infrastructure and industry level. So their defense budget, which was earlier, will be allocated entirely to defense production. Okay, right, sir? Now what happens is that it will have an impact on defense production and defense infrastructure development. Now Trump, sir, said that you should take resiliency. You don't become a drag on us like this, so let me tell you that what was happening was that their dependence on American imports was increasing so much.
Between 2015 and 2019, the arms import from Europe from the US of NATO countries was 52%. In 2020 to 24, it was 23rd, and that of Norway, Sweden, Italy, and the Netherlands was 90%. That was the kind of deep dependency. Germany is a very telling example. From 2015 to 2019, it was 10%, and between 2020 to 24, it was 70%, the increase from 10. Today, once again, an enemy of India has been eliminated. In Pakistan, one after the other, enemies of India and most wanted terrorists are being eliminated. Earlier, Abu Khatal and Abdul Rahman both were close to Hafiz Saeed. On the day of Eid, an unknown attacker killed Abdul Rahman. Don't be surprised if you get some big news about these two faces you see behind me. In Pakistan, some unknown people are roaming around on their right and left who have targeted them. News is going on about them in Pakistan. Today, news is going on about their close ones. Such news is that an unknown man came and killed someone close to them. Pakistani media is saying that India is doing all this. I am Mohammed Hasnain Khan. You know the headlines. Bullet. First of all, we will talk about the increasing jar in Karachi. Jar in Karachi, a milkman on Nasir Azad Abdul Hassan Asfahani Road, was termed as a target killing. He said that two unknown accused opened fire on the shop, due to which Abdul got injured. This is a very big news, and along with that it is a very bad news, but the bad news is for the Army Chief General Asim Munir Tamga Imtiaz military. Yes, you are hearing it right. This is very bad news for the Army Chief and for the entire regime, especially for the Noon League. The news lost the game of life. Fearless gunmen killed Hafiz's close aide in the same style in which till now terrorists are reaching hell one after the other. Let me tell you that in the last 3 weeks, India carried out 75,000 attacks on Pakistan. Yes, 75,000 attacks. But in today's video, I will talk about a force which is neither on land, nor on the ground, nor on the ground. The same thing happened with Pakistan in recent times. The person who targeted Hafiz Saeed's close aide, no one has seen him nor does anyone know him. People will attack Pakistan. This is your reality. The end of India. Don't even try to see with your dirty eyes. We will come and take out your eyes. There is a saying that the name itself is enough. So the name itself is enough. Yes, its name is the end of India. How Bharat Hindustan will be broken into pieces and how it will become responsible for its own end. This so-called India is Bharat's secular India. So-called secular, which really does not even understand the definition of secular. What is the definition of secularism? Go and read it again. No minority is safe there. We will include the news. He was martyred from Karachi. 2 miscreants on a motorcycle shot him dead. According to the police, the incident apparently seems to be a target killing. Insufficient evidence has been put forward. How someone is being hired through. He is being trended in Pakistan. Targets are being given. Ids are being delivered. Then after money is being given in small installments so that it cannot be tracked. Now Pakistan, as James Sahab has said, needs to work on narrative building, that the terrorism that is happening with us, probably thousands of Pakistani lives have been lost here in the last 1 year alone. How does Pakistan need to convey this message to the world and explain it in the incidents of terrorism? What options should be used? So, this is that an operation from India, which was being talked about in Canada or America, is still going on in Pakistan. Today it has been heard that there was a person from Lashkar-e-Taiba. He is considered one of the close persons of Hafiz Saeed. He has been killed in Karachi. This is what it has been reported by many people. The terrorist has been killed. Now understand its complete horoscope. Actually, the name of the terrorist killed is Abdul Rahman. Abdul Rahman was a close relative of India's most wanted terrorist Hafiz Saeed. He used to raise funds for Hafiz Saeed's terrorist organization Lashkar-e-Taiba. It is reported that wherever Lashkar-e-Taiba used to get funding, all the money used to come to Abdul Rahman. Friend, where Mulek is wanting you, doesn't want a conflict between the two countries, between Pakistan and India. Question mark. Yes, who doesn't want it? A rabidly anti-Muslim Hindu Modi.
We have said that we will take one step and we will take two steps, okay? 99,000, 95,000 Kashmiri people have been killed. Since 1989, we have left them alone. Forget them too. They are being killed every day. Forget that too. Let's start talking. Brother Musharraf's idea was let's be practical. Let's talk to them. But this Modi still doesn't stop. He doesn't stop. Look at those people who have extreme thinking. BJP supporters can say this because what Narendra Modi thinks is in front of you. Obviously, the thinking of his supporters will be like him. Only then will they be his voters. Everyone should read this book and I think I recommend it. Narendra Modi should also read this book. A copy of this should be sent to Amit Shah as well. The copy of this book whose name is The End of India is the reality and the future of India. They should remember every moment that their future is this. A copy of this book should be sent to Amit Shah. Ajit Doval should send it and along with it, Rajnath Singh should be sent. Arnath Goswami, the philosophical anchor who sits in their studio, should send a copy of this. Major Gaurav Arya should also read it. The End of India should be included in your lists after reading it. But I will briefly tell you. We should know this and we know it. Everyone knows that the current, past and present. Indian rulers' attitude and thinking have been poisonous, inhuman and terroristic from the very beginning of their rule. Who can challenge this? So for me this sick thinking and this revolution is neither a revolution nor a surprise nor a news. What remains is what we should do. We should do that, otherwise we have no one. I will do it. There are only 2 or 3 fronts which are doing their work today. We are the political mafias of this country. You can call them the political community. They want to respect them. They should focus on strengthening Pakistan and minimizing the looting. Dada's rule has ended. Now this India is Modi's India. This is the India of BJP, RSS, Jan Sangh, Hindu Mahasabha. For God's sake, we want to talk to them. We want peace but not a phony peace. When did we see this? We have a living proof of this. Does Pakistan not need to take strict action against them and send a message to India like Iran caught 3 Mossad spies and hanged them? Yes. Pakistan is a law-avoiding country and respects international institutions. We have sentenced them in Pakistan, but we have bindings from the International Court of Justice and some action is going on. So we should not hurry, that monkey is already with us. now these attacks were carried out through different methods. Let me tell you, first of all DDoS attacks, i.e. distributed denial of service, so that websites and networks can be temporarily shut down and the public is deprived of information through fake, i.e. phishing attacks, emails or links. Killing them or stealing them is PTA, and especially the Army's own cyber defense units monitor these threats on a daily basis. Hello friends. So friends, one by one the terrorists who were shouting anti-India slogans are now being killed, and that too in broad daylight inside Pakistan, who till yesterday used to say that Bharat banega Pakistan. I Bharat tere tupti kar iunga. Modi ko elimination longa. I don't know what kind of dialogues these people used to deliver. And it came to light that this morning someone sent them to hell. And that too in front of them, friends, and the best thing and good news is that, friends, no one even knows who this unknown gunman is. Pakistan is busy blaming that India has done this. But friends, there is no country in the world which expresses even a little regret for Pakistan on all these incidents, that yes brother, we are sad, or why only Pakistani soldiers died, and no one has said till date that India is involved in this. And on the other hand, friends, in India, we see that whenever any such incident happens, tweets start pouring in for India from all over the world, because the whole world knows that India does not do all these things, rather Pakistan is the mastermind in all this. So whoever has done it has done a very good job. It should be tried once on Asim Munir as well. If the video is good, then like and share the video and also subscribe to the channel. It is
said that his name was Hanzala Adnan. Indian media people call him the mastermind. How could the 2000 attack and the 2016 attack on the CRPF envoy happen without the presence of Indian apparatus in Pakistan? How is it possible? It is not possible at all. So it means that the apparatuses which we heard about in America or Canada and whose noise we heard all over the world are also present inside Pakistan. And those operators are doing their work. They are not worried, they are doing it the way they want it. Secondly, it is an important development that they will become more powerful and they can do whatever they want in Kashmir and nobody can say anything to them. On the third hand, this factor that we are discussing about Kashmir is where those people who are involved in some or the other thing in Kashmir in the past are being instigated. And you should look at them and check their confidence. It means they have not closed the operation. एक तरफ सरहदों पर जाहिर है टेंशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ तुर्की का मीडिया ये छाप रहा है कि इंडिया अपने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल देने वाला है ग्रीस को। ग्रीस की और तुर्की की आपस में बहुत लगती है, जो इंडियन मिसाइल दाग देगा तुर्की पर, और बड़े स्ट्रॉन्ग मिसाइल है। इस चीज का खदशा तुर्की ने जाहिर किया है। जंग के खदशात मौजूद हैं। भारत की जानिब से ग्रीस को एक मिसाइल बेचा गया है जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर बताई जाती है और ये सिर्फ और सिर्फ टर्की को परेशान करने के लिए बेचा जा रहा है। टर्की का S-400 सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात की जा रही है। लेकिन अगर अच्छी खबरें नहीं है तो इजराइल से अच्छी नहीं आ रही, हिंदुस्तान से अच्छी नहीं आ रही है। भारत कुछ ऐसा ना करे कि बहुत बड़ा कोई पंगा हो जाए या बहुत बड़ा कोई तनाज़ा खड़ा हो जाए। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी ने साइप्रस का दौरा करके भी तैयब उर्दुगान को खुल्लम खुल्ला धमकाया। भारत ने एक ऐसी चाल चली है जिसने एक ही झटके में पाकिस्तान के सबसे बड़े हिमायती तुर्की को शह दे दी है। लेकिन अब जो इंटेलिजेंस की खबरें आ रही हैं वो ये है कि इंडिया जो है वो तकरीबन अगस्त के वस्त में या अगस्त के आखिर में पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला कर सकता है। भारत की जानिब से टर्की के ऊपर एक के बाद एक जो है मुसीबतों का पहाड़ तोड़ा जा रहा है। भारत ने टर्की के गिर्द अपना घेरा जो है बड़ा टाइट कर लिया है। इसकी खबर से तुर्की में ऐसी खलबली मची है कि उनकी मीडिया चीख चीख कर अपनी सरकार से पूछ रही है कि भारत को उकसाने की गलती की ही क्यों। इंडिया एंड ग्रीस हैव बिकम एक तरह से नेचुरल अलाइंस। इंडिया ने इससे पहले आर्मीनिया को, ग्रीस को, फिलीपाइंस को अपने हथियार बेचे हैं और इंडिया की जो वेपन मार्केट है ना, ये दिन ब दिन जो है तरक्की करती जा रही है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत ग्रीस को लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल देने जा रहा है, जिससे तुर्की की नींदें उड़ गई हैं। तुर्की के मीडिया ने यह दावा किया है कि भारत ने ग्रीस को लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की पेशकश की है। यानी भारत और ग्रीस के बीच LRLACM क्रूज मिसाइल को लेकर पर्दे के पीछे बात चल रही है, जो तुर्की के लिए खतरे का संकेत है। तुर्की की रिपोर्ट्स में इस मिसाइल को लेकर हो रही बातचीत में तुर्की की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का ये प्रस्ताव ग्रीस के साथ उसके बढ़ते रणनीतिक संबंधों और हालिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की के पाकिस्तान को समर्थन देने के जवाब में हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की को सबसे ज्यादा डर इस मिसाइल की क्षमता और रेंज को लेकर है। इस मिसाइल को DRDO ने विकसित किया है और ब्रह्मोस मिसाइल की कामयाबी ने भारत की मिसाइल क्षमता का पूरी दुनिया में डंका पीट दिया है। भारत की यह LRLACM मिसाइल 1000 से 1500 किलोमीटर तक की दूरी तक सटीक निशाना साध सकती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की जानिब से टर्की के ऊपर एक के बाद एक जो है मुसीबतों का पहाड़ तोड़ा जा रहा है। भारत ने टर्की के गिर्द अपना घेरा जो है बड़ा टाइट कर लिया है। आज भारत की जानिब से ग्रीस को एक मिसाइल बेचा गया है जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर बताई जाती है और ये सिर्फ और सिर्फ टर्की को परेशान करने के लिए बेचा जा रहा है। टर्की का S-400 सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात की जा रही है। भारत और टर्की के जो रिलेशनशिप है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें बिगड़ते नजर आ रहे हैं, जब टर्की जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी ने साइप्रस का दौरा करके भी तैयब उर्दुगान को खुल्लम खुल्ला धमकाया कि वो कश्मीर का जिक्र छोड़ दे, वरना हम साइप्रस को यूनाइटेड नेशन में लेके जाएंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखा जाए तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस दफा जो है हमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रही है, जो कि खुद को भी
डिफेंड करना जानते हो। इसके साथ साथ जो जो कंट्रीज पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड है उनको जी इंडिया काउंटर करने के मूड में नजर आ रहा है। इंडिया यूरोप को एक्सेप्ट करता है लेकिन टर्की को माइनस करता है। इसी तरह साउथ एशिया का लीडर बनना चाहता है लेकिन पाकिस्तान को माइनस करता नजर आ रहा है। और हथियार बेचना स्ट्रॉन्ग कंट्रीज की निशानी होती है। इंडिया ने इससे पहले आर्मीनिया को, ग्रीस को, फिलीपाइंस को अपने हथियार बेचे हैं और इंडिया की जो वेपन मार्केट है ना ये दिन ब दिन जो है तरक्की करती जा रही है। इंडिया ने क्या किया, तुर्की का मीडिया ये रिपोर्ट्स छाप रहा है जो कि अभी अनऑफिशियल है। अभी इंडिया ने ये दावा नहीं किया कि हम अपना असलहा ग्रीस को देंगे या नहीं देंगे, लेकिन तुर्की का मीडिया ये छाप रहा है कि इंडिया अपने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल देने वाला है ग्रीस को। ग्रीस की और तुर्की की आपस में बहुत लगती है, जो इंडियन मिसाइल दाग देगा तुर्की पर और बड़े स्ट्रॉन्ग मिसाइल है। इस चीज का खदशा तुर्की ने जाहिर किया है। इंडिया का ये कहना है कि बहुत हमने तुर्की की मदद कर ली, हमने हर महाज पर तुर्की की मदद की। जब वहां पर जलजला आया, अर्थक्वेक आया, तो सबसे पहला भारत ही वो देश था जिसने तुर्की को मदद पहुंचाई। लेकिन तुर्की ने हमेशा कहा कि हमारे लिए मुस्लिम उम्मा पहले, रिलीजन फर्स्ट और ह्यूमैनिटी सबसे आखिर में, यानी ह्यूमैनिटी लास्ट है उनके लिए। तो अब हम भी अपने देश को मद्देनजर रखते हुए वही काम करेंगे जो हमारे देश के लिए सूटेबल होंगे। टर्की बहुत उछल रहा था, एर्डोगन बड़ा स्मार्ट बन रहा था, हम तो प्लेन भरकर ड्रोन्स भेज देंगे, तुम प्लेन भरकर मिसाइल से भी भेज दो तो कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। There is something very important happening on the side of the Greece. We have Umesh Agarwal ji. Umesh ji, a very warm welcome on the show. The platform is yours. गायत्री जी, आपने सही बोला है। टर्की हमारा हमेशा दुश्मन रहा है और आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने पाकिस्तान को ड्रोन भेजे थे। वो ड्रोन इनएफेक्टिव साबित हुए भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम आकाश तीर के सामने। और 2 साल पहले टर्की में भूकंप आया था। भारत वॉज द फर्स्ट नेशन टू रेस्पॉन्ड। उन्होंने वहां पे जाके मेडिकल कैंप सेटअप किया था और टर्की में बहुत ज्यादा वहां के लोगों ने अप्रिशिएट किया था। और आपने सही बोला, भारत की जो नालायक कांग्रेस लीडरशिप थी वो हमेशा प्रो टर्की रहा है। और आपने देखा है कि कांग्रेस ने अपने 100 इयर्स के एग्जिस्टेंस में अपने 2019 में अपना ओवरसीज ऑफिस टर्की में खोला था। इसके कारण हम एक तरह से मेडिटेरियन में हम हमारे संबंध अच्छे नहीं कर पाए थे साइप्रस, ग्रीस और आर्मीनिया। आप ये सोच रहे होंगे ये मैं साइप्रस, ग्रीस और आर्मीनिया क्यों बोल रहा हूँ। तो टर्की का एक तरह से हिस्टोरिकल एक तरह से बैटल है इन तीनों नेशंस के साथ। ग्रीस के साथ उसका एक तरह से वहाँ पे एक सी है, मेडिटेरियन सी के पास एजियन सी है। वहाँ पे बहुत सारे एक तरह से लॉट ऑफ ऑयल रिजर्व्स, ऑयल रिजर्व्स के लिए दोनों नेशंस कंटेस्ट कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि साइप्रस में आपने देखा होगा कि उन्होंने नॉर्थर्न भाग ऑफ साइप्रस है, वो साइप्रस से उन्होंने छीन लिया। और वहाँ पे साइप्रस के साथ भी उनके टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। आर्मीनिया के अगेंस्ट अजरबैजान को आर्म्स भी सप्लाई कर रहा है टर्की। और इसी के कारण टर्की हैज बिकम अ कॉमन एनिमी ऑफ ग्रीस, साइप्रस, आर्मीनिया। और टर्की पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, इंडिया एंड ग्रीस हैव बिकम एक तरह से नेचुरल अलाइज। और आपने देखा है कि हमारे जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है कुछ महीनों पहले, 1 महीने पहले वो टर्की गए थे। और टर्की ने हमारा जो रफाल जो हमने यूज किया था ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी ऑपरेशनल डिटेल्स मांगी थी, क्योंकि ग्रीस के पास भी वही रफाल जेट्स है। और एक तरह से ऐलान किया है कि वो टर्की को लॉन्ग रेंज लॉन्ग अटैक क्रूज मिसाइल देने वाला है। इसकी रेंज होने वाली है 1000 से 1500 किलोमीटर। और इस रेंज और ये मिसाइल ऐसी है टर्की में उनके एयर बेसेस, उनके नेवल बेसेस, उनके S-400 सिस्टम्स सबको टारगेट कर सकती है। भारत की जो क्रूज मिसाइल है, सब क्रूज मिसाइल है, जो एक तरह से निर्भय का एडवांस वर्जन है, का एक तरह से सुपरसोनिक स्पीड पे चलता है, सबसोनिक स्पीड पे चलता है। और ये अमेरिकन टॉम हॉक मिसाइल है। आपको याद होगा टॉम हॉक मिसाइल को अमेरिका ने यूज किया था ईरान के ऊपर।
जरा सुनिएगा। तो ऑलरेडी ट्रेड के ऊपर जो है वो इंडिया और अमेरिका के दरमियान जो है नेगोशिएशंस चल रही हैं और कोशिश की जा रही है कि किसी तरह जो है वो मामला को रिजॉल्व किया जाए और टैरिफ के ऊपर जो है वो कोई डील हो जाए इंडिया और अमेरिका की। मोदी ने जैसे ही मोदी आए 2014 में, आप देखें कि चीजें वो किस तरह लेके जा, हमने देखे अपना स्टैंडर्ड हाई रखा, हमने दुश्मन भी बड़ा रखा हुआ है और उन्होंने इतना सा दुश्मन रखा क्योंकि मोदी एक पागल। मोदी जी ने दोबारा से एक काम किया है कि डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा दिखाया कि यू आर नॉट दी ओनली बॉस इन दिस वर्ल्ड। मोदी जी ने ये लिया हाथ और लगाया तमाचा। यूरोपियन यूनियन, यूके, जापान, कोरिया, साउथ अफ्रीका, ये वो कंट्रीज हैं जो झुक गई हैं अमेरिका के सामने, उसकी दादागिरी के सामने। सबने सरेंडर किया, लेकिन एक कंट्री है दुनिया में जिसने अभी तक ट्रेड डील साइन नहीं करी है। और दोस्तों, यही जियोपॉलिटिक्स है का जो दुनिया का सुपर पावर है वो भी मोदी जी की वजह से चल रहा है। यकीन मानिए, मेरे वर्ड जो है ना देखने में सुनने में अजीब लगते हैं, लेकिन हकीकत है सुपर पावर जब तक है जब इंडिया उसके साथ है। देखिए, इक्तिसादी तौर पर हम इंडिया से पीछे हैं, दिफाई बजट में हम पीछे हैं, टेक्नोलॉजी में हम पीछे हैं। समझ आइए आपको नाजरीन? के ऊपर अमेरिका बहुत दबाव डाल रहा था कि ट्रेड डील कर लो, 9 जुलाई तक कर लो, 9 जुलाई की डेडलाइन है। 9 आपको पता है भारत ने अमेरिका को कह दिया है कि भैया रास्ता नापो, ये धमकियों से मामला नहीं चलेगा। एक स्टेटमेंट जारी हुआ, बाकायदा कॉमर्स मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट जारी हुआ। एक नई बहस शुरू हो गई। आपने उसमें कमेंट्स भी दिए 1-2 दफा कि जी ये अब्राहम अकॉर्ड्स वाला सीन चल पड़ा है, तो अब बड़ा प्रेशर आएगा पाकिस्तान के ऊपर रिकग्नाइज करना। और भारत अब एक सॉफ्ट पावर होने के नाते अपने आप को ग्लोबल साउथ का एक तरह से गाइड देश या लीडर देश समझता। नवाज शरीफ साहब का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसमें वो कह रहे थे जी कि जो इंडिया चांद पे गया ये तो हम लोगों ने जाना था। मैंने भी सुना उनकी। देखिए मैडम, ये कैसे झूठे इंटरव्यू देते हैं ये लोग, कैसे ये आवाम को चलते हैं, खुश नहीं होते हैं, ऊपर से दोगलापन दिखा के इंटरव्यू में बता देते हैं चांद पर जाना, सूरज पर जाना। दोस्तों, आप लोग जानते हैं अमेरिका ने जो 9 जुलाई को लेकर के भारत को धमकी दी थी ट्रेड डील को लेकर के, वो भारत ने संपन्न नहीं की और अमेरिका अब भारत के आगे भी झुक गया। आखिर क्या है मामला, पहले वीडियो देखेंगे फिर बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। तो चलिए, मोदी जी ने दोबारा से एक काम किया है कि डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा दिखाया कि यू आर नॉट दी ओनली बॉस इन दिस वर्ल्ड। ट्रंप ने एक डेडलाइन रखी थी 9 जुलाई की कि अगर आपने मेरे साथ ट्रेड डील को साइन नहीं किया तो मैं आपके टैरिफ को बढ़ा दूंगा। अब देखिए हुआ क्या है। मोदी जी ने ये लिया हाथ और लगाया तमाचा। क्यों बोल रहा हूं? सोच समझ के बोल रहा हूं ये चीजें। चाइना, यूरोपियन यूनियन, यूके, जापान, कोरिया, साउथ अफ्रीका, ये वो कंट्रीज हैं जो झुक गई हैं अमेरिका के सामने, उसकी दादागिरी के सामने। सबने सरेंडर किया और जल्दी जल्दी ट्रेड डील साइन कर ली 9 जुलाई से पहले। लेकिन एक कंट्री है दुनिया में जिसने अभी तक ट्रेड डील साइन नहीं करी है। और दोस्तों, यही जियोपॉलिटिक्स है। जियोपॉलिटिक्स के अंदर जो पहले जिसको बोलते हैं ना कि झुक गया, वो हार गया। एंड मोदी जी ने ये काम करके दिखाया है, खुद नहीं झुके। मोस्ट पावरफुल मैन सो कॉल्ड इन द वेस्ट, डोनाल्ड ट्रंप, उसको झुकाया आपने। और डोनाल्ड ट्रंप ने प्रॉमिस किया था कि मैं पहले 90 दिन में 90 ट्रेड डील साइन करूंगा, और ये डेडलाइन रखी थी जुलाई 9 की कि ये थ्रेट है। इसको बोला था लिबरेशन डे। लेकिन हुआ क्या, डेडलाइन आई और डेडलाइन चली गई। डोनाल्ड ट्रंप ने उसको एक्सटेंड कर दिया है, न्यू डेट दे दी है अगस्त 1। अब ये मुद्दा क्या है, ये चेंज कैसे आ गया? डोनाल्ड ट्रंप तो बोलता था मैं झुकूंगा नहीं, मैं इसे एक्सटेंड नहीं करूंगा, आपके पास सिर्फ 90 दिन है। उसका रीजन है उसकी पावर क्या है। हम ये पुराने वाला भारत नहीं है दोस्तों। हमें मालूम है कि ट्रेड डील अमेरिका को हमारे से चाहिए, उसको चाइना को काउंटर करना है, एंड वी आर नेगोशिएटिंग। इसी को बोलते हैं मोदी इंटेलिजेंस या मोदी नॉमिक्स। अब हम गेम को बेटर प्ले करते हैं देन एनीबडी एल्स एक्सपेक्टेड, क्योंकि जब आप भारत की इकोनॉमी के साथ मैसअप करते हैं तो मोदी जी अलाउ नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो काउंटर करते हैं। ट्रंप को ये लगता था कि जैसे ही वो थ्रेट करेगा दुनिया को, सारी दुनिया झुक जाएगी। यस, बाकी उन्हें साइन कर लिया कि भाई बाप जो तुसी बोल रहे हो हम करने को तैयार है। नॉट मोदी, क्योंकि मोदी का भारत है, ये राहुल गंदगी की फैमिली का भारत नहीं है जो हर के जूते पॉलिश करता है। दोस्तों,
हमने अब ब्लैकमेल एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। हम कहते हैं कि फेयर डील होनी चाहिए जो तुम्हें भी सूट करे और हमारी कंट्री को भी सूट करे। तुम्हें भी सूट बोल रहा हूं, मैं अमेरिका को सूट करने की बात ही नहीं बोल रहा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को, उसकी फैमिली को अगर सूट करती होगी तो हम साइन करने को तैयार है, क्योंकि तुम्हें, डोनाल्ड ट्रंप को अब अमेरिका से मतलब नहीं है। इट इज नॉट अमेरिका फर्स्ट, इट इज ट्रंप फर्स्ट। इसकी ईगो को सेटिस्फाई कर दीजिए, जो मर्जी करा लीजिए। मोदी जी बोलते ना तो मैं ईगो सेटिस्फाई करूंगा, ना मैं तुम्हारी कंट्री के अमेरिका फर्स्ट के ऊपर मैं काम करने वाला हूं। तुम्हारा एजेंडा है ट्रंप फर्स्ट। जो ट्रेड डील तुम्हें अपनी फैमिली के लिए तुम्हें करवानी है करवा लो, लेकिन मेरी जो फैमिली है वो है भारत। भारत फर्स्ट ही चलेगा, उसके बिना मैं कुछ नहीं करूंगा। और इसी को मैं बोलता हूं चाणक्य स्टाइल ट्रेड स्ट्रेटेजी। अब ट्रंप ने कुछ गलतियां करी। कैसे? उसने टारगेट किया हमारी 3 इंडस्ट्रीज को, तीनों हाईएस्ट राइजिंग इंडस्ट्रीज है, ऑटो इंडस्ट्री, फार्मा और स्टील। और उसको लगता था कि जैसे ही मैं इसको टच करूंगा भारत झुक जाएगा। लेकिन मोदी जी ने बोला, यार जो तुम मेरा ऑटो को, जो तुम इसको एक्सपोर्ट्स को बंद करवाने की कोशिश कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। आज महिंद्रा की गाड़ियां आपको रशिया में, जापान में, हर कंट्री में दिखाई देती हैं। तुम अमेरिका में नहीं आने दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ पर भारत में कंजम्पशन बढ़ रही है और दूसरे कंट्रीज में हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो गई। यानी कि हमने ऑल्टरनेट मार्केट पहले ही निकाल ली है। दूसरी तरफ स्टील, स्टील के ऊपर इसने टैक्स लगाया। हमने क्या किया? हमने अपनी जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो बढ़ा दी, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करने के लिए स्टील हमने खुद अपने यहाँ पर यूज करना शुरू कर दिया। और फार्मेसी में तो हम फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ऑलरेडी हैं। यानी कि अगर तुम्हारे कंट्री में हमारी मेडिसिन नहीं जाएंगी तो तुम खरीदोगे कहां से? टैक्स लगाना लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें ही महंगी दवाइयां लेनी पड़ेंगी। ये तब हो रहा है दोस्तों जब जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया, चाइना ये सब झुक चुके हैं और भारत अकेला खड़ा रहा ट्रंप के सामने। दोस्तों, आप लोग जानते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जब से बने हैं वो टैरिफ को लेकर के बहुत ही ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं और वहीं पर वो दुनिया भर के देशों में बहुत ही ज्यादा टैरिफ लगा रहे हैं, जिससे दुनिया भर में महंगाई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों वो भारत के ऊपर भी टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि अगर भारत 9 जुलाई तक ट्रेड डील संपन्न नहीं करता है तो हम भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे। जिसके बाद कहा जा रहा था कि अब देखना यह है भारत झुकेगा या नहीं। लेकिन दोस्तों 9 जुलाई भी आ चुकी और भारत अमेरिका के सामने नहीं झुका और अमेरिका ने 14 देशों को तो टैरिफ लगाया, लेकिन भारत को 1% का भी टैरिफ नहीं लगा पाया और भारत वैसा ही अड़े खड़ा रहा और भारत ने ट्रेड डील साइन करने से इनकार कर दिया और ट्रंप को भारत के आगे झुकना पड़ा, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया बौखलाई हुई है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना इस वीडियो को लेकर के। साथ ही ये जो मैंने ओनर्स की क्लिप्स ली हैं, इन सभी के चैनल्स के नाम मैं डिस्क्रिप्शन पे देने वाला हूँ, सभी के चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत। Yesterday, 3 FC soldiers were kidnapped and their throats were slit. Their video was made and made famous all over the world. This actual battle is in the tribal areas, which is Mediniat. Some forces want to capture Mediniat. That is why the situation is bad. And until Mediniat does not come under their control, the situation will remain bad like this. The enemy of my enemy is my friend, right? Yes, you must have heard this phrase. Yesterday our 3 FC soldiers were martyred. Their throats were slit. Astaghfirullah Azim, Astaghfirullah Azam. That means there is a drone attack there. The media first asks, takes permission and then runs a news in a roundabout way. Pakistan's media does not run the news. Is Pakistan the name of Islamabad and Lahore and a few other cities, or is it the name of Karachi? Any other city is not a part of Pakistan. The inside story is that we are very upset that Israel has maintained such good relations with India that transfer of technology is also happening. They are also being helped. India is trying to buy Rup and Heron drones from Israel. They are also buying Majid. 1 lakh Pakistanis have been martyred and not a single Indian soldier has died. Now you can see for yourself how big a failure there is in Pakistan's national security policy and see the comparison between India's national security policy. DGMO level talks were going on. Pakistan actually was mentioning that we know that your true and serious factor is ready for action. And I tell you to pull it back.
Zardari Sahab, his son, they said that India should cooperate with us. We handed over everything to them. Maulana Masood Azhar was also handed over and Hafiz Saeed is in custody anyway. Now don't you think that the people of India should tell their prime minister that you should join hands with Pakistan and conduct an operation against the terrorists? Otherwise, what will happen is that India is going to attack us from the Mashriq any time. If all these areas remain like this, the dogs of hell will come out like cockroaches and attack us. Right now, when the times seem peaceful, India has not attacked. This is the situation right now. One thing is that they are working very hard to modernize their air force, and at the same time they are strengthening their air defense system. And you think that there is hope that somehow we will canvass Donald Trump to solve the Kashmir issue, and if nothing else, bring back the Musharraf formula so that these fights and quarrels end. We can also give attention to our people. Instead of defense and arms of sense, and so they martyred 1 lakh Pakistanis, and we did not kill a single Hindu. We did not kill a single Indian soldier, and thousands of our soldiers have been martyred. The surrender of 1971 is the biggest in Islamic history. 93,000 Pakistani soldiers laid down their arms, which is a record after the Second Great War. No bigger surrender of soldiers has been recorded than this. Now the situation on their roads is such that the dogs of hell set up command posts and checkposts. They get people off the buses, check identity cards, they kill or kidnap them and take them away. Even now many of our officers and soldiers are in their custody, and whenever they wish, they take out someone and slit his throat and throw him away. Where is the government of Gandapur? They should have made statements in full support of the Pakistani army and taken a stand against the dogs of hell. They and their entire political machinery and police have actually become companions of the dogs of hell. Do you remember the police there recently took out a procession and created a ruckus saying that the army should be removed from here? We will control the dogs of hell ourselves. They built so much pressure on the army, took out processions that the army went to its camps and only does intelligence-based operations, or if it is attacked. And the security of the area, which was the responsibility of the police, on which they had created such a storm against the army, where is that security now? How is it possible that the dogs of the mind have set up checkposts on big cities, or searching vehicles, and there is no police, no FC, no army there? You pushed the army back, told them to go to their areas, go to their camps, and there is no need to go out and block our roads and conduct searches and checks. And what is the police itself doing? What is the government of Gandapur itself doing? Personally, I have no peace left in the fact that we will have to impose governor's rule in the province of Khyber. Much more strictness will have to be taken. The billions of rupees of government funds that are given against these dogs of hell and their facilitators, they pay a lot of it in the form of allowances to this Gandapur government of law enforcement. To TTP so that our people are not killed in our areas. As said, this is now practically going out of our hands. No national policy. Hello friends, welcome to a new video of mine. Friends, there's always a tussle between India and Pakistan, but the Pahalgam attack that was carried out by Pakistan, innocent Hindus were killed at the hands of terrorists sent by Pakistan. Since then the relationship between India and Pakistan has ended completely. But going a step further, TTP is helping India. They are helping PLA. The Indian army is helping them through India's path, due to which attacks have increased inside Pakistan. This is the statement of the Pakistani media, especially the Red Cap, that India is helping TTP. So TTP is a group which is similar to Taliban which rules Afghanistan. There is an organization associated with them which is attacking inside Pakistan and killing the Pakistan army by carrying out continuous attacks on it. The provincial government has the full control to manage this. They are not allowing the army to do this. They have let the dogs of hell run free. Yesterday, our 3 FC soldiers were martyred. Their throats were slit, astaghfirullah. There is no condolence from the Grand Provincial Government, no participation in the funeral. They will be silent as if they are celebrating. It is good. The army has suffered losses. Astula. We will have to impose a strong governor's rule there or put it under martial law. That entire area will have to be taken over from the provincial government. Whatever money, whatever resources, whatever authority they have, they are using it against the state of Pakistan. A very dangerous nexus of PTI, PTM and TTP has been formed in the province which needs to be broken and controlled at any cost. The current policy is not working. The state is losing its control. All those areas have now become no-go areas. For the sake of Pakistan's propaganda and its people,
Dozens of soldiers who go home on leave are murdered in their homes. Those who are coming or going from leave are shot dead from the roads. This has to stop. It cannot go on like this. The Pakistan Army Command will also have to take serious decisions now. How is this possible? You have drones. Why can't you monitor all those roads 24 hours a day with ISR drones so that drone strikes can be carried out at checkposts? At the same time, at the same place, your guard officers and soldiers travel in this area. Why have you not yet allowed them to carry these automatic weapons so that at least if they have to die, they die fighting? They should take 101 dogs of hell with them. Why are you paralyzed till now? Why are you unable to decide what to do against these dogs of hell? Jafarabad Express was derailed in Baluchistan. Around 300 of our soldiers were inside it. All were empty-handed. When you know that you are passing through Blah territory, why did you not arm your soldiers? If they had 300 rifles, no Blah would have dared to burn down that train. Why is the army unable to understand till now that we are in a state of war? Our officers and soldiers are being kidnapped from the streets and killed. Why is there no response till now? Why is the decision being delayed? Maybe India, look at such a big statement today. They can ponder over it for 2 or 4 days because nobody trusts us. We have given a statement today. We will not back out in the morning. Now whatever comes on the internet, Al Jazeera has recorded it. Now how will Bilawal Bhutto back out? Oh brother, Bilawal Bhutto can back out like this. My people did not like me. They did not like my decision when I went to the public. Bilawal Bhutto said Maulana Masood Hazrat. So the friendship between Afghanistan, India and Afghanistan is so good. Will India call Afghanistan Maulana Masood Hazrat? You people have it. So friends, did you see the video of how the Pakistan army is being attacked? Due to which these red-cap Pakistani media people are furious. They are angry that India is getting all this done because the TTP is carrying out rapid attacks on Pakistan. On the other hand, the Baloch Liberation Army, BLA, is also attacking the Pakistani army very frequently. Pakistani soldiers are being killed every day. Secondly, there is always conflict on the Lak, which is their border with India. There is always tension. They always get a befitting reply from India. Whenever they issue ceasefire from there, whenever they do sailing from there, so they are surrounded from all sides. They are very troubled. So Lal Tope has now directly announced a proxy war that now we should launch a proxy war against Hindus in India. Because all the unrest in Pakistan is being caused by India. India wants to destroy Pakistan. And the rest of you people have already seen the entire video. If you have not subscribed to the channel, please subscribe to the channel. Like the video, share the video. See you in the next video. Till then, Jai Hind. कि भारत से जंग में पाकिस्तान को किस कदर बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। कर दूं, जो वक्त गुजर रहा है तो ये जो हमारी जंग हुई थी इसके लॉसेस सामने आना शुरू हुए। ब्रिक्स में पहलगाम अटैक को प्रॉपर तौर पे कंडेम किया गया है। तो ये एतराफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आज नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में दौरे के मौके पर जिस हद तक भारत ने डैमेज किया और आहिस्ता आहिस्ता हमारे इतने फौजी मर गए थे कि मोदी साहब दोबारा अटैक कर सकते हैं या नहीं वो करना चाहें। सबसे बड़ा डिफेंस बजट तो इस खित्ते में उन्हीं का है, 78 अरब डॉलर। सबसे ज्यादा आर्म्स इंपोर्ट ये करते हैं दुनिया से। कि भारतीय फौज ऑपरेशन सिंदूर वार्निंग के बाद भी भारत कोई बराह रास्त जंग का प्लान कर सकता है या प्रॉक्सी वॉर के जरिए ही पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशें करता रहेगा। कि हमारे पास सप्लाई चेन का इशू है, हमारे पास फ्लाई इक्विपमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान न सिर्फ ये कि टेक्नोलॉजिकली पाकिस्तान से काफी आगे, S-400 सिस्टम उनके पास है, राफाल उनके पास है, फिर ब्राह्मोस मिसाइल्स हैं, सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, इस तरह की और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक क्लियर डिफरेंस रहा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। लेकिन इकोनॉमी जबरदस्त, यानी तकरीबन $700 बिलियन के रिजर्व्स रखता है। हमारे पास 12 से 13 अरब, मुश्किल से वो भी अगर उसका एक्चुअली हम उसका खुलासा करें तो वो पैसे हमारे अपने हैं भी नहीं, वो इधर उधर के पैसे हैं, अपने पैसे हमारे नहीं हैं। काजी साहब देखें, ये जो ब्रिक्स है ना, इसके मामले में हमें देखना पड़ेगा कि ब्रिक्स है क्या। ब्रिक्स एक बहुत बड़ा इत्तेहाद है जो आलमी सतह पर एक इत्तेहाद बन रहा है और अमेरिका जो है वो खतरे में है, क्योंकि ब्रिक्स जो है उसका एजेंडा देखा जाए तो उसमें एक तजारती इत्तेहाद है, एक करेंसी एक करना है तमाम ममालिक की, और एक बैंक जो है वो तश्कील देना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत से मार खाकर बड़ी बड़ी बातें करने वाला पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के सामने खुद ही नंगा हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने लाइव टीवी पर भारत का लोहा मान खुद ही अपनी पोल खोल दी है। पाकिस्तानी आवाम को झूठी जीत का चूरन बेचने वाले पाकिस्तान ने आखिरकार मान ही लिया है कि भारत ने हमें बहुत मारा है,
जिसे पाकिस्तानी आर्मी और नेता अभी भी बुला नहीं पा रहे हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान को आज भी इस बात का डर सता रहा है कि कहीं भारत फिर से पाकिस्तान पर उसी तरह हमला न कर दे जैसे भारत ने पहले किया था। दोस्तों आइए देखते हैं भारत से मार खाकर रोते बिलखते पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो। काश साहब देखें, ये जो ब्रिक्स है ना, इसके मामले में हमें देखना पड़ेगा कि ब्रिक्स है क्या। ब्रिक्स एक बहुत बड़ा इत्तेहाद है। तो अगर इन सारी चीजों को देखा जाए तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि उसमें हिंदुस्तान को एक एज है और एज रहा है। बट ये अलग बात है कि जब जंग होती है तो फिर बेशक कमजोर हो या कोई ताकतवर हो, तो अपने जो उनके पास रिसोर्सेज होती हैं, ईरान भी इसराइल को पड़ गया था, जैसे भी कर सकता था। मतलब कंपैरिजन अगर करे कंपैरेटिवली तो कंपैरिजन तो नहीं बनता इसराइल और ईरान का। सेम लाइक दैट शायद इंडिया और पाकिस्तान का भी काफी बड़ा डिफरेंस रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई मतलब जी 50-60 का था या 60-70 का था। इन्हें अच्छा खासा डिफरेंस क्रिएट कर दिया था हिंदुस्तान ने लास्ट 10 to 15 ईयर्स में। लेकिन चले उसके बावजूद पाकिस्तान ने जिसे कहते हैं कि कहा था कि जी हम आपको जवाब देंगे, फिर जवाब दे दिया। खैर जो भी हुआ, वो कहते हैं कि पाकिस्तान गया अमेरिका के पास और कहा कि यार हमें बचाओ, सीज फायर करवाओ, और पाकिस्तान कहते हैं हमने सीज फायर नहीं के लिए नहीं गए, वो कहते हैं जी इंडिया सीज फायर के लिए गया। खैर एनीवे चले सीज फायर हो गया, अच्छी बात। पाकिस्तान शायद कोशिश भी कर रहा है कि हम ब्रिक्स के किसी तरीके से मेंबर्स बन जाएं, और अगर मेंबरशिप मिल जाती है तो पाकिस्तान के लिए अच्छा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका एक बड़ा मुल्क है, चाइना है, रशिया है, फिर और कंट्रीज इसका हिस्सा बन रहे इस ब्लॉक का। यकीनन इंडिया भी है, इंडिया के साथ वैसे भी हमारी वो चीजें हो सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली है नहीं, हालात ऐसे रहे नहीं। कुछ ना कुछ ऐसा रहता है जिसकी वजह से हालात बेहतर नहीं होते। तो अब ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब आफ्टर द ऑपरेशन सिंदूर या जो पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद जो क्लैशेस हुई, उसके बाद उन्होंने इन चीजों के ऊपर शायद और ज्यादा फोकस कर दिया। और अमेरिका के हवाले से अगर हम बात करें तो अमेरिका यानी जब वो कनाडा से आ रहे थे तो उनको बाकायदा फोन आया डोनाल्ड ट्रंप साहब का, और कहते हैं कि 35 मिनट्स इनकी आपस में बातचीत हुई। लेकिन उसके बाद उनको कहा गया कि अगर आप आना चाहें तो आप हमारे पास आ जाएं, यानी मुलाकात की बात कर रहे थे, क्योंकि G7 में उनकी मुलाकात नहीं हो सकी थी, लेकिन रिफ्यूज कर दिया नरेंद्र मोदी साहब ने उनके साथ मुलाकात, क्योंकि उन्हीं दिनों में पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर और उनके साथ DG ISI थे जनरल आसिम मलिक, इन सब की मुलाकात जो है वो थी। और शायद इस वजह से या फिर ये भी पॉसिबल है कि नरेंद्र मोदी साहब ना मिलना चाहते हो डोनाल्ड ट्रंप से, क्योंकि उन दिनों में ताज़ा ये चीज़ हुई थी। तो गालिबन उनको मेरे ख्याल में हमसे ज्यादा बेहतर उनको पता है, क्योंकि वो एक मुल्क को चलाते हैं, प्राइम मिनिस्टर है तीसरी दफा और इतनी बड़ी कंट्री को वो लीड कर रहे हैं, तो वो बेहतर जानते होंगे। लेकिन नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो नरेंद्र मोदी साहब की जब भी आप बड़ी फेमस हैं, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ हो, यूके के प्राइम मिनिस्टर के साथ हो, फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ हो या किसी और के साथ हो, वो बड़ी मशहूर है। लेकिन अब लगता है कि उन्होंने जो फोकस किया हुआ है वो इन कंट्रीज के ऊपर किया हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका को उन्होंने कोई साइड पे कर दिया, ऐसा नहीं है। क्वाड का अभी भी मेंबर है, क्वाड में अभी भी पार्टनरशिप है, बट इन क्लैशेस के बाद शायद थोड़ा सा जो अमेरिका तो हमारे साथ तो खैर बहुत दफा कर चुका है, हम तो आदी हैं, जब हमारी जरूरत होती है तो हम बहुत अच्छे होते हैं, जब नहीं होती तो फिर वो बाकी लोगों के साथ भी गालिबन यही करता है अमेरिका। लेकिन हमारे साथ तो इस किस्म के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, हम उनके साथ गेमें खेलते हैं, सीधी सी बात है। वो बेशक सोवियत यूनियन की वॉर हो या बेशक उसके बाद अफगान वॉर हो, हमने उनके साथ गेमें की, वो हमारे साथ गेमें करता है। हम उनसे पैसा लेते हैं और जब उनको जरूरत नहीं होती और वो निकल जाए तो कहते हैं यार हम तो आपको जानते भी नहीं, आप कौन है। तो ये सारे सिलसिले चलते हैं, लेकिन गालिबन इंडिया उस तरीके से तो ना कभी अमेरिका के साथ गया है, ना उनके फेवर में ना उनके अगेंस्ट, एक बैलेंस क्रिएट करके रखा हुआ उन्होंने। तो शायद उनको इस चीज का था, लेकिन जो हमने लास्ट 5-7 ईयर्स में चीजें देखी अमेरिका और इंडिया के दरमियान, तो उससे ऐसा लग रहा था कि शायद
बहुत ज्यादा आपस में कुर्बत आ गई, बहुत करीब हो गए हैं और शायद अब अगर कोई मसला होगा तो पाकिस्तान को बड़ी एक मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उस तरीके की चीज नहीं हुई। और दूसरी बात ये है कि मतलब हमें ये भी था कि मिडिल ईस्ट भी आकर उनको फेवर में खड़ा होगा, वेस्टर्न वर्ल्ड यानी यूरोप वगैरह, अमेरिका, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और पाकिस्तान के साथ अगर हम देखें तो इंडिया के मुकाबले में इंडिया के साथ इजराइल का बड़ा मुल्क है, मतलब टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग मुल्क है। फिर चीन था, टर्की था, अजरबैजान में, इन 3 कंट्रीज ने खुल के कहा कि भाई मतलब जो भी उनके फॉरेन ऑफिस से बयानात हो, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स को टेलीफोन कॉल्स हो या बाकी चीजें हो, उन्होंने की। हालांकि आज भी पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में, वो स्टूडेंट से मिल रहे थे, तो वहाँ पे जो फौज के लोग थे, उनकी डिफेंस यूनिवर्सिटी में वो ज्यादातर लोग पढ़ते हैं, तो उनसे खिताब में उन्होंने कहा कि भाई ये कहना कि हमें किसी और की मदद हासिल थी तो ये गलत होगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी लाजमी सी बात है, पाकिस्तान कोई अपनी चीजें तो नहीं बनाता कि हम कहें कि एक JF-17 थंडर के अलावा या मिसाइल्स हैं हम बनाते हैं, लेकिन बहुत सारी टेक्नोलॉजी, डिफेंस सिस्टम हमारा कोई उस तरह का तो नहीं कि S-400 हम बनाते हैं, रशिया बनाता है, इस तरह की और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बाकी दुनिया से लिए जाती हैं, रडार सिस्टम है या फिर इस तरह का और बहुत सारी चीजें, और जो हम खुद बनाते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाली चीजें भी हम बाहर से लेते हैं। लेकिन ड्रोन्स या आपकी डिफेंस सिस्टम या आपके फाइटर जेट्स, ईरान, टर्की और चाइना, ईरान, टर्की और अजरबैजान तो खैर हमसे जहाज ले रहा है, लेकिन इन 2 के पास टेक्नोलॉजिकली चीजें हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 27 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म दिया है। लेकिन नाज़रीन, एक लम्हे के लिए सोचे कि हमने ये सीखा कहां से है यूट्यूब चैनल्स को बंद करना। तो ये हमें सिखाया मोदी अंकल ने। मोदी अंकल ने ये चीज हमें सिखाई है यूट्यूब चैनल्स को कैसे बंद करते। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और अब मुझे बहुत ज्यादा खौफ आ रहा है, खौफ इन मानों में कि शायद ना बोलने की आज़ादी है खुलकर, ना तहरीर की आज़ादी है, खुलकर आप कॉलम लिख सकते हैं। एक डिजिटल मीडिया की आज़ादी थी, लगता यही है कि डिजिटल मीडिया को भी जो है ना वो काबू करने का फैसला हो चुका है। इंडिया में जब यूट्यूब को ब्लॉक किया गया था चैनल्स को, तो ये ब्लॉक करने का ऑर्डर सिर्फ इंडिया तक ही महदूद था। ये दूसरे ममालिक में वो तमाम चैनल्स जो है वो एक्सेसिबल थे, लिहाजा अब्बास शाह साहब जो हैं वो उनके हुक्म के मुताबिक पूरी दुनिया में ये चैनल जो है वो बंद कर देंगे। जहां हर सतह पर आप रोक रहे हैं, आप एडिटर्स को जाके, मालकान को जाके इनडायरेक्ट ये बात की जा रही है कि ये नहीं आएगा, ये नहीं चलेगा, इसकी आवाज नहीं होगी, उसकी आवाज नहीं होगी, तो बेहतर है कि एक मुकम्मल पाबंदी लगा दें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब भारत ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को बैन किया था तो ये लोग इतना मजाक उड़ाए थे और इतना प्रोपेगेंडा किया था कि देखो भाई ये हमारी विक्ट्री है, क्योंकि भारत सच को छुपाना चाहता है, इस वजह से बैन कर दिया है पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को। लेकिन अब पाकिस्तानी यूट्यूबर को ही पूरे वर्ल्ड वाइड बैन करने का एक रिक्वेस्ट डाला गया है पाकिस्तान के हाई कोर्ट की तरफ से, और ये बंद होना स्टार्ट हो चुका है। अब ये वर्ल्ड वाइड बंद हो रहा है या कुछ, यूट्यूब ये क्लियर तो नहीं लिख करके डाला है, लेकिन बहुत जगह ये खबरें चल रही है कि ये पूरी दुनिया में मतलब पूरी चैनल को रिमूव करने का रिक्वेस्ट है, लेकिन कुछ जगहों पे है कि नहीं पाकिस्तान में बैन करने का रिक्वेस्ट है, तो आने वाले टाइम में क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये पाकिस्तानियों की सच्चाई है और पाकिस्तानी मीडिया ये बात चीख चीख कर बोल रही है कि भाई ये हम लोग के साथ धोखा हुआ है। और यहाँ पे जो पाकिस्तान में चलते आ रहा है शुरू से, पाकिस्तानियों को उठा लेना, पाकिस्तानी पत्रकार को उठा के बंद कर देना, कहीं भी गायब कर देना है, मार देना, मतलब क्या क्या नहीं होता है। और ऐसे भी अभी तो क्लियर ये हो गया है कि भाई सब कुछ पाकिस्तानी आर्मी के कंट्रोल में है, वहां से जो लेटर आता है वही मीडिया पे चलता है, वरना कुछ न्यूज नहीं चलता है। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले वीडियो को देखते हैं, और वीडियो चलते वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दें। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो में। हम चे हैं या हम क्या हैं, यानी समझ से बाहर है। हमारा ये रियासती नैरेटिव स्टेट, हमारा ये बयानिया रहा है इस जंग के दौरान। हमने इंटरनेशनल इस बात को एस्टेब्लिश किया कि इंडिया कुछ ना कुछ छुपा रहा है, दाल के अंदर कुछ ना कुछ काला, या पूरी की पूरी दाल काली है,
कि इंडिया यूट्यूब चैनल्स को बंद कर रहा है, इंडिया इंफॉर्मेशन के सोर्स को बंद कर रहा है, इंडिया सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया के अकाउंट्स को बंद कर रहा है ताकि मालूमात वहां पर ना जाए। बल्कि पाकिस्तान के जो मोहतरम DGISPR साहब हैं, तमाम तर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में धड़ल्ले से छाती चौड़ी करके चेहरे के ऊपर सरकास्टिक मुस्कुराहट के साथ उन्होंने ये कहा कि देखा आपने फिर ये मीडिया के साथ क्या किया जाता है। इंडिया की मिसाल ले लें, उन्होंने यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दिया, पाकिस्तान के अंदर ट्विटर खुला, इंडिया के अंदर यूट्यूब चैनल्स बंद हुए, सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद हुए। तो इस चीज को हम सेल करते रहे, इस चीज के ऊपर हम बयानियां बनाते रहे, हम पूरी दुनिया को बताते रहे, हम दुनिया को दिखाते रहे कि भाई हम बड़े ट्रांसपेरेंट हैं, हमारा मुल्क खुला हुआ है, हमारे मुल्क के अंदर जनाब जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा आजाद है, हमारे मुल्क के अंदर बातचीत गुफ्तगू बहुत ज्यादा आजादी के साथ की जाती है। लेकिन अब हमारा जो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो ये कह रहा है कि यूट्यूब को ये कह रहा है कि आप इन यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दे, और जाहिर है हुकूमत इस सारे हुक्मनामे को अटैच करके भेजेगी और कोशिश करेगी कि यूट्यूब चैनल्स को बंद कर। और वैसे भी इस मुल्क में तो एक अलमिया ये है कि जो अगर अपने पैर पे भी खुद खड़े होने की कोशिश करे, जो भी खुद कमाने की कोशिश करे, तो उसको ऐसा उस पे वार किया जाता है, आप इकोनॉमी नहीं सही चला पा रहे तो इसमें हमारा क्या कसूर है, आप मईशत को एक सही ट्रैक पे नहीं लेकर आ सक रहे, आप मुल्क को एक सही सिमत की जानिब गामजन नहीं कर सकते, तो इसमें यूट्यूबर्स का क्या कसूर है। यूट्यूबर्स अगर हाईलाइट कर रही हैं आपके वो तमाम जो एंटी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इस मुल्क में नाफिज की जा रही हैं, उसकी वजह से आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। मुल्क इसका खमियाजा उठा रहे हैं, अवाम इस मुल्क की इसका खमियाजा उठा रही है। तमाम जो जमहूरियत मुखालिफ जो आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो इक़दामात हैं, जो आप कभी भी अंडू नहीं कर सकते, उन एक्शंस के बेसिस पे आपने इस मुल्क की फिजा को चोक कर दिया है, आपने इस मुल्क में एक हब्स बर्पा कर दिया है कि एक नॉन स्पीकिंग ऑर्डर है, क्योंकि एविडेंस नहीं है, इसमें एविडेंस लैक करता है, तो इसको किसी भी तरह से आप एक स्पीकिंग ऑर्डर जो है वो करार नहीं दे सकते। सिर्फ एक तफ्तीशी अफसर के कहने पे एक यकतरफा ऑर्डर कैसे पास किया जा सकता है। जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उनसे गुजारिश है कि हक समाज सबको दिया जाना चाहिए, ये रिवायत मत डालें कि आप यकतरफा फैसले कर रहे हैं। ये क्यों हम खामाखाई क्या एक खड़ा किया हुआ है कि जी बड़ी जमहूरियत है, बड़ी आज़ादी इजहार है। नहीं है आज़ादी इजहार, ठीक, ये जो आपको नजर आता है ये इजहार की आज़ादी नहीं है। मुझे इनमें से बेशतर यूट्यूबर से इख्तलाफ है और शदीद इख्तलाफ है। आप इन पर मुकदमा बनाएं, इनको पेश करवाएं, नहीं आते समन करें, एक कानूनी रास्ता इख्तियार करें ना। ठीक, ये कानूनी रास्ता नहीं है। अब मुझे आप पैका बता दें, पैका के तहत पुलिस के पास कहाँ इख्तियार था, लेकिन पुलिस उठा के ले जाती है, ठीक, पुलिस उठा के बंद कर देती है जिसके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। भाई उसके लिए एक अलग एजेंसी बनाए। तो ओवरऑल मुझे एक कंट्रोल्ड किस्म का एक हाइब्रिड फ्रीडम ऑफ द प्रेस का निजाम नजर आ रहा है। अगर आप ये तमाम नाजरीन के लिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये ऑर्डर शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लेवल पे स्टैंड नहीं करेगा, तो बिल्कुल ये दिमाग से अपने ये ख्याल निकाल दीजिए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो चीफ जस्टिस साहब हैं जिनके हवाले से हालिया ऑर्डर सामने आया है, फैसला सामने आया है, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अब चीफ जस्टिस डोगर साहब हैं, और डोगर साहब की अदालत में आप क्या ही कहे इंसान के, जिस तरह से हमें नजर आया है मामलात को चलते हुए। सो ये केस जो है वो बिल्कुल ये ऑर्डर स्टैंड करेगा। एक एप्लीकेशन जो कि सब इंस्पेक्टर ऑफ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उनका सब इंस्पेक्टर जो है वो एप्लीकेशन दे रहा है, ये सेक्शन 37 का को इन्वोक करके, और सेक्शन 37 जो है वो कहता है कि पावर जो है इट लाइज विद पीटीए यानी कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, और पोस्ट अमेंडमेंट जो सोशल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी है ये उसके पास ही सारे पावर्स है। ये सब इंस्पेक्टर जो है वो आके इसमें जो है वो मुद्दई बन रहा है, वो आके जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करा रहा है। वो तमाम आवाजें जो आपको पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के दौरान सुनाई दी गई, जिसमें हम जब देखते थे कि पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं उनके चैनल्स इंडिया ब्लॉक कर देता था तो हम बड़ा सेलिब्रेट कर देते, हमारे लिए एक बड़ा विक्ट्री, एक बड़ा एक शील्ड की तरह हमारे लिए था कि इंडिया ने हमारा चैनल जो है वो ब्लॉक कर दिया। यूट्यूब चैनल्स न्यूज चैनल्स के हो रहे थे और उसमें बार बार ब्रेकिंग चलाई जा रही थी, हम बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे इस बात को कि इंडिया ने हमारा यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिया। लेकिन पाकिस्तान में अब यूट्यूबर्स के साथ भारतीय सलूक ही हमें नजर आ रहा है। अब ये एक नया हथकंडा है, ये भी करके देख लो। इससे पहले आपने सारा कुछ करके देख लिया ना, सहाफियों को गोलियां तक मारी है, अरशद शरीफ जो है वो शहीद हो गया, सहाफियों के ऊपर मुकदमा दर्ज किए गए, बार बार गिरफ्तार किया गया, 10 गिरफ्तारियां तो मेरे अकेले की हैं। इसके बाद जो है वो आपने सहाफियों को जबरी तौर पे लापता किया, मुझे भी लापता किया जबरी तौर पे, और मैं 5 महीने तक वहां पे रहकर आया। अगर उससे आप नहीं जीते ना तो इससे भी आप जीतने नहीं वाले, ना हम आपको जीतने देंगे।
हमें 70 साल से मार खा खा के मार खाने की आदत पड़ गई है। आपको भी मार खाने की आदत नहीं पड़ी, आपको पता चलेगा जब पाकिस्तानी रिटेलिएट करेंगे। पाकिस्तान के DGISPR खुद उस वक्त जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ कर ये बात बोला था कि देखे जी, भारत ने ये चैनल बंद कर दिया, भारत सच से छुपा रहा है और हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है, भारत के मतलब भारत में आवाज़ों को दबाई जाती है। लेकिन पाकिस्तान का ये रिकॉर्ड रहा है और अब सारी मीडिया पे खुल करके आ रही है कि भाई पाकिस्तान में क्या क्या नहीं होते आ रहा है जर्नलिस्टों के साथ। और अभी जो बंद किया गया, क्योंकि इंडियन चैनल भी पाकिस्तान में ऑलरेडी बैन है, बहुत सारे चैनल, और अब तो पाकिस्तानी यूट्यूबर, खुद का पाकिस्तान के यूट्यूबर जो हैं, जो कि पाकिस्तान में रहते हैं या जो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं पाकिस्तानी फौज के अत्याचार के कारण, अब वो लोग का चैनल बैन कर जा रहा है, वो भी पूरा वर्ल्ड वाइड बैन किया जा रहा है। अब पता नहीं है वर्ल्ड वाइड होगा या पाकिस्तान में ही सिर्फ होगा, वो आने वाला टाइम में क्लियर होगा। लेकिन ये पाकिस्तान की सच्चाई है और पाकिस्तान अपना सच नहीं बता करके बस भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने आता है और कुछ आता नहीं है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आपकी राय क्या है इस वीडियो पे हमें कमेंट में जरूर से दें, और अभी तक चैनल पे बने हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट मजेदार टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Prime Minister Narendra Modi has reached Brazil's capital Brasilia from Rio de Janeiro after attending the BRICS summit. In Brasilia, he was welcomed with Shiva Tandava Stotra and Indian classical dance. PM Modi will hold bilateral talks with Brazilian President Lula Silva today on several issues including trade, defense, energy, space, technology, agriculture, and health. Bujang Malika Dum 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 Dumna Dum Dum Chakra Shiva Shivam Jaga Keda Shiva Virajman Murdhani Dagat Daga Daga Jalapa Kishore Chandrare Pratisthana. You can see that Prime Minister Modi was welcomed grandly by the Brazilian president, and the Indian diaspora gave a grand welcome to Prime Minister Modi by making the theme of Operation Sindoor. He talked about business, and if we look at the actual thing for which the BRICS forum is formed, it is business. So, if we look at it recently, he was welcomed in a very grand manner. And this is Prime Minister Narendra Modi's tweet. Grateful to President Lula for hosting this year's BRICS summit in Rio de Janeiro. BRICS remains a powerful force for economic cooperation and global good. So, Prime Minister Modi was welcomed very well here. But this is just the beginning of the story, friends. This is the first page. But if we talk about India, we have seen that India has been managing things in a better way. It has been balancing things. But now when there were clashes between Pakistan and India, after that it seemed that India was a little bit unhappy with New Delhi and Washington. He reached Brazil, so you can see how grandly he was welcomed. These are the pictures from the airport. He meets people from the Indian community in a similar way wherever he goes, and the picture was seen there as well. There was a grand welcome there. You can see that Prime Minister Modi was welcomed by the President of Brazil, and the Indian diaspora gave a grand welcome to Prime Minister Modi by making the theme of Operation Sindoor. Now you will say that it was a dance performance. What does it have to do with Chanakya dialogue? Friends, the echo of Operation Sindoor is in every corner of the world, and wherever Indians are, they are taking the name of Operation Sindoor. You can imagine that the Prime Minister of India is being welcomed here in BRICS, and he is being welcomed through a dance performance on the theme of Operation Sindoor. You can understand how powerful a statement it is that India is giving to the whole world. And this is Prime Minister Narendra Modi's tweet. Grateful to President Lula for hosting this year's BRICS summit in Rio de Janeiro. BRICS remains a powerful force for economic cooperation and global good. So Prime Minister Modi was welcomed here in a very good manner. But this is just the beginning of the story, friends. This is the first page. Let's go to the second page. Friends, before I explain the slides to you, I want to tell you the meaning of BRICS. There are many people who ask who do not know. There are many of you who know. This is a group.
This is a grouping of some countries: B for Brazil, R for Russia, I for India, C for China, and S for South Africa. Earlier it used to be just BRIC. After South Africa came, it has become BRICS. Now Indonesia is also included in it. There are many observer countries which are included. Shown you some tweets of Modi ji. We have not taken this from any media. Tweets of Prime Minister Modi, and through the tweets we will explain what is happening there. About strengthening multilateralism. The power should not remain only in the hands of America or China. We should have multilateral forums of many countries together. You know, this is the soul of democracy. Democracy is not just inside the country. Democracy should be a global perspective. You know, the leadership of the global south. This India is projecting itself that we are the leaders of the. Hello friends, welcome to my new video. Friends, after the BRICS meeting, Prime Minister Modi ji has reached Brasilia, the capital of Brazil, and a very amazing thing happened there at the airport. At the airport there are some people of Brazilian origin who may also be Indians. There are some Brazilian people who have sung the mantra of Shiv Tandav Stotra in front of Prime Minister Modi, and it is a very amazing moment. I also feel very proud to see that wherever our Modi ji goes in the world, the people of that country definitely promote our Indian culture. This is a matter of great pride. Recently our Modi ji went to tobacco and tennis. The president of that country considered our traditional way of eating on banana leaves, the leaves of a tree, very cultural, because most of the people there are of Indian origin. So our Modi ji was served food on that, then we felt very proud. Now our Modi ji has gone to Brazil. There will be some agreements, some meetings with the president of Brazil, for which he went to Brazil's capital, Brazil, where Prime Minister Modi ji was welcomed in a grand manner at the airport. Pakistan's media is also very excited that whenever Modi ji goes to any corner of the world, he is welcomed in a grand manner. Let's watch the video and I will meet at the end of the video. Global South. It is obvious who promoted the Global South, who worked on the Global South. It was India. We have actually worked towards getting those 50+ African Union countries into G20. G20 is an emerging economy. The world's biggest economies are in G20. You brought Africa in it. This was a very big achievement. This G20 was held in Delhi at that time, and Modi ji is taking forward the story of this global south. Here's the third: in addition to greater cooperation and critical minerals. See, this is a very important matter, friends. It is very important. Third, in addition to greater cooperation in critical minerals and technology, we must focus on securing and making the supply chain resilient. It must also be ensured that no country uses the resources only for its own interests and as a weapon. China has been hit hard in this. This is my analysis. Now I don't know what the media will tell you about this tomorrow. But which country is it that see? We are talking about critical minerals and then earth technology. Which is the country that is using it as a weapon? Or China? It is China. China refuses. China has it. China says, we will not share. Then what is the need to become a part of BRICS? What is its importance? Then this is, I feel, a direct attack on China, a taunt on China, solely for its own interest and as a weapon. Xi Jinping did not come into it. Now his coup is taking place there. All the analysts on this, his coup is taking place there and are saying that when Xi Jinping's term ends, whenever his term ends in 2027, it is heard that he will not stand for re-election. Prime Minister Narendra Modi was also there and was representing India, and whatever he said, he meant the things he said. He said that UN bodies are solving 21st century problems. PM Modi has talked and said that they talked about pitches for multipolar world business among themselves. If we look at the BRICS forum, what it is actually made for is business. Secondly, we had heard that maybe some work is being done on BRICS member countries accept each other's currencies. Separate currency may not be possible, but if there is Indian rupee, then it should be accepted in Russia. China's yuan should not be directly converted into dollar. It should be acceptable in South Africa or India.
Indian rupee should be acceptable in China, South Africa. This means that such things are very important on which work is probably being done, but till now these things have not come to light practically. Well, as far as this is concerned, if we look at Russia and China with America. Friends, did you see the video of how Pakistan's media got jealous after seeing Modi ji being welcomed in a grand manner? Our Modi ji has become so popular that wherever he goes in the world, we can definitely see a glimpse of our Indian culture in that country. Even though such ovations are organized to welcome our Modi ji, it is still a matter of great pride that at least he knows and appreciates the culture of us Indians. Recently, the president of Terry Niranat adopted our traditional way of eating. Our Modi ji was served food on a leaf there. Now, at this time, our Modi ji has gone to Brazil's capital Brasilia to hold some agreement meetings with the president of Brazil. The traditional people there sang the source of our Shiv Tandava at the airport and felt very proud. If you people have seen the beginning of the video, you must have also felt proud. Our Indian culture is popular all over the world. It is recognized all over the world. It does not need any recognition. People know it very well what is Sanatan, what is Hindu, and what all things are included in our culture. People like all these things, and there are some people from Russia who are adopting Hindu religion. They are coming to India and joining Hare Ram Hare Krishna Trust and are propagating Radha Krishna and going to other parts of the world. So this culture of ours is very ancient, and an example of the same has been given in Brazil recently by singing Sri Tandava Sutra, which the traditional people of Brazil have welcomed Modi ji in a very grand manner. Rest friends, you people have seen the entire video that Modi ji is being welcomed in such a grand manner since our Prime Minister Modi ji is on a foreign trip. If you have not subscribed to the channel, then please subscribe to the channel, like the video, see you in the next video, till then Jai Hind, thank you. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश और सर्बिया पर 35% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप ने देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। एक बार फिर से टैरिफ बम फोड़ा है। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर चीन के कैंप में शामिल होता है तो उसे अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के गुस्से का सामना भी करना पड़ सकता है। सबके बीच अच्छी बात यह है कि फिलहाल भारत पर किसी भी तरीके का टैरिफ नहीं लगाया गया। जनूबी अफ्रीका पर 30, मलेशिया, काजाकिस्तान, जापान और जनूबी कोरिया पर 25% टैरिफ आयद किया गया। सर आप तैयार हैं? इब्राहिम अकॉर्ड्स के ऊपर दबाव आने वाला है, ये ऐसी चीज नहीं है जो ख्यालों में हो रही है। पहले तो भाई जूते पड़े हैं पाकिस्तान को चाइना से बड़ी जोर से, और ये जूते इस तरह पड़े हैं कि पाकिस्तान ने जो जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, एक नई बहस शुरू हो गई। आपने उसमें कमेंट्स भी दिए एक दो दफा कि जी ये इब्राहिम अकॉर्ड्स वाला सीन चल पड़ा है, तो अब बड़ा प्रेशर आएगा पाकिस्तान के ऊपर रिकॉग्नाइज करना। सर, फ्रांस की एक खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद राफेल को बदनाम करने के लिए चाइना ने एक बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा चलाया। अमेरिका जो दुनिया का सुपर पावर है वो भी मोदी जी की वजह से चल रहा है। यकीन मानिए, मेरे वर्ड जो है ना देखने में सुनने में अजीब लगते हैं, लेकिन हकीकत है सुपर पावर जब तक है जब इंडिया उसके साथ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ व्यापार समझौता करने के बेहद करीब है। नवाज शरीफ साहब का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसमें वो कह रहे थे जी कि जो इंडिया चांद पे गया ये तो हम लोगों ने जाना था। देखिए मैडम, ये कैसे झूठे इंटरव्यू देते हैं ये लोग, कैसे ये अवाम को जलते हैं, खुश नहीं होते हैं, ऊपर से दोगलापन दिखा के इंटरव्यू में बता देते हैं चांद पर जाना, सूरज पर जाना। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को दुनिया के 14 देशों को अपना साइन किया हुआ ट्रेड लेटर भेजते हुए टैरिफ बम फोड़ा है। सबसे पहले ट्रंप टैरिफ लेटर जापान और कोरिया को भेजा गया, जिन पर 25% का टैरिफ लगाया गया है। तो वहीं म्यांमार, लाओस, दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान और मलेशिया से आयात होने वाले उत्पादों पर नए सिरे से टैरिफ का ऐलान किया गया है। हालांकि इस बीच भारत पर किसी तरह के टैरिफ का ऐलान अब तक नहीं किया गया। यही नहीं, बांग्लादेश को भी ट्रंप ने नहीं छोड़ा। बांग्लादेश पर 35% टैरिफ लगा दिया गया है। इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर कहा है कि हम भारत के साथ सौदा करने के लिए बेहद करीब हैं। ट्रंप के मुताबिक हमने जिन देशों को टैरिफ लेटर भेजा है उनके साथ भी मुलाकात की है और हमें नहीं लगता कि हम सौदा कर पाएंगे, इसलिए उन्हें एक पत्र भेजा गया है। यही नहीं, हम अन्य देशों को पत्र भेज रहे हैं जिसमें उन्हें बताया जा रहा है कि उन्हें कितना टैरिफ देना होगा। अब ट्रंप के इस टैरिफ बम से बांग्लादेश की चीखें निकली हैं। भारत और अमेरिका के बीच
व्यापार समझौते को लेकर लंबी बातचीत हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसमें वो कह रहे थे जी कि जो इंडिया चांद पे गया ये तो हम लोगों ने जाना था। मैंने भी सुना उनकी। देखिए मैडम, ये कैसे झूठे इंटरव्यू देते हैं ये लोग, कैसे ये आवाम को बेवकूफ जलते हैं, बनाते खुश नहीं होते हैं, ऊपर से दोगलापन दिखा के इंटरव्यू में बता देते हैं चांद पर जाना, सूरज पर जाना, जबकि हकीकत में यहाँ पे रोटी खाने के लाले पड़ रहे हैं, आप ये उसको देखिए, प्रोमिनेंट कर रहे हैं। जिस नवाज शरीफ साहब ने 3 बार वजीर आजम बने हैं हमारे मुल्क के, उस टाइम उन्हें याद नहीं आया कि हमने चांद पे जाना है। उस टाइम उन्हें याद नहीं आया कि हमारे मुल्क में गुर्बत खत्म करनी है। उस टाइम उन्हें याद नहीं आया कि IMF से हम कर्जे लेंगे तो हमारा मुल्क मजीद फंस जाएगा और फंसता जाएगा हमारा मुल्क। आज जब ये मुल्क से भागे हुए हैं, दूर बैठे हुए हैं, लंदन में इनके महल हैं, उधर बैठ के पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग, इन लोगों को यकीन करें कभी हमारे मुल्क का ख्याल नहीं आया। इन लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी रही है, हमेशा हर टेन्योर में इन्हें अपनी पड़ी रही है कि हमने प्रॉपर्टी कैसे बनानी है, हमने महल कैसे बनाना है, हमने अपने चाचे मामे ताए फूफी को वजीर आजम कैसे, MP MN कैसे बनाना है, वजीर कैसे बनाना है। अभी मुझे योगी जी का कोई रिश्तेदार दिखाइए, मुझे मोदी जी का कोई रिश्तेदार दिखाइए जो बैकग्राउंड बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है। मैडम है ही नहीं। वो लोग अपने मुल्क के लिए जीते हैं, अपने लोगों के लिए जीते हैं, अपने लोगों के लिए मरते हैं। उनका कोई ऐसा सिलसिला नहीं। आप इनके घर देख लीजिए निकाल के मैडम जी। देखें, जब तक एक आम आदमी पावर में नहीं ना आएगा पाकिस्तान में, जैसे इमरान खान साहब कहते होते थे कि मैं एक आम इंसान को पावर में लेके आऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना वो कर सके ऐसा। इवन के उन्होंने तो हमेशा अंगेस्ट जो है ना, कभी इंडिया के अंगेस्ट, कभी अमेरिका के अंगेस्ट, कभी किसके अंगेस्ट जो है वो गुस्से वाले बयान दिए, जिससे हमारे तल्लुकात दूसरी दुनिया में खराब होते हैं। देखिए, वजीर आजम ऐसा होना चाहिए मोदी जैसा, जो पूरी दुनिया को लेके चल रहा है। आज देखिए, अमेरिका जो दुनिया का सुपर पावर है, वो भी मोदी जी की वजह से चल रहा है। यकीन मानिए, मेरे वर्ड जो है ना देखने में सुनने में अजीब लगते हैं, लेकिन हकीकत है सुपर पावर जब तक है जब इंडिया उसके साथ है। इंडिया उसके साथ, देखिए चाइना उसके खिलाफ है, रूस उसके खिलाफ है, अमेरिका के खिलाफ, इंडिया उसके साथ है, तो वो अभी तक जो है ना स्टेबल है, चल रहा है वो। तो जब इंडिया ने उसके सर पे से हाथ उठा लिया ना, यकीन माने अमेरिका की भी पावर जो है ना वो पावर नहीं रहेगी। ये तो बात आपने बिल्कुल सही की है कि आज जो खुद को अपनी सुपर पावर कंसीडर करता था, अमेरिका कहता था मैं सुपर पावर हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, ना रशिया बीच में आएगा ना चाइना आएगा। लेकिन आज मोदी जी की सरकार ने, उन्होंने कितना बड़ा कदम उठाया। और आपने देखा होगा क्लिप थी G20 की, जिसमें जो बाइडन थे उन्होंने नरेंद्र मोदी के कंधे पर हाथ रखा हुआ था और बाकी सारे लीडर्स उनको फॉलो कर रहे थे। देखिए, मैंने इसके ऊपर G20 के ऊपर प्रॉपर एक शो किया था, मेरे दोस्तों ने, मेरे लोगों ने, मेरी ऑडियंस ने वो शो देखा हुआ है। तो उसमें मैंने ये बताया था कि G20 में पूरी दुनिया की पावरें दिल्ली में मौजूद थी मैडम। ये कोई छोटी बात तो नहीं है कि पूरी दुनिया की सुपर पावरें, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जो दुनिया के फैसले करते हैं जो लोग, वो सब दिल्ली में मौजूद थे। तो इंडिया की क्या क्वालिटी और क्या क्लास बन गई होगी। और आने वाले टाइमों में ये G20 समिट है, पता नहीं क्या क्या कुछ इंडिया के बीच में होना है। अभी रिसेंटली देखें, जो इंडिया साइड कश्मीर है, जिसे हम लोग कहते हैं जी आज़ाद कश्मीर नहीं है वो, आप यकीन कीजिए जेन्युइन तरीके से देखें तो वो आज़ाद कश्मीर है, मुझे ऐसा लगता है। देखें, आम आदमी उधर सस्ता आटा ले रहा है, सस्ता पेट्रोल ले रहा है, खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। आटा, प्याज, टमाटर, आलू, बिजली, ये ज़रूरियातें ज़िंदगी हैं, इसके बगैर तो ज़िंदगी ही नहीं है। आप देखें क्या नकारा लोग होंगे, क्या वो नाअहल लोग होंगे कि जो 20-20 साल, 30-30 साल हम लोगों को चमड़े रहे। आप भी वोट देती होंगी, मैंने भी वोट दिए होंगे। जो हमारी मेन ज़रूरियात पूरी नहीं कर सके लोग, वो हमारे मुल्क को तरक्की कैसे दे सकते हैं। और हम फिर उन्हें आजमाना चाह रहे हैं, हम फिर उन्हें वोट देना चाह रहे हैं। भाई जूते पड़े हैं पाकिस्तान को चाइना से बड़ी जोर से, और ये जूते इस तरह पड़े हैं कि पाकिस्तान ने जो जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, एंड इसके ऊपर अभी तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं। एंड बाय द वे, मैं आपको ये बताऊं कि ये हफ्ते में एक और ओसेंट का बॉम्ब फेंकने वाला हूं मैं आपके ऊपर, जब मैं आपको बताऊंगा कि जो पाकिस्तान की तरफ से एक वो आया कि भाई लाइव कवरेज मिल रही थी, ये कैसे मिल रही थी, चाइनीज एस्टेब्लिशमेंट कहाँ है। मैंने काफी ओसेंट एनालिसिस करी है, उसके अंदर से काफी चीजें निकली है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। बट अभी पता ये चल रहा है कि भाई चाइनीज के वेपन्स के जो सेल स्टॉक्स थे उनकी हालत खराब है। चाइना बड़ा गुस्से में है कि यार तुमने किया क्या है, ठीक है, पहले तो तुमको मैं चीजें देता हूँ, ऊपर से तुमने मेरी पूरे वेपन्स की हालत खराब कर रखी है, ठीक है। जहां पर पूरी कॉन्वर्सेशन है अमेरिकन वेपन्स के बारे में तुम बात नहीं करते हो, सिर्फ मेरे वेपन्स के बारे में बात कर रहे हो, और मेरे वेपन्स के जो फेलियर्स हुए हैं उसके बारे में बात करी जा रहे हो। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। दूसरा, भारत की तरफ से ऑब्वियसली काफी प्रेशर आ रहा है चाइना के ऊपर कि भाई तुम ये करने की क्या कोशिश कर रहे हो, यू थिंक यू कैन प्ले दिस गेम। एंड जो ओपनली हमारे लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने उस दिन बोला कि भाई भारत के पास उस टाइम पे 3 एनिमीज थे, नाउ दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट सॉर्ट ऑफ अ पुश। उसके बाद से हम देख रहे हैं भाई बड़े सारे लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब वो यू टर्न लेना शुरू कर रहे हैं। चाइना ऑन द अदर हैंड हैज अ प्रॉब्लम।
क्योंकि चाइना बोलता है यार अमेरिका तो ले लेगा, भैया मेरे पास तो दम ही नहीं है ये सब चीजें लेने का। हाउ एम आई सपोज टू काउंटर दिस? ये जो पूरा नैरेटिव बनेगा मेरे इक्विपमेंट के बारे में, हाउ एम आई सपोज टू डू दिस? और ऊपर से भारत से भी प्रेशर आ रहा होगा। अब आपने देखा ब्रिक्स समिट में अपने अंकल शी जाने वाले थे, अब अंकल शी बोलते भैया मैं नहीं जा सकता वहां पर, मैं टू अ पॉइंट। अब देखें फ्रेंच लोगों की तरफ से बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। फ्रेंच जो रफाल के हेड हैं उनकी तरफ से एक चीज बोली गई है कि भैया ये पाकिस्तानी बकवास कर रहे हैं, कोई ऐसा कुछ इतना बड़ा लॉस लूस कुछ नहीं हुआ। Deeper than the sea, higher than the mountains, flatter than the land, oh, that friendship has now shaken a little, sir. And after that they have clearly said that look, we don't have that kind of trust in Pakistan, so they are giving J-35 at a discount, all these things are happening, you will not get money. India has got a big political victory in the BRICS summit held in Brazil. What is the latest statement by Khawaja Aziz? Then he said that no, we are J-35. All this media. Bado Zardari has given an interview to Al Jazeera and there he is talking about Hafiz Saeed, that if India says, we will hand over Hafiz Saeed to India, whom did he point towards? He pointed towards your Hafiz Bai Sahab. He pointed towards Maulana Masood. Hafiz Saeed's son, Talha Saeed, said that he is a traitor of Pakistan. Bilawal Bhutto, the terrorist attack in Pahalgam was strongly condemned in the joint declaration of BRICS. That to end terrorism or else we have bullets. So friends, Asim Muni went to Donald Trump and with that both the ears of China perked up that what is happening. There is no objection to handing over the specific person to India. But for that New Delhi will have to express its readiness to cooperate in this action. What kind of statement is this? Who all are making Bilawal give this statement? Has Pakistan shifted its policy on the basis of Hafiz Saeed Sahab? Because if India really stops the water, then how will the 26 crore people who live here survive, and the entire machinery of the country is in danger of getting damaged or stopping? So the condition of Pakistan has become something like that. You must have heard the saying that the Dobi Ka Kutta is neither home nor got ka. Jai Hind friends, welcome to Hind Voice. China's big blow to Pakistan. J-35 will not give trust broken. Another diplomatic defeat for Pakistan. While on one hand Pakistan's defense minister Khawaja Asif has denied the deal of J-35, a stealth fighter jet, on the other hand sources claim that China itself has denied Pakistan. According to sources, China now considers Pakistan an unreliable military partner. China has made it clear that it will no longer give high-tech weapons like J-35 to Pakistan. The reason is Pakistan's unstable political environment, weak economic condition, and growing concern about terrorism. This is the same Pakistan which China used to consider as its iron brother. But now the dragon has backed out from the deal. It is a double blow for Pakistan. On one hand, India's decisive steps like Rafale and Operation Sindoor, and on the other hand, breaking China's trust. Is Pakistan completely isolated? That Pakistan, which you yourself will remember for such fanfares, had told in a media post that China is going to give us 40 J-35s at 50% discount. It will give HQ-9 and whatnot. Now suddenly the same big talker Khawaja Asif is saying that nothing like this is going to happen, and with this he said that all this is Chinese propaganda. They run all this for their defense cell. So how did this bitterness arise? This is the story behind it. Look, today's news is coming that China had offered J-35 to Pakistan, but it has stopped because they are putting a condition that they do not have that kind of trust in you. Just like the US monitors your F-16, we will also monitor it, and there will be some other conditions. Tell me, are you okay with it? Because don't forget at the end of the day that you are not buying it. We are giving it to you as a charity. We are giving it with our taxpayers' money. Now friends, with this Pakistan is stunned. It is saying that first of all, we do not have the capacity to pay the full amount. Secondly, if you also monitor in this way, then there will be a big problem and it will go away. Actually friends, Khawaja Asif Sahab gave an interview to Arab News, and in that interview he was asked what all Pakistan is going to bring from China. If you see here, this post came from the official government handle Government of Pakistan, which they later deleted, in which they are saying that we will buy H-19, we will buy J-35, similarly we will buy KJ-5000, and Pakistan will get all these things from China. Apart from this, China will give it at 50% discount. Some loans will also be extended further. Now friends, when all these things were discussed, it was asked to Khawaja Asif Sahab what is happening. Now it is going to be great. J-35A will come from China at half the price. So Khawaja Asif Sahab, instead of praising it, said that look, all this is speculation. This is only run by China so that its defense sales can increase. So nothing like this is going to happen to us in this. All these are useless things. Friends, what has happened here now? It is like this, that after all this has happened suddenly, China has lost trust in Pakistan. The reason is very simple. Friends, China is a little speculative about Pakistan now. It has started doubting Pakistan the way it will give sensitive defense technology to Pakistan, and the way Asim Munir is desperate to sit in America's lap.
The way he helped USA in Iran concentration. So how can we trust Pakistan with this sensitive stealth defense technology, with stealth date technology? So that is why China is saying that our new terms will apply. China is saying that, look, there will be a US-style monitoring system on you. Whatever J-35 they will give you, just like the US. Monitors Pakistan's F-16. We will also do the same. Deeper than the ocean, higher than the mountains, flatter than the ground. Oh, their friendship has shaken a bit now, sir. What was the latest statement by Khawaja Aziz? Then he said that no, we are not buying J-35. All this news came in the media 2-4 days ago that we are not buying J-35. We had already covered Bilawal's statement yesterday. Sir, a big update came in it yesterday that Bilawal had said that if India talks, we will hand over Hafiz Saeed and Masood. Hafiz Saeed's son Talha Saeed has said that he is a traitor of Pakistan. Bilawal Bhutto, it is a simple thing that they sold a plot to two people. It is a simple Desi thing. I will tell you. There's a plot of land. You sold it to two people and you took money from both of them. That plot is Pakistan. One buyer is America. The second buyer or tenant, whatever you call it, is China. Now the thing is that first of all they themselves created the hype. Pakistani media itself discussed it, and if anyone says that there is a producer in the world that Pakistani media is independent, then he is the biggest liar and the biggest one is silent. Pakistani media was never independent, is not and will never be. So in Pakistan, Pakistani media itself is saying that J-35 is coming to us. The news is coming from Pakistan itself. The media is covering it completely. Okay? And suddenly they say that I don't know. Someone spread it on social media. He said the same thing that you said, that 6 rifles of India have been shot down. We know about them on social media. You can go and see. Khawaja Asif is saying that we are not buying. There was a backlash inside China as well. Even inside China, people said that why are you giving it to freeloaders again and again? Yes. These are freeloaders. They beg. You give J-35 to Pakistan. Nobody is stopping you from giving it to Pakistan, but you can tell Pakistan that if they want to give it, for example, one worth 100 million, I don't know how much I'm talking about. If you give them the money for a jet worth 100 million, they are not ready to give it. China said 50% discount. They will give 50% and you will give 90%. Then they don't have the guts to give it. You all know that ever since Pakistan was created, the terms between India and Pakistan have never been very good. We have fought 4 wars, and apart from that, there is always some petty argument going on between the two countries. It has been said many times from India's side that terrorism is being done in India from Pakistan. Pakistan said that they are non-state actors and such things kept going on. Complaints were made many times, be it Mumbai attacks or other Pulwama, ODI and Pathankot, and a long list of many for which India blamed Pakistan, and Pakistan always said that these are non-state actors and the state has nothing to do with them. But along with that, Pakistan is also not able to deny the fact that Masood Azhar and Hafiz Saeed and such people are also found here, whose names India takes and says that these people have committed terrorism and these people are involved in Mumbai attacks and many other attacks or damages that have happened in India. Pakistan was asked to hand over these people. Every time Pakistan refused. Many times Pakistan said that these people have nothing to do with them and neither can we hand over our people. Many kinds of things kept happening. In the meanwhile, what has happened is that finally India, or the Prime Minister of India, Modi ji, his government has taken the decision that the Indus Water Treaty, the water treaty with Pakistan, will be suspended. Pakistan will not get water. Continuous talks are going on about it. There is a ruckus. Pakistan is definitely worried about it. Because if India really stops the water, then how will the 26 crore people who live here survive, and the entire machinery of the country is in danger of getting damaged or stopping. This Bilawal was saying 2 months ago that either blood will flow, water will flow. He had said that either blood or water will flow in Indus or blood will flow. He had also said that this means this is our red line. Some minister of Pakistan is saying that Hindus will kill so much that wood will fall short for their last rites. So all this dialogue has come from Pakistan. Okay? None of those serving soldiers said anything. They did not say anything. Asim Munir remained silent. Asim Munir was silent yesterday as well. Even now he keeps giving his lectures every now and then and talks nonsense about the two-nation theory. Otherwise Asim Munir remained silent. Asim Munir has kept dogs to bark. In the 17th meeting of BRICS, Prime Minister Modi told India's point of view to the whole world. We will tell you what message the Prime Minister gave to the world through the BRICS meeting. But in the 21st century, if the world has to be changed, then the platforms and the leadership should be new. In the BRICS Summit 2025 in Rio de Janeiro, PM Narendra Modi said something that was an ear-opener for the whole world. There is no doubt about the status and position of Indian Prime Minister Narendra Modi in the world. Speaking at the BRICS summit, PM Modi clearly said in the BRICS meeting that the Global South can no longer be made to sit and listen to. They should now be made to sit on the decision-making table on an equal footing.
Because the institutions in which 2/3 of humanity is not represented are now global only in name. PM Modi said bluntly that without the global south, these global institutions are like a mobile phone that has a SIM but no network. What is that? The Indian Prime Minister's vein started throbbing once again. Its attitude, its speech, its community has started spreading the same poison again. But there was a strong criticism of the BRICS leader. In the joint session of the Presidium, the American leader also took a tough stand on the attacks on Iran and Gaza. President Trump has also threatened the leader who supports BRICS that more tariffs will be imposed on them. Pakistan is trying for continuous peace. But how does the Gujarat butcher Modi understand peace? Be it climate finance, technology access or sustainable development goals, every time the global south was given only superficial lattice. This was PM Modi's message to the world. PM Modi reminded that this is the 21st century. Now software updates do not work on old typewriters. Showing the mirror to organizations like the United Nations, PM Modi said, it has been 80 years. Not a single update has come in forums like the United Nations, whereas AI and technology are bringing out new versions every week. This difference shows that India doesn't just talk about development. It also gives direction. Deep headlines. You knew the important news on Modi's title. PM Narendra Modi's title was an attack on the region. Whereas such statements have been termed against the basic principles of the UN Charter. Right, yes, nobody will give role to Global South. Global South has to get that role with its economic strength and political relevance, with it being a military power with having a clear agenda. This bloc, which talks about de-dollarization, talks about de-dollarization of global currency. India is a member of that group where de-dollarization is talked about. So they have talked, the things that they have said, they said that UN bodies are trying to solve 21st century problems. PM Modi has talked about pitches for multipolar world business. What does it mean for business people to talk to each other, and what is Donald Trump angry about? It seems as if America is not happy with the meaning of this. By saying this, PM Narendra Modi has also shown the mirror to institutions like UN. This message is clearly for countries like United Nations and Europe, who have maintained their dominance over big institutions, and from there they want to control the whole world. But they don't seem to have that much power. Look at Modi, me or some other people, they have so many problems in the country. Did Indira Gandhi have more power than Modi, or less power? Indira Gandhi broke Pakistan. Similarly, you cannot compete with the Hindutva ideology of Akhand Bharat with a nationalist narrative. Jaishankar had said that no, we don't do these things, we do that. They want to bring this to BRICS. There is a question of papal, they want to bring this to BRICS. And let me tell you something, there will come a day. India really wants to mature this bloc BRICS. And India will sideline America on this, or when the time comes, India will tell America that you do not have value. I take this bloc BRICS seriously. It does not take SCO seriously. Narendra Modi does not miss any event of the BRICS. He does not miss it. Because he knows that, brother, if I miss it, it means that my whole story of the global south, which I want to take forward, will end. There were no problems, sir. Pakistan was broken because some of our own people joined them. Exactly at that time there was one Muktibani. Today there are 10 Mubaraks in Pakistan. At that time there was one Sheikh Mujibur. Today there are 10 Sheikh Mujibur. At that time there was a political party compromise. Today all the political parties have compromised. You have no idea. See, I am also a scholar of history. I am a historian. I learned the basics from history. Of course, I don't find it surprising that Pakistan is standing in the same condition as it was in 1971. The enemy has surrounded us from all sides. There are traitors in the ranks. The leadership is weak. There is no political leadership. The military leadership is very much entangled in these matters. The only thing that matters is to support this government.
Although the army claims that it is the leader of ideological and geographical centuries, but the damage that has happened in the last 20 to 30 years is that the army has become a little weak ideologically. The strong ideological buildup that was there in the army during the time of our General Zia has weakened in the later times. Today, the army is not the protector of ideological borders. The army is the protector of geographical borders. The army is taking more of a nationalistic view these days. You have no idea about it in comparison to the Islamic view. Look, I am also a student of history that the government keeps on talking nonsense on TV that everything is going well. It is not going well. The state of Pakistan is collapsing. Come on, sir. We have to save Pakistan. Hello, friends. So friends, PM Modi has given such a message to the world from platforms like BRICS that after hearing it, America must have got furious. PM Modi has clearly targeted the UNO here. And friends, on the other hand, Pakistan, to whom PM Modi says anything anywhere, these people feel it dangerous and bad, and at the same time they start fearing the disintegration of their country. Friends, the way PM Modi has spoken so bluntly, after listening to it, the whole world is surprised that can PM Modi say such a thing. And friends, PM Modi also tweeted on his X account regarding this matter. As you can see in the video, it is running on the screen right now. Friends, if we talk about his most important thing, then he talked about the global south and also about the UAE. Friends, he told the global organizations that they have not been updated even once in the last 80 years. The software of the 21st century cannot run on the typewriter of the 20th century. The expansion of BRICS is proof that this organization is capable of changing itself with time, and we will have to show such resolve for reforms in institutions like the United Nations Security Council, World Trade Organization, WTO, and multilateral development banks. Also, he addressed all these forums with words like, SIM is there but no network, after which it seems as if an earthquake has come. Friends, the voice raised by India is not wrong at all. What do you think? Tell us by commenting. If the video is good, then like and share the video and also subscribe to the channel. If you see, India's Prime Minister Modi was there and he condemned the strikes on Iran. Is it right? Yes, he condemned it. Why did he condemn it? Earlier, they did not condemn it. When we were in CO, when the CO statement came, we did not condemn it. At that time, India had distanced itself. But this time we have condemned it. The question arises that once India, being a member of BRICS, is saying that we condemn the American strikes on Iran. We do not take the name of US or Israel, but we condemn it. Who should condemn from whose side? Who attacked Iran? Israel did it and America did it. If we look at the actual thing for which the Prax Forum was created, it is business. Secondly, we had heard that perhaps some work is also being done on such currencies that if the BRICS member countries accept each other's currencies, separate currencies may not be possible. But if there is Indian rupee, it should be accepted in Russia. China's yen should not be converted directly, that is, it should be converted into dollars. It should be acceptable in South Africa or India. India's rupee should be acceptable in China, South Africa. I mean, such things are very important, on which work is probably going on, but till now these things have not come to the fore practically. The story of the noble South that Narendra Modi wants to take will be missed. So he doesn't want to ignore this at all. He never wants to ignore this. So they do understand what we have to do and what we don't have to do. So that's why he is always there. He is always there. Prime Minister Modi. So, you can guess from this that India is really serious about these things of the global south. इस पिक्चर में नरेंद्र मोदी साहब पहली लाइन में खड़े हुए हैं। मसला मुफादात का है,
तरजीहात का है नाजरीन। Modi, the Indian Prime Minister. और वहां पे ये फैमिली फोटोज हैं, उन तमाम देश आप सबसे पहले देख सकते हैं, बिल्कुल मिडिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। The other thing to note is that the BRICS Plus now, with the addition of many countries last year, represents more than half of the world's population. मैंने देखा है कि अगर आपने डिप्लोमेसी सीखनी है तो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी टीम से सीखें। से हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो अभी तक हमने नहीं देखा कि वो किसी दौरे पर नजर आए हैं। यहाँ पर ये 5 देशों का जो दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिजनेस डील्स होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो इट मींस कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, मे बी नेक्स्ट ईयर हमें तीसरी बड़ी इकोनॉमी नजर आए। माइक्रोसॉफ्ट है, उसने पाकिस्तान में आफ्टर 25 इयर्स अपने बिजनेसेस शट डाउन कर दी हैं। क्या वजह है कि मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान से अपना कारोबार बंद कर रही है? वजूहात क्या है? और कोई दुनिया का वजीर आजम ऐसे नहीं हुआ होगा और वहां पे जाके उनके आगे अवाम खड़ी हो। माइक्रोसॉफ्ट में 25 इयर्स से जो लोग काम किया करते थे, अब वो काम नहीं कर रहे और वो जॉबलेस हो चुके हैं। हमें इस चीज का एहसास है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो एक पोजीशन है वो दुनिया की तब्दील हो सकती है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, ब्रिक्स 2025 की फैमिली फोटो देख पाकिस्तान खासा परेशान दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि अगर आपने डिप्लोमेसी सीखनी है तो भारत से सीखें। 2025 के ब्रिक्स शिखर बैठक ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि यह समूह न केवल वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में संतुलन लाने के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार की दिशा में भी सक्रिय है। इस बैठक में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का संबोधन और भारत की नीतिगत प्राथमिकताओं ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत की स्थायी भूमिका को रेखांकित किया है। इस बैठक में यहाँ एक और भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती दी, वहीं दूसरी ओर चीन, रूस और ब्राजील जैसे अहम सहयोगियों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों में नई दिशा देने की पहल भी की। ब्रिक्स बैठक में प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व की बात करें तो आपको बता दें कि उनका आत्मविश्वास, संतुलन और संवाद देखने लायक था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में भारत ने ब्रिक्स को केवल आर्थिक मंच नहीं बल्कि एक रणनीतिक, वैचारिक और नैतिक मंच बना दिया है। दोस्तों, एक बड़ा सेंट्रल सवाल है कि अभी जो 2025 ब्रिक्स समिट हुई है, इसका आउटकम क्या था और ये क्यों समिट जो है, ये किसने क्या क्या बातें की। खास तौर पे अगर देखा जाए तो भारत जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पे थे। हमें इस चीज का एहसास है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो एक पोजीशन है वो दुनिया की तब्दील हो सकती है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हमें बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसको जरा समझिएगा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब इंडिया जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि उसने क्या किया, उसने कहा क्योंकि चाइना इसमें लीड कर रहा है एससीओ में, तो हम इससे पीछे हट जाएंगे। उधर वो कहते हैं कि वी हैव एन ओनरशिप, उधर अफ्रीका भी है, लैटिन अमेरिका भी है, रशिया भी है, वहां पे एक डिफरेंट किस्म का। अब वहां पे क्योंकि यूएई भी है, बाकी ममालिक भी हैं, तो देन इट इज देयर। सो मुझे ये लगता है कि ये एक फैक्टर है जिसको थोड़ा स्टडी करना चाहिए। बाकी वहां पे डिस्कशन हुई है, एक्सपेंशन होनी चाहिए जी, ग्लोबल साउथ का रोल। ग्लोबल साउथ का रोल, द ग्लोबल साउथ हैज टू गेट द रोल। नोबडी विल गिव रोल टू ग्लोबल साउथ। ठीक है ना जी? Nobody will give role to global south. Global south has to get that role with its economic strength, with its political relevance, with its being a military power, with having a clear agenda. ये जो ब्लॉक है, it talks of de-dollarization. ये ग्लोबल करेंसी की, ये de-dollarization की बात करता है। इंडिया is a member of that group, जहां पे de-dollarization की बात होती है। लेकिन वो जयशंकर ने कहा था कि नहीं, हम इन चीजों को नहीं वो करते, ये ब्रिक्स पे लेके आना चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट है, उसने पाकिस्तान में आफ्टर 25 इयर्स अपने बिजनेसेस शट डाउन कर दी हैं। माइक्रोसॉफ्ट चला गया है पाकिस्तान से और माइक्रोसॉफ्ट ने
जितना भी उसका बिजनेस था उठा लिया है पाकिस्तान से, और वो जा चुके हैं। और उसकी वजह ये बताई जा रही है, वजह तो बहुत सारी हैं इसके, जो रीजन सामने आ रही है, लॉजिक्स आ रही हैं, लेकिन इसमें बहुत बुरा हो रहा है लोगों का, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट में 25 ईयर्स से जो लोग काम किया करते थे, अब वो काम नहीं कर रहे और वो जॉबलेस हो चुके हैं। दिस इज सो सॉरी, आई फील सो सॉरी फॉर देम। कि देखिए ऐसे भी नौजवान थे वहां पर कि जो 25,000 पे, 30,000 पे, 50,000 रुपीस पे भी काम कर रहे थे और अपना घर चला रहे थे। बड़ी तनख्वाहों पर भी काम करने वाले थे, उनका तो किसी तरह गुजारा हो ही जाएगा। लेकिन देखिए जो ऐसे थे, और मैं आपको बताऊं कि ये जो ले ऑफ किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, तो इसमें उसने कहा है माइक्रोसॉफ्ट क्लोजेस ऑफिस इन पाकिस्तान, ले ऑफ स्टाफ। ये किसकी खबर है? डॉन की। ये मैं सिर्फ कहीं इधर उधर से खबर देखकर नहीं बता रही, डॉन की ये हेडलाइन है। और उन्होंने कहा है कि ये जो है ना अपने ऑफिसेस क्लोज कर दी हैं। जवाद रहमान जो कि माइक्रोसॉफ्ट के पहले हेड थे शायद पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने एक लंबी चौड़ी जो है वो पोस्ट की सोशल मीडिया पे, जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये हालात हैं और ये जो है वो उठाकर ले गए हैं अपने बिजनेस यहाँ से, एंड माइक्रोसॉफ्ट इज ऑफिशियली क्लोजिंग इट्स ऑपरेशंस इन पाकिस्तान। ये हालात हो गए इकोनॉमी की। ये क्या हुआ है और ये क्यों हुआ है? ये तो समझ में ना आने वाली बात है। अगर वो काम करे थे इतने अरसे से, तो कोई कहने लगा कि जी जो करेंसी है वो इतनी डीवैल्यू है, कोई कहने लगा उनको बड़ी प्रॉब्लम्स थे पाकिस्तान के अंदर और उनका जो है बिजनेस सही नहीं चल रहा था, वो मजबूरन चला रहे थे। कोई कहने लगा कि और बहुत सारी जो है उनको इसमें प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी ऐसी। अब देखिए इसके बारे में एक तो ये है कि ये कहा गया है कि जो उनके लोकल पार्टनर्स हैं उनके थ्रू वो ये बिजनेस जो है वो चलाते रहेंगे। ओके, अब मुझे नहीं पता लोकल पार्टनर्स के थ्रू कितना बिजनेस चल सकता है। अच्छा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा वी विल सर्व आवर कस्टमर्स थ्रू बोथ आवर स्ट्रॉन्ग एंड एक्सटेंसिव पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस एंड लोकेटेड, क्लोजली लोकेटेड। ये तो बहाना ही है, यानी ये तो आप ये कह लें कि अब जा रहे हैं तो आपने कुछ ना कुछ तो कहना है ना। अब जैसे कोई जो ऑफिस बंद हो तो उसका जो स्टाफ को निकाला जाए तो उसको क्या कहा जाता है कि हम तुम्हें बहुत जल्दी वापस बुला लेंगे, लारा दिया जाता है डोंट वरी, अगर तुमने कुछ शोर वोर ना मचाया तो हम ये करेंगे कि हम तुम्हें जल्दी दोबारा हायर कर लेंगे। वो उन्होंने करना कुछ नहीं होता, वो चाहते हैं कि जो स्टाफ है ना वो बागी ना हो जाए, वो स्ट्राइक ना कर दे कोई बहुत बड़ी। मुझे लगता है ये वाली जो स्टेटमेंट है ये तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कुछ इसी तरह की है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मसला नहीं है, हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कोई इसमें जो है। अच्छा जी, उन्होंने कहा है जी, रॉयटर्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि 2,28,000 एम्प्लॉइज में से जो है 4% तो कम से कम फौरी के फौरी उन्होंने कट कर दिया। और इसमें वो कह रहे हैं कि कुछ 6-7 हजार से ज्यादा जो लोग हैं वो तो फौरी तौर पर बेरोजगार हो चुके हैं। ठीक है, तो अब आप देख लें कि आगे क्या बनेगा, क्या होने जा रहा है। ब्रिक्स सरबराही इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स समिट में भारत को बड़ी राजनयिक जीत मिली है। ब्रिक्स के संयुक्त घोषणा पत्र में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई। How important is BRICS? BRICS is very important. The BRICS countries, if you add their population, reach about 50%. पर और इसके साथ साथ जो ब्रिक्स के ममालिक हैं उनका जो एलामिया है वो बड़ा जानदार एलामिया है। ब्रिक्स का नाम 5 फाउंडर ममालिक के नाम के पहले हर्फ लेकर बनाया गया। 5 फाउंडर ममालिक में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका शामिल है। ब्रिक्स के जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर टेररिज्म को कंडेमनेशन के तौर पे काफी बड़ा एक स्टेटमेंट दिया गया कि साहब देयर विल बी जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और उसके जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं। कई बार शिकायत की गई, चाहे वो मुंबई अटैक्स हो या दूसरे पुलवामा, उड़ी और पठानकोट और कई एक लंबी लिस्ट है। दैट इज वन बिग थिंग राइट एट द बिगिनिंग कि भाई टेररिज्म के ऊपर एक काफी बड़ा आपके पास एक स्टेटमेंट आया है। ब्रिक्स के रुकन ममालिक उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी एक स्पीच बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने कश्मीरियत और इंसानियत दोनों को जम्मू कश्मीर के अंदर टारगेट किया। पाकिस्तान इस बात से भी इनकार नहीं कर पा रहा कि यहाँ पर मसूद अजहर और हाफिज सईद और इस किस्म के लोग भी पाए जाते हैं जो कि ना सिर्फ ये कि जिनका नाम भारत लेता है कि दहशतगर्दी को खत्म करने वरना हमारी गोली तो है ही। यानी वो कहते हैं कि मासूम लोगों के साथ हम खड़े हैं लेकिन हमारा निशाना जो है वो दहशतगर्द है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में भारत के लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत देखने को मिली जब
संयुक्त घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की गई। इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के मंच से पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने के लिए आड़े हाथों लिया और वैश्विक नेताओं से आतंक के खिलाफ एकजुटता की अपील की। ब्रिक्स घोषणा पत्र में कहा गया है कि आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है, चाहे उसका मकसद कुछ भी हो। उसे किसी धर्म, नस्ल, राष्ट्रीयता या सभ्यता से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सभी आतंकी संगठनों और उनके समर्थकों को सजा मिलनी चाहिए। ब्रिक्स ने पहलगाम हमले को अत्यंत निंदनीय और अपराधपूर्ण करार दिया। ये पहली बार है जब ब्रिक्स जैसे मंच पर भारत में हुए किसी आतंकी हमले की इतनी स्पष्ट निंदा की गई है। घोषणा पत्र में सभी देशों से आतंकवाद के खिलाफ बिना किसी दोहरे मापदंड के कड़े कदम उठाने की अपील की गई है। ब्रिक्स के जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर टेररिज्म को कंडेमनेशन के तौर पे काफी बड़ा एक स्टेटमेंट दिया गया कि साहब देयर इज बी जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और उसके जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उसको पूरी तरह से कॉल आउट करा। सो दैट इज वन बिग थिंग राइट एट द बिगिनिंग कि भाई टेररिज्म के ऊपर एक काफी बड़ा आपके पास एक स्टेटमेंट आया है, वेयर ब्रिक्स की तरफ से भी एक काफी कुछ लिखा गया है। नॉट चाइना वैसे भी थोड़ा सा आपसे ऊपर नीचे हो रखा है, बट वन ऑफ द थिंग्स दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड ड्यूरिंग दिस टाइम, चाइना को भी ये चीज साइन करनी पड़ी है। एंड ये एक ऑफ कोर्स उसको पसंद नहीं आया होगा कि ये भैया उसको साइन करना पड़ रहा है अपने प्यारे प्यारे पाकिस्तान के अगेंस्ट में, बट ही हैड टू एक्चुअली डू दिस एंड इट विल बी क्वाइट नॉट वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर चाइना। ब्रिक्स का जो भी एक स्टेटमेंट आया, बड़ा लंबा चौड़ा सा स्टेटमेंट है, इसके ऊपर हम दोबारा डिस्कशन करेंगे। भारत की तरफ से कई बार कहा गया कि जी पाकिस्तान से जो है टेररिज्म जो है वो हिंदुस्तान में की जा रही है। पाकिस्तान ने कहा कि जी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और इसी किस्म की बातें चलती रही। कई बार शिकायत की गई, चाहे वो मुंबई अटैक्स हो या दूसरे पुलवामा, उड़ी और पठानकोट और कई एक लंबी लिस्ट है जिसके लिए भारत ने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम रखा और पाकिस्तान ने हर बार यही कहा कि जी ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और स्टेट का इसमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान इस बात से भी इनकार नहीं कर पा रहा कि यहाँ पर मसूद अजहर और हाफिज सईद और इस किस्म के लोग भी पाए जाते हैं, जो कि ना सिर्फ ये कि जिनका नाम भारत लेता है और कहता है कि जी इन्हीं लोगों ने टेररिज्म की है और ये लोग इन्वॉल्व हैं मुंबई अटैक्स और कई दूसरे अटैक्स या जो नुकसान हुए हैं भारत में उसमें, तो पाकिस्तान से कहा गया कि जी इन लोगों को हवाले किया जाए। हर बार पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, कई बार पाकिस्तान ने ये कह दिया कि जी इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है और ना ही हम अपने इन लोगों को दे सकते हैं। बहुत तरह की बातें होती रही। इस बीच में जी अब हुआ ये है कि आखिरकार भारत ने या भारत की जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी हाँ, उनकी गवर्नमेंट ने अब ये डिसीजन लिया कि जी पाकिस्तान के साथ जो वाटर ट्रीटी है उसको, इंडस वाटर ट्रीटी, जी हाँ, उसको उन्होंने कहा कि हम सस्पेंड कर देंगे, पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। उसके ऊपर मुसलसल बातचीत चल रही है, एक हंगामा है। यकीनन पाकिस्तान उसको लेकर परेशान तो है, इसलिए कि अगर वाकई भारत ने पानी रोक दिया तो 26 करोड़ लोग जो यहाँ रहते हैं वो किस तरह से सरवाइव करेंगे और पूरी की पूरी मशीनरी जो है कंट्री की वो एक तरह से डैमेज होने की या रुक जाने का खतरा जो है वो तो बना ही हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर भी हैं और एक बहुत उनके फादर आजकल आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट भी हैं और बिलावल साहब हमारे इससे पहले फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं और फॉर्मर कह लीजिए फॉरेन मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने गोवा में एससीओ की मीटिंग भी अटेंड की थी, ये भी सभी जानते हैं। लेकिन इस वक्त बिलावल साहब के पास कोई ऐसा सरकारी ओहदा या पोजीशन नहीं है, मगर फिर भी बिलावल साहब का एक नाम है। बिलावल साहब से इंटरव्यू लेने के लिए सारी दुनिया का मीडिया जो है उनसे कांटेक्ट करता ही रहता है। तो बिलावल साहब ने जी अल जजीरा को इंटरव्यू दिया है और उनके जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने जब बिलावल साहब से भारत के बारे में बात की, भारत जो पानी बंद करने की बात की जा रही है वो पूछा गया और टेररिज्म के बारे में बात की गई, तो बिलावल साहब का कहना ये था कि अगर भारत बात करे तो गौर किया जा सकता है और वो मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम के बारे में या मसूद अजहर और सॉरी हाफिज सईद के बारे में उन्होंने कहा कि उनको भारत के हवाले किया जा सकता है। अब मसूद अजहर, मौलाना मसूद अजहर और उसके साथ साथ हाफिज सईद को क्या बिलावल साहब समझते हैं
के भारत के हवाले किया जा सकता है? क्या उनके पास ये पोजीशन है या उनके पास ये राइट्स हैं कि वो ये स्टेटमेंट दें? इसके ऊपर अब एक बहस चल पड़ी है। बहुत से लोगों का कहना ये है, जिसमें हमारे कई दोस्त भी हैं जो कि यूट्यूब वीडियोस भी बनाते हैं और बात भी करते हैं, जिन्हें यहाँ काफी देखा और सुना भी जाता है, और बातें आजकल उनके चैनल भी उसी तरीके से ब्लॉक है पाकिस्तान में, जिस तरह से पाकिस्तान के चैनल भारत में ब्लॉक है। तो बहरहाल ये ब्लॉक वाला गेम हम हिंदुस्तानी पाकिस्तानी अक्सर खेलते रहते हैं, तो वही गेम इस वक्त भी चल रहा है। लेकिन बहरहाल उनका भी यही कहना है कि भाई ऐसे तो इनकी पोजीशन तो कोई है नहीं, कोई ऐसी पोस्ट तो है नहीं बिलावल साहब के पास जिससे कि वो ये दावा कर सकें कि हाँ जी ये मसूद अजहर या हाफिज सईद को भारत के हवाले कर देंगे। लेकिन फिर भी बिलावल साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है। अब ये स्टेटमेंट तो ऐसे ही है जैसे मैं भी हर वक्त कहती हूँ, और मैं भी चाहती हूँ कि किसी तरीके से ये दोनों जो अनमोल रतन हैं पाकिस्तान में बैठे हुए, चाहे वो हाफिज सईद हो चाहे वो मसूद अजहर हो, उनको भारत के हवाले कर दिया जाए। और यही चीज बिलावल साहब ने भी कही। मगर उसके साथ ही बिलावल साहब ने ये भी कह दिया कि मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं है। जी हाँ, ये बात भी जो है बिलावल साहब ने अपने इंटरव्यू में कही है। उनका कहना यह है कि जी वो अफगानिस्तान में है, यानी कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो इस वक्त अफगानिस्तान में है, वो पाकिस्तान के पास नहीं है। अब इस बात का भरोसा कौन करेगा? यानी एक तरफ आप कह रहे हैं, अब यहीं से डबल गेम शुरू हो जाती है, जो मैं हमेशा कहती हूँ। दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज पर। आज की इस वीडियो में दो बेहद इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें अर्मीनिया भारत की सबसे एडवांस मिसाइल को अपनी सेना में शामिल करने के लिए भारत से बातचीत कर रहा है। वहीं ग्रीस मीडिया की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है कि भारत एक नया संगठन यानी क्वाड 2.0 वेस्ट एशिया में बना चुका है, जो कि पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान के एक्सेस को एक बड़ा झटका है। और इस नए ग्रुप को लेकर एक महीने पहले हमने वीडियो बनाकर आपको बताया भी था, और अब ग्रीस मीडिया की तरफ से इसकी कंफर्मेशन भी सामने आने लग गई है। इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े ऐसे टॉपिक पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत अब वेस्ट एशिया में अपनी कूटनीतिक मौजूदगी को एक नए स्तर पर ले जाने की तैयारी में है। हाल ही में भारत ने एक नई रणनीति के तहत ग्रीस, अर्मीनिया और साइप्रस के साथ मिलकर एक नया गठबंधन तैयार किया है। इस गठबंधन का उद्देश्य है तुर्की के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना और पाकिस्तान तुर्की की नजदीकियों का जवाब देना। भारत और अर्मीनिया के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं। जब ईरान इजरायल संघर्ष के दौरान भारतीय नागरिक वहां फंसे हुए थे, तब भारत ने अर्मीनिया की मदद से उन्हें सुरक्षित निकाला। करीब 110 भारतीयों को नुरदुज अगराक बॉर्डर के रास्ते अर्मीनिया लाया गया और वहां से उन्हें विशेष विमान से दिल्ली भेजा गया। इस अभियान ने भारत और अर्मीनिया के बीच भरोसे और सहयोग के नए स्तर को दिखाया। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में साइप्रस का दौरा भी किया। ये दौरा खास इसलिए था क्योंकि बीते 2 दशकों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली साइप्रस यात्रा थी। साइप्रस की भौगोलिक स्थिति बेहद अहम है। ये तुर्की, मिस्र, इजराइल और सीरिया, लेबनान क्षेत्र के बहुत करीब है। ऐसे में भारत का साइप्रस से नजदीक आना एक रणनीतिक चाल मानी जा रही है। भारत अब एक ऐसा रणनीतिक दूरी बना रहा है जिसमें तुर्की के पुराने विरोधी देश जैसे अर्मीनिया, ग्रीस और साइप्रस शामिल है। ये तीनों देश तुर्की की विस्तारवादी नीति से लंबे समय से परेशान है। भारत अब इन देशों के साथ मिलकर तुर्की के प्रभाव को चुनौती देने की दिशा में बढ़ रहा है। इसकी जानकारी जैसा कि आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं, ग्रीस मीडिया की तरफ से ही सामने आई है। तुर्की ने हाल ही में पाकिस्तान को ड्रोन और अन्य साजो सामान की आपूर्ति की थी, जो उसके भारत विरोधी रुख को साफ दिखाता है। इसके जवाब में भारत ने उन देशों से संबंध मजबूत करना शुरू कर दिया है जो तुर्की की नीति से असहमत है और भारत के साथ रणनीतिक सहयोग के इच्छुक है। तुर्की और ग्रीस के बीच समुद्री सीमा को लेकर विवाद लंबे समय से चल रहा है। तुर्की लगातार एजियन सागर के कुछ हिस्सों पर अपना अधिकार जताता रहा है। ग्रीस ने इसे सख्ती से खारिज किया है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तुर्की की इस नीति के खिलाफ आवाज भी उठाई है। ये विवाद दोनों देशों के बीच तनाव का एक बड़ा कारण बना हुआ है।
साइप्रस का मामला भी कुछ अलग नहीं है। 1974 में तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से में जबरन कब्जा कर लिया था और आज तक वह हिस्सा तुर्की के नियंत्रण में है। इस अवैध कब्जे के चलते साइप्रस आज तक अस्थिर है और तुर्की की महत्वाकांक्षाओं को लेकर चिंतित रहता है। भारत का साइप्रस के साथ गठबंधन न सिर्फ कूटनीतिक बल्कि सामरिक लिहाज से भी अहम है। इसके अलावा तुर्की और अर्मीनिया के रिश्ते भी ऐतिहासिक रूप से बहुत तनावपूर्ण रहे हैं। 1915 में हुए अर्मीनियाई नरसंहार की पीड़ा आज भी अर्मीनियाई जनता के दिल में ताजा है। हाल ही में जब नागर्नो काराबाग संघर्ष हुआ तब तुर्की ने खुले तौर पर अजरबैजान का समर्थन किया। इस समर्थन के चलते 1 लाख से ज्यादा जातीय अर्मीनियाई लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। इस पूरे प्रकरण ने तुर्की के खिलाफ अर्मीनिया की नाराजगी को और गहरा कर दिया। भारत की भूमिका अब वेस्ट एशिया में एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में उभर रही है। भारत एक और जहां तुर्की पाकिस्तान गठबंधन का जवाब देने के लिए नई रणनीति बना रहा है, वहीं दूसरी ओर वो उन देशों के साथ गहरी साझेदारी बना रहा है जो भारत के साथ दीर्घकालिक सहयोग चाहते हैं। ग्रीस, साइप्रस और अर्मीनिया जैसे देशों के साथ मिलकर भारत एक ऐसा गठबंधन तैयार कर रहा है जो न सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर बल्कि रक्षा और सुरक्षा के मोर्चे पर भी अहम साबित हो सकता है। ये गठबंधन न सिर्फ तुर्की की नीति को चुनौती देगा बल्कि भारत के लिए यूरोप और वेस्ट एशिया में नई संभावनाओं के दरवाजे भी खोलेगा। इस रणनीति के जरिए भारत अब वेस्ट एशिया और भूमध्य सागर क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरने की तैयारी में है। जहां एक तरफ तुर्की, पाकिस्तान जैसे देश भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं भारत ने अब ऐसे साझेदारों को चुना है जो तुर्की के खिलाफ पहले से ही मुखर हैं। ये गठबंधन आने वाले वर्षों में क्षेत्रीय भू राजनीति को नया आकार दे सकता है। भारत की ये पहल न केवल उसकी विदेश नीति को नया आयाम दे रही है बल्कि वैश्विक मंचों पर भी भारत की स्थिति को मजबूत कर रही है। इस रणनीति का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत अब वेस्ट एशिया में अपनी मौजूदगी को मजबूती से दर्ज करा पाएगा। ये गठबंधन आने वाले समय में तुर्की के प्रभाव को संतुलित करेगा और भारत को एक विश्वसनीय और निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि अर्मीनिया से आ रही है और वह भारत से एक और मिसाइल को लेकर बातचीत कर रहा है। अभी कल की वीडियो में ही हमने आपको बताया था कि ब्लैक सी में कॉरिडोर का ऑफर अर्मीनिया की तरफ से भारत को दिया गया है। वहीं अब अर्मीनिया के द्वारा भारत की सबसे एडवांस एयर टू एयर मिसाइल की डिमांड की गई है। दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हो गई है, जिसमें भारत के स्वदेशी अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को अर्मीनिया की वायुसेना के Su-30SM फाइटर जेट्स में शामिल करने की योजना पर चर्चा हो रही है। भारतीय डिफेंस रिसर्च विंग की रिपोर्ट के मुताबिक अस्त्र मार्क 1 की रेंज करीब 110 किलोमीटर है, जो कि रूस निर्मित R-77 मिसाइल की तुलना में कहीं बेहतर है, जिसकी अधिकतम रेंज सिर्फ 80 किलोमीटर है। अगर ये सौदा तय होता है तो ये अर्मीनियाई वायुसेना की हवा से हवा में लड़ने की क्षमता को काफी बढ़ा देगा। बातचीत में ये भी संकेत मिले हैं कि अर्मीनिया भारत की आने वाली मिसाइल अस्त्र मार्क 2 में भी रुचि दिखा रहा है। हालांकि मार्क 2 का उत्पादन अगले साल शुरू होने की संभावना है, इसीलिए ये साफ नहीं है कि अर्मीनिया दोनों वर्जन लेना चाहेगा या फिलहाल मार्क 1 से ही शुरुआत करेगा। अस्त्र मार्क 1 को भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने विकसित किया है। ये मिसाइल एक अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित है, जिसमें एक्टिव रडार होमिंग, स्मोकलेस प्रोपल्सन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के खिलाफ सुरक्षा जैसे फीचर्स शामिल है। ये 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर भी दुश्मन के विमानों को निशाना बना सकती है। भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI विमानों में अस्त्र मार्क 1 को पहले ही शामिल किया जा चुका है और इसमें भारत रूस द्वारा मिलकर बनाया गया डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर यानी DFCC इस्तेमाल किया गया है। यही DFCC स्वदेशी हथियारों को फाइटर जेट्स में आसानी से शामिल करने की सुविधा देता है। हालांकि अर्मीनिया के Su-30SM विमानों में अब भी रूसी DFCC लगा हुआ है। अगर अर्मीनिया अस्त्र मिसाइल को शामिल करना चाहता है तो इसे अपने विमानों के DFCC को भारत रूस द्वारा बनाए गए DFCC से बदलना होगा। ये तकनीकी रूप से एक चुनौतीपूर्ण और खर्चीला काम है, जिस पर अर्मीनिया को सोच समझकर फैसला लेना होगा। अर्मीनिया ने ये 4 Su-30SM विमान 2020 में रूस से खरीदे थे, जो अब उसकी वायुसेना की रीढ़ माने जाते हैं। अगर इन विमानों में अस्त्र मार्क 1 मिसाइल लगाई जाती है तो इसकी मारक क्षमता, सटीकता और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता काफी हद तक बढ़ जाएगी। जहां मार्क 1 पहले ही परीक्षण और संचालन में सफल साबित हो चुकी है,
वहीं अस्त्र मार्क 2 की रेंज और भी ज्यादा है, लगभग 160 किलोमीटर। इसके अलावा इसमें और भी कई उन्नत तकनीकें शामिल होगी, लेकिन क्योंकि इसका उत्पादन अभी शुरू नहीं हुआ है, इसीलिए अर्मेनिया जल्दबाजी में मार्क 1 को प्राथमिकता दे सकता है ताकि अपनी वायु सुरक्षा को जल्दी मजबूत किया जा सके। यह संभावित डील भारत और अर्मेनिया के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों का प्रतीक है। भारत अब एक भरोसेमंद रक्षा आपूर्तिकर्ता के रूप में उभर रहा है, खासकर उन देशों के लिए जो रूस और तुर्की से दूर हटकर नए रक्षा साझेदारों की तलाश में है। अगर ये समझौता पूरा होता है तो भारतीय वायुसेना के बाद अर्मेनिया अस्त्र मिसाइल का दूसरा ऑपरेटर बन जाएगा। ये भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक पर वैश्विक विश्वास को दर्शाता है, लेकिन सौदे की राह में सबसे बड़ी चुनौती Su-30SM की DFCC को बदलने का खर्चा ही है। अर्मेनिया को यह तय करना होगा कि वह इस तकनीकी अपग्रेड पर कितना खर्चा करने को तैयार है और क्या ये निवेश उसके लिए रणनीतिक रूप से फायदेमंद साबित होगा। जिस तरह से भारत और अर्मेनिया के रिश्ते रक्षा क्षेत्र में गहराते जा रहे हैं, उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि अस्त्र मिसाइल की डील सिर्फ एक मिसाइल ट्रांसफर नहीं, बल्कि भारत के बढ़ते रक्षा प्रभाव और अर्मेनिया के रणनीतिक झुकाव की दिशा में एक बड़ा कदम है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या भारत को अपनी एडवांस मिसाइल अस्त्र को अर्मेनिया को सौंपना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। See, we are behind called NOTAM. The Indian Air Force is going to conduct air drills on the Pakistan border, that is, in the Rajasthan area, along the international border. But in that they warned the Pakistani aviation that yes, we are doing an exercise. I want to warn you that India's activity is so intense. I want to warn you that Israel's joint India is busy preparing to start a new war in South Asia. Pakistan can definitely be. On the one hand, the danger of the war between Pakistan and India is still present. So 4 days ago they created a panic environment that Sir and never forget India says Operation Sindoor is not there. So at least we should have such weapons or money that we can buy those weapons which are better than India. India's weapons are better, India has more men, India has in every sense. Rafale, Mirage 2000, Sukhoi 30, these fighter jets will be involved. Surveillance platforms and support system will also be involved. Namaste friends, Jai Hind, welcome to Hindustan Special. Friends, Indian Air Force has started preparations for a big war exercise in Rajasthan near the international border with Pakistan. This military exercise will take place in Jodhpur and Barmer sectors on 9 and the 10th of July. For this, India has reserved the base by issuing notice to Airman NOTAM. Let us tell you that this area is just 50 kilometers from the border of Pakistan and is close to the highway traffic routes of Karachi. According to sources, this war exercise is being conducted to test the readiness of the Air Force after Operation Sindoor and to further strengthen its ability to respond to any possible action by Pakistan. This exercise will take place on 9 and the 10th of July. During this, the Air Force's leading fighter aircraft like Rafale Sukhoi 30, Mirage 2000, drones and other military platforms will take part. Now the Pakistani media is discussing that India has again started war exercises on the border of Pakistan. So friends, let's move towards today's video. Thank you so much. India has issued what is called NOTAM, and the NOTAM is that above the border of Pakistan, that is, in the area of Rajasthan, along the international border, the Indian Air Force is going to do its air drills. They have issued a notice to airmen, which is called NOTA, notice to airmen, that is, they have told everyone not to fly planes here. It's okay. So 4 days ago they created an atmosphere of panic that Sir and never forget India says Operation Sindoor is not over. Okay sir. Operation Sindoor is not over. They are going to do this over the Indo-Pak border.
They want to scare Pakistan over Rajasthan. Okay, sir, the airspace has been closed. What is the issue? India has designated a zone in which they are going to do the aerial operation, and the IAF has informed all the officials. Rafale, Mirage 2000, Seco-30 fighter jets will be involved. Surveillance platforms and support systems will also be involved. Did you understand? This will also happen, will be involved. That is an important thing. This is an important thing. I consider this a very, very, very important thing. Did you understand? India understands this thing, that India has repeatedly said that Operation Sindoor is not over. Operation Sindoor is not over. Operation Sindoor is going on. And if this Operation Sindoor is going on, then we should prepare. What to do? Prepare. And what is that preparation? That we have to take revenge from Pakistan at any cost. Are you understanding? We have to take revenge from Pakistan. Now it is being said again and again that Operation Sindoor is over. It is not over. Why is it not over? Brother, what is Operation Sindoor going on for? India has told the world that we have declared ceasefire. It has told its people that it is staying away from the operation. The troops have reached before the 2nd of April. The troops are reaching before the 2nd of April. Are you understanding? And what happened here? The Air Force is working. Obviously, I am concentrating on thinking about this. This is the thing that I am thinking about and seeing what India will do. At the end of the day, keep this thing in mind, that the noise that Pakistan is making on the issue of banishment, the situations that it is creating, everything is happening. So, the notes etc. that are being issued, let me tell you, it will be fine. It is not something very big. It is not a doomsday thing. Let me tell you that you do not have any issue. These NOTAMs keep on being issued. NOTAMs keep on being issued. NOTAM is not a problem. Or NOTAM is not such a thing. I have said that India has to create an atmosphere. What atmosphere will it create, brother? What will it create? What will it tell the people? Why are we silent? Against whom is Operation Sindoor going on? Operation Sindoor is going on. Operation Sindoor will be carried out on one condition. Remember, if Pakistan is attacked. And I say it is okay. If this is the case, then India can attack. Let it see. India can see the attack. Let it plan. Let's see what happens. How things will go. Attacking is not an easy task. Attacking and then tolerating it is the real thing. Attacking is not everything. Sir, attacking is not everything. After attacking, then he has to do this. Right, right? Yes. This is what I understand. Let's see what comes out of this. Right, right? Yes. So this is what I understand. This is what I see. Now let's see that. This is from a report of the World Bank in which it has been told that India is the fourth most economic equal country in the world. You are hearing it right. It is a country with economic equality, not economic inequality. Which country is above India in the top 4 in the world? It includes Slovak Republic, Slovenia and Belarus. Last year,
Pakistan's Muashi-Sharai Army Bank released a report citing army growth. This report has been released by the Army Bank. There is a lot of inequality in the country in terms of income. You must be hearing this thing continuously in this country. The poor are continuously becoming poorer and the rich are continuously becoming richer. You must have also heard many opposition leaders saying that 90% of the wealth of the country is in the pockets of the top 1% people. The government is criticized a lot by taking the name of Ambani Adani, but today we are going to present some such figures in front of you, which will tell you that India is far ahead of countries like China and America. In which, in terms of equality of income of every person, India has currently reached the 4th position in the world. There is a score called Gini score. India's score on that Gini score is 25.5. The lower the score, the more economic equality. India's score is low. It means that economic equality is more in India. The line of poverty in Pakistan has increased a lot. The new figures that have come out from RB Bank have increased the line of poverty in Pakistan to 44.7%. That is, almost 45%. In the report released by RB Bank, it was told that equality is decreasing and America has more inequality than us. China has more inequality than us. And South Africa has been considered the country with the highest inequality. But if we talk about this time, poverty is the biggest issue of Pakistan, and the countries that are with us have gone far ahead of us in terms of society. Whereas Pakistan has not been able to come out of the debt trap of IMF till now. There is only one reason for this. The reason is that since independence till now, the rulers have never given priority to the nation's poverty. What happened in that was that the condition of the people at that time is such that every person is trying to feed himself and his children. They are struggling. Where did we make mistakes in 76 years, and how can we get out of this economic crisis? Friends, the World Bank has reported that 10 million Pakistanis are going into poverty. It means they are sleeping in poverty. What is even more painful is the economic equality. But a very interesting and fascinating thing has been said about India in this. The latest report of the World Bank says that when Modi ji came to power, 16.6% of the people of India lived below the extreme poverty line. But today, after 10 years of his being in power, only 2.2% of the people are below the extreme poverty line. So, overall, the World Bank report says that if poverty has been eradicated the fastest in any country, it is India. The World Bank report is going viral everywhere. It was said that there has been an increase of 44.7% in the poverty. But these things are not contested by the Pakistani government. The big executive director at IMF and the world's biggest financial institutions are giving this news right now that India is a big news because with growth, India is going to achieve its target very soon, for which it has set those parameters. And the Indian government, its prime minister and its authorities have already decided that it is going to become the 3rd largest economy very soon. So, it will now complete this journey at a faster pace. The World Bank has mentioned some schemes of India in its report, due to which it has said that this inequality has reduced. Equality has increased. In economic equality, first of all they said financial inclusion. So opening of Jan Dhan accounts has been given the first place. Second, DVT, through which the government directly deposits money in your account. Third, Ayushman Bharat, due to which your expenditure on health has reduced, and apart from that, schemes like Vishwakarma Yojana and Stand Up Yojana give you an opportunity to do your work. Tripathi Ji, since he is a man of this world, should tell about this. No, how can we learn from mistakes? How can we move forward? And can we learn from others and want to learn? And Muhammad Sahib, the people of Pakistan want to understand in very simple language that they are lagging behind those leaders today. Why did they lag behind? Why are they better than us in a way? He had also said the same thing in the beginning, that we have any reason to believe that whether it is the last I program or not. You do not have any reason at all right now, and this was the 3rd thing that we have not talked about till now. See Wasim, your efforts are stuck in the framework of an old 20th century efforts. You should look at the efforts of the last 25 to 30 years. The world has changed. Pakistan's ambitions have not changed.
Our land was liberated in 1947, but our minds were not liberated, and the proof of this is that it may seem like a small thing to say, but I think this is the biggest thing. Therefore, whether it is the rule of the army or the rule of any political group or the government of any school of thought, but our national thinking, despite political and geographical independence, has been that only big powers can solve the problems of Pakistan's economy and security. We neither have the capability nor the capacity for that, and Japan is no more the fourth largest economy. It is India which is the fourth largest economy. This is what Indian leadership is saying, and that is something very interesting in our sense that now messaging is being done to Pakistan that our inflation rate is 26% and even more, and Pakistan's growth rate is 1.8%. Tell me what will be the higher education in a country where 3 crore children are out of school. In a country where 3 crore children are out of school, and the definition of literacy in that country is that he should know how to read, should know how to write his name, and yet the literacy rate in that country is 59%. There the government has decided that we have to cut down 24 billion more in public universities, whereas the number of out-of-school children in poverty is 3 crore. Whereas the World Bank is saying that 10 million people, that is 1 crore people, are going into more poverty. There the government is taking these decisions. Hello friends. So friends, India is always taunted for being the most backward country in the world. It is like that. Friends, the World Bank has slapped all those countries hard. Because friends, the World Bank has released a report which tells how much inequality is there in which countries. But friends, you will be happy to know that our country is at number 4 in this. There are 3 countries ahead of it. Slovakia, the state of Slovakia, and Belarus. After this, India is at number 4. But friends, China and USA, which are considered to be very developed nations, are behind India. Even Britain and Japan. All these countries are behind India in this matter, and as far as Pakistan is concerned, friends, there is no trace of it. These people are struggling with their own problems, and since the World Bank report has come, friends, these people are asking questions after questions that how did India go ahead and how did we remain behind? But friends, this report has shocked everyone because countries like America and China are behind India in it, which they cannot tolerate at all. But friends, India is emerging as a power. The World Bank has even issued a statement about India that how was India 10 years ago and how is India after 10 years. So friends, like and share the video and also subscribe to the channel. You cannot compete with us. Because you do not have that many resources. You are not that smart. They are saying that the economy of Maharashtra is more than Pakistan. The economy of $4 trillion has grown 10 times more than Pakistan. So the capitalization of Bombay Stock Exchange and National Exchange is going 200 times more than the Pakistani Stock Exchange. Okay, right? So from this you can guess where does this stand now. I think $1 trillion, such a big gap has come between India and Pakistan. And then he is basically saying that we are celebrating multiple things. Regulations have to be reduced. Brain gain has to be brought here, and then he says yes, our incredible India. This is the thing where obviously Pakistan needs to work. क्या था और क्या है और क्या था और क्या है, अब वो मैं दोहराना नहीं चाहता। आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद बौखला गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो को धमकी वाले अंदाज में तलहा ने कहा, बिलावल का बयान पाकिस्तान का अपमान करने वाला है। पाकिस्तान की इस वक्त जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं
उन सब प्रॉब्लम्स के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये कर्मा है। वहीं दावा किया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो के इस बयान के बाद पाकिस्तान में उनकी काफी आलोचना हो रही है। कई आतंकी संगठन उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। उनका ये इनका कर्मा है। और कर्मा किसको कहते हैं? ये कर्मा किसको कहते हैं? कर्मों का फल। उनका ये सब किया धरा जो इस वक्त इनके सामने आ रहा है, ये इनके कर्मों का फल है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। वी डोंट नो कि बिलावल भुट्टो की कितनी बैकिंग है हमारी डीप स्टेट के अंदर, लेकिन बिल्कुल बगैर किसी इशारे के उन्होंने ये बात कर दी, ये लगता नहीं है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बीएलए ने कब्जा कर लिया है। बलूचिस्तान में होशाब के लेवी फोर्स पोस्ट पर बीएलए और पाकिस्तानी आर्मी के बीच जमकर संघर्ष हुआ। कर्मा है जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, ये पाकिस्तान के कर्मों का फल है। बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू दिया है अल जजीरा को, जिसमें उन्होंने बात कर दी है हाफिज सईद और मसूद अजहर को एक्स्ट्राडाइट करने की। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर फसल आप जहर की बोएंगे तो आपको फसल भी जहर की ही काटनी पड़ेगी। पाकिस्तानी पूर्व विदेश मंत्री और मौजूदा शहबाज सरकार में सहयोगी बिलावल भुट्टो जरदारी को भी यह बात आज पता चली है। बिलावल भुट्टो ने कहा था कि भारत के साथ भरोसा कायम करने के लिए इस्लामाबाद लश्कर तोयबा प्रमुख हाफिज सईद और जैश-ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर के प्रत्यर्पण का विरोध नहीं करेगा। प्रत्यर्पण यानी कानूनी रूप से भारत को सौंपना। अब बिलावल भुट्टो की इस बात पर लश्कर तोयबा प्रमुख हाफिज सईद का बड़ा बयान आया है। अब बिलावल भुट्टो की इस बात पर लश्कर तोयबा का गुस्सा बिलावल भुट्टो पर फूट पड़ा है। अल जजीरा के साथ एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो हाफिज सईद और मसूद अजहर के प्रत्यर्पण के बारे में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान के साथ व्यापक बातचीत के हिस्से के रूप में यहाँ आतंकवाद उन मुद्दों में से एक है जिन पर हम चर्चा करते हैं। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान इनमें से किसी चीज का विरोध नहीं करेगा। बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू दिया अल जजीरा को, जिसमें उन्होंने जॉब्स में भी दिस इज वेरी सैड। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर की तरफ जब हम बढ़े तो हमें पता ही चलता है कि बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू दिया अल जजीरा को, जिसमें उन्होंने जो एंकर पर्सन है उन्होंने उनसे पूछा कि ये मसूद अजहर और जो हाफिज सईद और जो दहशतगर्दों की जमातें हैं और उनके जो लीडर हैं उनके बारे में आपने क्या किया या क्या आप उसके बारे में कुछ करेंगे, और इंडिया जो है उनको हैंड ओवर करने के लिए कहता रहता है, क्या आप ऐसा करेंगे? ऐसे कुछ सवालात उनसे किए गए, जिसके ऊपर उनका जवाब एक तो ये था कि मसूद अजहर अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, अच्छा। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि हाँ, इसके बारे में सोचा जा सकता है, यानी इंडिया जो है वो इसके बारे में जो भी वो बैठे बात करे, टेररिज्म पे इशू ऐसा है इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं, और हम जो है वो अगर ये सब चीजें हों तो हम ये चीज भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरे लिए तो ये बहुत ही अचंभे की बात है, यानी मैं तो हैरान और परेशान ही रह गई कि क्या हाफिज सईद और मसूद अजहर को हैंड ओवर किया जा सकता है? आप बताइए इसके ऊपर। देखें, ये भी बहुत बड़ी खबर है अगर बिलावल भुट्टो ने ये खुद ही अपनी तरफ से जवाब नहीं दे दिया, लेकिन आफ्टर ऑल ही इज पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर है ना, क्यों जी कि नहीं है? नहीं, अब तो नहीं है सर, पहले थे। अच्छा, पहले थे, लेकिन अब तो वो है ना सर, इसहाक दारी है ना फॉरेन मिनिस्टर भी। हाँ, जी ये गवर्नमेंट को बाहर से बैठ के सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट में है नहीं पीपल्स पार्टी वाले, ये वाली सिचुएशन है। और ये जो पीपल्स पार्टी के पॉलिटिशियंस हैं उनमें से ये एक हैवी वेट है, इसमें कोई शक नहीं है। एक इनके बाप हैं और एक ये है, ये फैमिली बिजनेस होती है। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है, और पता नहीं पूरी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफिशियली इसको सपोर्ट करती है या नहीं करती, और बिलावल भुट्टो ने ये किस बुनियाद पे कह दिया है। लेकिन आई थिंक दिस इज अ स्टेप फॉरवर्ड इफ दे आर सीरियस एंड दे बीन बिजनेस। मसूद अजहर जो है वो कहते हैं अफगानिस्तान में है। हमने तो सुना था कि जब ये इंडिया ने वो अटैक किया था तो भावलपुर में उनके सिस्टर का खानदान 10 लोगों का वो उसमें लॉस्ट देयर लाइव्स एंड सो ऑन। तो मसूद अजहर वाज देयर इन भावलपुर एट दैट टाइम। शायद अब अफगानिस्तान चले गए हैं, आई डोंट नो। लेकिन अगर
इन ऐसे लोगों को हैंड ओवर किया जा सकता है कि वो दे शुड स्टैंड ट्रायल फॉर द एक्यूजेशंस अगेंस्ट देम, तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। और ये कहना कि हम पूरे टेररिज्म के इशू को के उसी के इशू के अंदर ही इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, ये मैं मुनासिब बात समझता हूँ। अगर ये वाकई एक सीरियस स्टेटमेंट है जिसको पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान आर्मी, ISI वाले भी अप्रूव करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस के बयान जो हैं वो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती जब तक वो पूरा जो सेटअप उनको सपोर्ट ना करता हो। और वी डोंट नो कि बिलावल भुट्टो की कितनी बैकिंग है हमारी डीप स्टेट के अंदर, लेकिन बिल्कुल बगैर किसी इशारे के उन्होंने ये बात कर दी, ये लगता नहीं है। अब इतनी देर हो गई है कि ही मस्ट बी अ सीजन्ड पॉलिटिशियन। शशि थरूर की तरह ये भी इज अ गुड स्पीकर इन इंग्लिश, तो वो एक वो वाली वैल्यू भी है। लेकिन अगर ये बात करने से पहले कहीं पाकिस्तान के जो डिसाइसिव बॉडीज हैं उसके अंदर इस पे बहस हुई है और ये सिर्फ एक टैक्टिक नहीं है बल्कि एक सिंसियर ऑफर है, तो देन आई थिंक इंडिया शुड रिस्पॉन्ड टू इट एंड द टू कंट्रीज कैन गो फॉरवर्ड। मैं तो यूं देखता हूँ। तो सर जो उन्होंने ये बात की कि अफगानिस्तान में, तो अगर अब अफगानिस्तान की तरफ से कोई जवाब आ गया तो फिर क्या होगा? नहीं, अब वी डोंट नो, अफगानिस्तान वाले कह सकते हैं जी यहाँ नहीं है या यहाँ है, तो दिस हाँ। इज फॉर बिलावल भुट्टो नाउ टू फेस दिस जो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आज जिन भी हालात से गुजर रहा है, पाकिस्तान दुनिया को इसका जिम्मेदार ना ठहराए। पाकिस्तान की जो GDP है, इस वक्त पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन बहरान से गुजर रहा है, तो पाकिस्तान की जो GDP है ये रिफ्लेक्शन है उस टेररिज्म का जो उन्होंने दुनिया को एक्सपोर्ट की है। लिहाजा पाकिस्तान अपने हालात का जिम्मेदार दुनिया को ना ठहराए, ये कर्मा है जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, ये पाकिस्तान के कर्मों का फल है। और वो रिप्लाई करते हुए उन्होंने ये कह दिया है कि पाकिस्तान की इस वक्त जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब प्रॉब्लम्स के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये कर्मा है उनका, ये इनका कर्मा है। और कर्मा किसको कहते हैं? ये कर्मा किसको कहते हैं? कर्मों का फल। उनका ये सब किया धरा जो इस वक्त इनके सामने आ रहा है, ये इनके कर्मों का फल है। In the BRICS summit held in Brazil, India has once again proved its strong diplomacy. PM Modi, without naming any country, fiercely targeted terrorism and those who support it from the BRICS platform. After the Quad, now Pakistan has been humiliated in BRICS. BRICS strongly condemned the Pahalgam attack in the joint statement and intended to hold the masters of the terrorists accountable. So all the countries together raised their voice against terrorism. They had to. The biggest thing is that when the joint statement that came in the CO was not according to India's wish, India refused to sign it. Yes. Believe me, this time, China must be thinking whether to sign it or not. What should I do? Sign it too, but do it forcefully. A direct message has been given to Pakistan, the master of the terrorists who killed Hindus after asking their religion, that BRICS has a zero-tolerance policy against terrorism and is committed to combat it. And along with this, the ideology of the founders of BRICS is a very powerful ideology. The name BRICS was formed by taking the first letters of the names of the 5 founders. The 5 founders include Brazil, Russia, India, China, and South Africa. In the joint statement, a big statement was given as a condemnation of terrorism that, sir, there should be zero tolerance towards terrorism and cross-border terrorism, and its double standards have been complained about many times, whether it is Mumbai attacks or other Pulwama, ODI and Pathankot, and there is a long list. That is one big thing right at the beginning, that brother, a very big statement has come to you on terrorism. It is a very big diplomatic victory because BRICS is the organization of superpowers which even America is afraid of. Jai Hind, friends. So friends, India has achieved a very important achievement on the international platform, and now seeing all this, Pakistanis and Americans are getting angry. Yes. It was not according to India's wish, so India refused to sign it. Yes.
Believe me this time, even China must be thinking whether to sign or not. What should I do? They should sign it too, but they had to do it forcefully. As per the Pahalgam sentence, they too had to sign because many innocent lives were lost. So they had to sign it and they signed it. And with a big heart, with a heavy heart, and this is a very big diplomatic victory, because BRICS is an organization of countries which even America is afraid of. Sometimes it says, leave South Africa in a way. But Africa is there. South Africa has a lot of power in Africa. Brother, Iran was silenced and other countries think about this. But the founders are very powerful: Russia, China, India, Brazil. These four could not be controlled earlier. South Africa is also good, but the biggest thing is that sending a message to the whole world from such a big platform is a very big victory. If seen, this is a very big victory, and I was surprised when he said that. Actually, India has achieved a very big political victory in the BRICS Summit 2025 held recently. What happened is that the joint declaration of the BRICS Summit 2025 has strongly condemned the terrorist attack that took place on the 22nd April 2025 in Pahalgam, Jammu and Kashmir. In this attack, where 26 people from across the country died and many were injured, the government has openly raised its voice on all this on the international platform. Prime Minister Modi has strongly condemned Pakistan for supporting terrorism on the BRICS platform and has also appealed to global leaders for unity against terrorism. When the joint declaration came before everyone after the BRICS summit was over, it was voluntarily stated by all the member countries that terrorism will not be tolerated under any circumstances. Whatever be its motive, it should not be linked to any religion, race, nationality or civilization, and all terrorist organizations and their supporters should be punished. All the member countries of BRICS together have described the Pahalgam attack as a highly condemnable act, and this is the first time that a terrorist attack in India has been condemned so clearly on a platform like BRICS. In this joint declaration, all member countries were appealed to take steps against terrorism without any double standards. Now this is a very big victory for India because this time India has not allowed China to help Pakistan in any way, and India has clearly put its point before the whole world. We call it United Kingdom, but this is a big embarrassment for America as well, whose plane this obviously is. Yesterday a C-17 Globemaster came and landed here. Tomorrow it will be dismantled inside Trivandrum, and after that it will be taken back to UK. Now see, a lot of concerns are coming from America on this. There are also concerns from UK that this is a civilian airport. It is from Indian Air Force. Indian Air Force is not part of our NATO. If these people take our technology, then there were a lot of issues with that. See, a very interesting thing is, how did F-35 come here? Now, one fate believes that F-35 was on a normal routine mission. Here something went wrong and it landed here. One fate believes that this F-35 had come here to do some mischief. It was caught. It was tagged. After that it was told, son, you land here, and somewhere its systems malfunctioned a bit. One believes that, sir, F-35 had come to do mischief. You completely tangled it. And you basically pinged him really bad, and he had no other option but to land here. And the last group of things is that some issue happened, but UK has taken this opportunity to abusing the weapons of America a bit. It is very difficult to know what the truth is. But I am teetering towards the factor that something went wrong here, where we also took some action. Some advantage has also been taken from the UK side to abusing America a bit, because now we have come to know that from the US side, Lockheed Martin is going to do a closed-door review in the Pentagon that how did this happen? What actually happened, and after that it's complete tracking, complete rewiring of the entire systems and checking whether anything has gone wrong or not. This is a closed-door review which is happening. As per social media, you have seen that it is being made fun of. And a lot of memes were made on it by Kerala Tourism. But you know, this is one of the things that we need to understand. This is a very, very, very important event. Because see,
There are many people in India who still talk about F-35, F-35. They should understand one thing here, that brother, the supply chase of this particular aircraft, leave aside everything else. And I personally say that this is a good aircraft. It has good ions. Its serviceability ratio is very bad. Some people say it is down to about 25 to 30%. What is the exact ratio? It is very difficult to find out because these are confidential figures. But if the serviceability ratio is so bad, then I don't think we should be even touching something like this going forward. The BRICS meeting is going on. This is the second point that we will discuss in the BRICS meeting. Of course, very big statements came from Prime Minister Modi about terrorism, and in the BRICS joint statement, of course, Pakistan's name was not taken. But in the BRICS joint statement, a very big statement was given as a condemnation of terrorism, that, sir, there will be zero tolerance towards terrorism and cross-terrorism, and its double standard should be called out completely. So that is one big thing right at the beginning, that a very big statement has come to you on terrorism, where you know a lot has been written on this from BRICS side as well. Anyway, China is a little different from you. But you know, one of the things that we must understand during this time, China has also had to sign this thing. And of course it would not have liked this, that it has to sign against its beloved Pakistan. But he had to actually do this, and you know it will be quite not a very happy moment for China. Whatever statement came from BRICS is a very long statement. We will discuss it again. But the reason for this is that Modi Sahab has given very big statements there. And one of the things that we need to understand is that the whole game that will go forward will be basically a challenge to America. Now how? The finance ministers of BRICS who were sitting there have condemned 2 or 3 things. First of all, they said that Trump keeps imposing such huge tariffs for no reason. This is not right. We don't understand this, and we don't know what is the end goal. ये जो इंडिया जो है उसने 13 नए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं मुख्तलिफ वेस्टर्न वेपन बनाने वाली कंपनीज के साथ, और 23 करोड़ डॉलर का वो असला जो है वो ला रहे हैं। भारत की तरफ से बड़ी तैयारी की जा रही है और हो सकता है कि एक और हमला वो कर दे पाकिस्तान के ऊपर, उसकी ऐसा लग रहा है कि तैयारी हो रही है। अब क्वाड की मीटिंग हुई है यूएसए में, और वहां पर इंडिया के जो जयशंकर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है कि भाई हम दोबारा से अटैक करेंगे, फिर पूरी दुनिया को ये मैसेज असला ले आएंगे, सब कुछ ले आएंगे, बंदे किथों लेके आने। अच्छा, तो जज्बा जो उसको इस्तेमाल करने वाला है, उसका जज्बा जो है वो बहुत मैटर करता है। हाँ, ये कर लो पहले। और ये जितना मर्जी दुनिया से लेके आए, अबे साले, लेकिन मेरे अपने ख्याल में पाकिस्तान के लिए तो उनके पास बहुत सारे मुख्तलिफ रेंज की न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ा हुआ है। ब्रह्मस का काफी नहीं है। ब्रह्मस इज द फास्टेस्ट मिसाइल इन द वर्ल्ड, सुपरसोनिक मिसाइल है जी, 600-700 किलोमीटर, हर तरह से, जमीन से, समंदर से, फिजा से, हर जगह से मार कर सकता है। ये इतना नाअहल टोला है कि हमारी M3 एयरबेस पे जब भारत ने मिसाइल मारे तो हम सिटिंग डक्स थे और वेट कर रहे थे कि इधर गिर जाए, उधर गिर जाए, और बस बीच में ना गिरे, वरना तो सब तबाह हो जाएगा। ये है नायल, ये इनकी। इससे आगे कुछ कहने के लिए बचता है? तौबा, अस्तगफार, तौबा, 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 खुदा मुझे माफ करे। दरअसल भारत एक ऐसा बम बना रहा है जो जमीन में सैकड़ों फीट नीचे घुसकर परमाणु अड्डे उड़ा कर आ सकता है। और हमारे 2 दुश्मनों की बदनजरी इसके ऊपर शिद्दत के साथ मरकूज है, इसलिए इसका ध्यान रखें। उन्होंने वॉशिंगटन में बैठ के भारतीय वज़ीर ख़ारजा अमेरिकी मीडिया के साथ बात करते हैं और कहते हैं कि आपके प्रेसिडेंट बेबुनियाद दावा कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। उनका जो हदफ है वो बहुत बड़ा अपने आप को बनाना चाहते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो अग्नि लेटेस्ट वेरिएंट उनका देखें जो अंडरग्राउंड हिट करता है, ये ऐसे ही काम करनी पॉसिबिलिटी है। हम कह रहे हैं कि ये हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम चाहते हैं कि हम कायम हो। अमेरिका को फिर इस इलाके में पाकिस्तान जैसे मुल्क की सपोर्ट चाहिए थी, पार्टनर चाहिए। तो वो जो सपोर्ट की खातिर जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात भी हो गई, उनकी बड़ी तारीफें भी हुई। तो ट्रम्प तो अपने मसलों में फंस गया है मुल्क के अंदर। इनको जो सपोर्ट चाहिए ना माली तौर पे, वो ट्रम्प इनको देने वाला नहीं है फौरी तौर पे। IMF पैसा जरूर दे रहा है, हमें वेंटिलेटर जरूर लगा हुआ है, लेकिन उससे हमारी मेशत नहीं चल रही, सिर्फ हमारा सांस चल रहा है। तबाह, बर्बाद 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 कर दी। दूसरी तरफ भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर वॉशिंगटन में है, 4 मुल्क की वज़ीर ख़ारजा की बड़ी अहम मीटिंग है।
उस मीटिंग के मौके के ऊपर वाशिंगटन में बैठ के न्यूज वीक को वो इंटरव्यू देते हैं और वो ये दावा करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये जो क्लेम कर रहे हैं कि पाक भारत जंग बंदी में उन्होंने ट्रेड की धमकी दे करके ट्रेड करें या जंग करें, जंग बंदी करवाई है, ये बेबुनियाद है। उन्होंने वाशिंगटन में बैठ के भारतीय वज़ीर खारजा अमेरिकी मीडिया के साथ बात करते हैं और कहते हैं कि आपके प्रेसिडेंट बेबुनियाद दावा कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। 9 मई की रात को अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने नरेंद्र मोदी को फोन किया। जयशंकर का दावा है कि मैं उस वक्त नरेंद्र मोदी के पास बैठा था जब जेडी वेंस का फोन आया था। और फोन में क्या कहा गया, उन्होंने कहा जी उस गुफ्तगू में, टेलीफोनिक गुफ्तगू में मिनट्स बनते हैं ना, इसका रिकॉर्ड बनाया जाता है और फिर एक्सचेंज किया जाता है। दोनों ममालिक जो है कि आपस में एक्सचेंज करते हैं उन मिनट्स को ताकि कोई भाम बना रहे। तो उन्होंने कहा कि उस गुफ्तगू में तिजारत और जंगबंदी का कोई तल्लुक, कोई तालमेल नहीं था। ये वो क्लेम कर रहे हैं और साथ वो कह रहे हैं कि उस गुफ्तगू में जेडी वेंस ने ये खबरदार किया था इंडिया को या इन्फॉर्म किया था कि पाकिस्तान बड़ा हमला कर सकता है, मतलब कोई न्यूक्लियर हमला कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, भारत के पास ऑलरेडी पाकिस्तान से ज़्यादा साजो सामान है। सेना से जुड़ा हुआ सामान हमेशा भारत सरकार खरीदती ही रहती है। अब एक नई खबर निकल के आ रही है कि जो भारत सरकार है वो नए गोला बारूद और खरीद रही, लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास और इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। जैसे हमारा सुखोई विमान उसको अपग्रेड किया जाएगा, S-500 उसको और परचेज, उसकी यूनिट जो है उसकी बात चल रही है, उसको और परचेज किया जाएगा। S-400 डिफेंस सिस्टम उसको और यूनिट परचेज की जाएंगी। तो ये सारी खबर देख करके पाकिस्तान की मीडिया घबरा गई है, डर गई है। तो इसी से जुड़ी हुई वीडियो इसमें हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान की मीडिया कैसे चर्चा कर रही है, कैसे डर रही है कि भारत के जो जयशंकर जी हैं वो लगातार विदेश में रहते हैं और भारत की ताकत को लगातार बढ़ा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की भविष्य मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भारत के पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जो जमीन के अंदर परमाणु संयंत्र को तबाह कर सकती हैं। पाकिस्तान की मीडिया डरी है। चलिए ये वीडियो देखते हैं। ये इशारा उस तरफ है, उन्होंने न्यूक्लियर का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया कि बड़ा हमला कर सकता है। तो उन्होंने कहा जी कि हमने, मतलब नरेंद्र मोदी, हमने या इंडिया ने कुछ बातें तस्लीम नहीं की और नरेंद्र मोदी ने पुरअज़म रद्द अमल का इजहार किया। अब ये बात, और इसके बाद वो कहते हैं कि अगली सुबह 10 मई यानी को पाकिस्तान के जो डीजीएमओ है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला ने भारतीय मनसब से राब्ता किया हॉटलाइन के ऊपर और उन्होंने जो है कि वो जंग बंदी की दरखास्त की। अब ये जनाब उनका भारतीय वज़ीर खारजा वाशिंगटन में बैठ के उन टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस के मिनट्स जो है क्रक्स बता रहे हैं कि ये चीजें हुई थी और ये मामला हुआ था जिसके बाद जंगबंदी हुई थी। इस दावे के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप का कोई इसमें किरदार नहीं है। अमेरिका जो है कि वो जेडी वेंस गुफ्तगू कर रहे थे, खबरदार कर रहे थे कि पाकिस्तान हमला कर सकता है। इंडिया ने अब क्या अज़म का इजहार किया, कौन सी बातें तस्लीम नहीं की, ये नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगली रोज सुबह जो है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन करके रिक्वेस्ट की जंगबंदी की, जिसके बाद ये जंगबंदी हुई है। अब इस मामले के ऊपर ना तो वाशिंगटन से ना ही इस्लामाबाद से अभी तक कोई वजाहत तरदीद आई है कि जनाब ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं वैसा है। तो जब तक इसकी कोई वजाहत या तरदीद ना आए तो ये समझा जाता है कि शायद इस बात के अंदर कुछ वजन है। जेडी वेंस का उन दिनों के अंदर जो मुसलसल उनका जो मौक़िफ़ था और वो कहते थे कि हम भारत के साथ खड़े हैं, ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमारी मुश्तरका जंग है। भारत जो है कि एक महदूद रिस्पॉन्स दे जिससे कोई खित्ते के अंदर बड़ी जंग ना शुरू हो। इन सारी चीजों से लगता यह है कि करीने क्यास है ये जो क्लेम किया जा रहा है, लेकिन अभी भी जब तक कि पाकिस्तान और वाशिंगटन इसके ऊपर बाज़ाब्ता तबसरा नहीं करते या इसकी तरदीद नहीं करते तो उस वक्त तक ये चीज अब जो चीज सामने आ रही वो ये आ रही है कि नहीं, ये जंगबंदी शायद पाकिस्तान की ख्वाहिश पर हुई, कि जंग बंदी हमारी ख्वाहिश पर हुई। इंडिया ये रोल एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी कराई, लेकिन हमने दरखास्त करके जंगबंदी करवाई और फिर हमने दरखास्त करके जो है मुलाकात करके और फील्ड मार्शल साहब ने वहां पर जो है कि वो नोबेल पीस प्राइज का जो है कि वो भी पेशकश कर दी, तड़का लगा दिया जनाब। लगता ही है कि शायद कोई हमने कुछ अपने तल्लुकात सीधे करने के लिए बहुत सारी जो है कि जो दुनिया भर के अंदर जो है हर हुकूमत जो है जंगों को अपनी हुब्बुल वतनी का जो है कि चूरन बेच कर जो है कि अपनी सियासी मुफादा जैसे नेतन्याहू कर रहे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो हम भी यहाँ पे करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इन्हीं जंगों से फायदे उठाते हुए खुद हमले करते हैं, फिर खुद कहते हैं हम जंगबंदी करते हैं, फिर खुद कहते हैं कि आए मुझे नोबेल अमन प्राइज दिया जाए। लेकिन ये सारी चीजें आपके सामने हैं।
अब ये सारी चीजें कि वहां पे हमारे एयर चीफ डेरे डाल के बैठे हैं, हमारे सेक्रेटरी कॉमर्स डेरे डाल के बैठे हैं, दूसरी तरफ ये सारी गुफ्तगू हो रही है, जयशंकर भी ये बातें कर रहे हैं। और अब कंक्लूजन हो रहा है, एक तरफ पाकिस्तान को माशी एतबार पर दिवालिया किया जा रहा है, दूसरी तरफ सियासी और इखलाकी और कानूनी और अदालती साइड के ऊपर भी दिवालिया किया जा रहा है, और जो जमहूरी तौर पर है वो तो पहले ही दिवालिया कर दिया गया है। तो अब आखिरी जो चीज रह गई थी वो जाहिर है हमारा डिफेंस था, और अब जो आपके फॉर्म 47 के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका बहादुर हमारे मसाइल अगर इंडिया से ठीक करवा दे, मतलब कश्मीर पर बातचीत करवा दे, तो हमें मसाइलों की जरूरत ही नहीं है, फिर मुकम्मल तौर पर हम इन्हें खत्म करने को तैयार हैं। लफ्ज उन्होंने एग्जैक्ट नहीं कहे, जो कहे वो आपने सुन लिए, लेकिन उनका मतलब यही है। अब जरा एक लम्हे के लिए सोच लीजिए कि हम इंडिया के साथ कश्मीर के मसले पर हल क्या चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि श्रीनगर हमें मिले, जो मौजूदा इनके हालात हैं इसमें ये यही कहेंगे कि जो कश्मीर आपके पास है वो आपके पास, जो हमारे पास है वो हमारे पास। सोचिए अगर सदर ट्रंप पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम को गिव अप करने के आप ये कहिए कि वादे के बाद इंडिया से ऐसा कोई ऐलान करवा भी देते हैं, एज्यूम कर रहे हैं हम कि इंडिया ऐसा ऐलान कर भी देता है, और जब आपके पास एटमी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम नहीं रह जाएगा, क्योंकि इंडिया तो ये नहीं कह रहा कि उसका एटमी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम आपके लिए है, वो तो कहेंगे उन्होंने खित्ते में अपने आप का अपना दिफा करना है, उनका जो प्रोग्राम है मिसाइल प्रोग्राम और एटमी प्रोग्राम वो उन्हें चाइना के खिलाफ भी चाहिए अपने आप की हिफाजत करने के लिए, और अमेरिका भी जरूर चाहेगा कि इंडिया की जो दिफाई पावर है, जो उनकी दिफाई ताकत है, वो चाइना के हम पल्ला हो, और इंडिया और चाइना एक दूसरे के साथ एंगेज करें, ताकि चाइना जो तेजी से तरक्की कर रहा है दुनिया के अंदर उसको रोका जा सके, और वो कहीं अमेरिका को काट ना दे, अमेरिका से आगे ना निकल जाए इस तरक्की के अंदर, जीडीपी की रेस के अंदर, टेक्नोलॉजी की रेस के अंदर, बिजनेस की रेस के अंदर। और इस वक्त तो चाइना बहुत स्पीड से आगे जा रहा है, तो अमेरिका के ये हर लिहाज से फायदे में है कि अगर जो हिंदुस्तान है वो ज्यादा ताकतवर हो और उसके पास ज्यादा फौजी ताकत हो। अब हम अपने मुंह से ये ऑफर्स करना शुरू हो गए हैं, तो अगर सदर ट्रंप मोदी के साथ बैठ के ये बातचीत कर लें, और मैं आपको कई दफा याद कीजिए ये बता चुका हूं कि ये जो नया नया प्यार जागा है सदर ट्रंप को पाकिस्तान का, और वो अक्सर इंडिया के खिलाफ ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं जिससे आपको भी कई दफा हैरानी होती होगी कि ये क्या हुआ है। एकदम से सदर ट्रंप इंडिया से निकल के पाकिस्तान के करीब आ गए, तो उसकी असल वजह यही है कि सदर ट्रंप तमाम मैन्युफैक्चरिंग और चीजें आखिरकार चाइना से इंडिया लेके जाना चाहते हैं। इंडिया का और अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट मेरा ख्याल को 45-50 बिलियन डॉलर का है, उसको वो फिक्स करना चाहते हैं, और उसको फिक्स करने के लिए वो मनूवरिंग कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी दुकान से सौदा ले रहे होते हैं, और जब भाव ताव कर रहे होते हैं तो आखिर पर अगर दुकानदार नहीं मानता तो धमकी के अंदाज में आप कहते हैं कि हम लेते ही नहीं, हम दूसरी दुकान से ले रहे हैं, और उठ कर जाते हैं। एग्जैक्टली सदर ट्रंप। दोस्तों देखा आपने वीडियो कि पाकिस्तान की मीडिया कैसे डर रही है कि भारत लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। भारत के पास ऑलरेडी ब्रह्मोस अग्नि मिसाइल है, लेकिन भारत उसके ऊपर काम कर रहा है, ताकत बढ़ा रहा है, हमेशा उनके रेंज को बढ़ाने की बात करता रहता है। अभी हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी इस समय विदेश की यात्रा पे है, वैसे तो वो वैसे भी वो विदेश यात्रा पे रहते ही हैं। भारत के पास इतने भयंकर मिसाइलें हैं जो जमीन के अंदर परमाणु संयंत्र को तबाह कर सकती हैं। ये चीज़ पाकिस्तान को डरा रही है। बाकी दोस्तों आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा ही है, पाकिस्तान की मीडिया कैसे डर रही है, घबरा रही है, बौखला भी रही है। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Friends, it is not hidden from anyone that how much hatred there is for Modi in Pakistan, be it the rulers of Pakistan or the politicians there or the military establishment there. All have a negative attitude towards Prime Minister Narendra Modi. Then why is Prime Minister Narendra Modi being hailed in the Parliament of Pakistan? Let us tell you in detail. Actually, a Pakistani MP has praised Prime Minister Narendra Modi and his government and has shown the mirror to the government of Pakistan and its rulers. India has adopted a strange thinking against Pakistan. For God's sake, engage them. Sit and talk with them. It can be seen that today they have really confirmed this. They are crying. Tell Khan Sahab to tweet. Now let's go. Khan Sahab has already tweeted. Now don't cry. They are crying because of my leader. You tell them to tweet. If the leader of jackals is a lion, then jackals also become lions. But if the leader of the lions is a jackal, then even the lions become jackals. If the speaker is a kafir, then he believes in the sword. If he is a Momin, then even a soldier fights without a sword. Pakistan is ready for general talks with India.
Instead of harming the general efforts of the American president, the Indian government should also come forward and join it. Bilawar Bhutto wrote in an expert post that we will consider resolving all the issues of tension with independent India in South Asia through talks at some non-partisan place. India, the country with us, is the prime minister of a common party there. He believes that this time we will enter and kill you. And that is what happened. He entered your house and killed you. They should be ashamed. They have become so corrupt. But in the midst of all this, if we talk about India, then India is among the 5 largest economies of the world, and in such a situation, why should the rulers of Pakistan feel that from where to where has India reached? But here it is also important to know that Ghar Ali Khan is the leader of Pakistan Tehreek-e-Insaf Party and Imran Khan is its biggest leader. Imran Khan also praises India when he is out of power or in a bad situation. But whenever the rulers of Pakistan and its leaders come to power, then anti-India becomes their only option. So in such a situation, praising India is also their compulsion, because when they see the situation, they praise India. They praise Prime Minister Narendra Modi. Here you people are talking that we have conquered the fort of the world. You people have ruined Pakistan and given it to us, and here you are sitting like politicians. Friends, the opposition party of Pakistan is praising Narendra Modi. It is not understandable that this praise of India is done inside Pakistan. The former Prime Minister of the Treasury has started remembering the trade with India. I want to talk to you directly. You should take this to your senses. It takes 2 hands to clap. So Dr. Sahib, the cabinets and all the states and centers in the country have not been formed yet. The electoral process is still going on, and I regret to say that it is still going on, but the conflict has happened. Questions are being raised. But you have started worrying about trade relations with India. It is beyond understanding. So you should know the history. What is the biggest issue in the way of trade with India? What is the biggest issue? I will remind you, and we will always remind you. Until India does not solve the Kashmir issue, does not stop the series of atrocities on our Kashmiri brothers and sisters, does not stop imposing arbitrary laws there. This topic should not be discussed until then. And without its solution, trade will not be done. Ader Sahib, you also worked with the British media. And you have a view, view which is like normally very few people have it here. Is there a possibility that we are here? What Abdullah Sahab is talking about or Durrani Sahab is talking about, all these things are practically possible in it. We can do it. Now the whole world is investing there. They are with us like I don't know. As Dullah Sahab is saying, even in cricket matches, enemies of jackals are made. If the leader of jackals is a lion, then jackals also become lions. But if the leader of lions is a jackal, then those lions also become jackals. Without any investigation, he attacked Pakistan. Apart from this, he also did drone attacks. At night, he also did drone attacks on Lahore, Rawalpindi, Karachi and various cities. Now it is a matter to think that we are an imperialistic power. In the entire Muslim Ummah, the only country Pakistan is an imperialistic power. Someone attacks us like this and we remain silent. The Chinese were massacred on the ground. We did not raise our voice diplomatically with so much help. Before that, such a big incident of Jafar Express happened. Did we challenge India? We remained silent, because of which today India has put its hands on our neck. The message was made an excuse. Who is Modi basically? Modi's character is not hidden from anyone. Amir Dagher Sahab told Modi's past in great detail. I will not go into it. Our Prime Minister Azam Sahab gave a speech in Awan. In the speech, he did not even like to take Modi's name. He did not even talk about RSS. He did not talk about what counter reply he had to give. Mr. Speaker, the kind of times that have come, if you see that Modi is going out of control, then there is also order in the house. And there are many such countries in the European Union who do not even glare at each other. Their citizens do not like to talk to each other. But despite that they are also trading, go back 70 years, this I am. Sorry, I am cutting it at each other's throats.
but this mindset that if India is allowed to trade in Pakistan, then Pakistan's market will become zero. This concept, maybe of the people, maybe they will not be able to comment whether things are cheap or expensive, 18 rupees is almost the unit of electricity. If we look at the compatibility, then according to that, it is not true. But it is unfortunate that they are saying that they should investigate. We are not involved in this. We will not attack. We want peace. We all want peace. If the leader of jackals is a lion, then jackals also become lions. But if the leader of lions is a jackal, then those lions also become jackals. But unfortunately, today our leadership does not have that capability. There is no ability to give a strong reply to it in the same way. Hello friends, the Prime Minister of Pakistan, who was looting everything a few days ago, the army chief and the PM of that country. Now friends, one by one their own people, their own MPs are exposing them. As you have seen how much fear there is of PM Modi in Pakistan. But on the other hand, friends, these people are also praising PM Modi. Friends, the best thing is that these people are exposing Pakistan's Shahbaz Sharif. These people are telling the truth of their country and the real strength of India. Friends, actually Modi is echoing in the parliament of Pakistan at this time because Modi has attacked every work. PM Modi has done this. Some are speaking ill of him and some are praising him. But friends, one thing is clear that the fear of PM Modi is still present inside them. That's why friends, there is a lot of discussion going on in the media of Pakistan that India will attack again. That is why India is buying so many weapons. This thing is being discussed a lot in Pakistan. But friends, whatever it is, these people are crying in this way. Just a few days ago, friends, this Bulwal Bhutto was also threatening war and today he is talking about peace with India. Friends, he is even saying that we are ready to hand over Hafiz Said to India. But we do not know where he is. Actually, these people talk nonsense anyway. But friends, they all have the same motive that we want peace from India. India is not in the mood to talk to them. So if you like the video, like and share the video and also subscribe to the channel. Listen to this, the opposition party of Imran Khan is praising the Indian Prime Minister Narendra Modi's foreign policy choices as well as his economy in the National Assembly of Pakistan. Just listen. One question is justified, isn't it our question? I think that in this context we have to understand the politics of Narendra Modi that he is investing money on development. This is our job too. We also have to teach artificial intelligence to our children, that we have to make our children keyboard warriors all the time. We have to pit them against each other. This is an important question. Frankly speaking, it cannot be like it was before when you say that things will remain the same as they were. The Indian leadership has the resources and they are investing money and they want India to outmaneuver all the natives of the country. See, for example, they have built or bought aircraft carriers or have worked on it, at least they are setting a direction for themselves. We should also set our direction. How long will we keep abusing each other and do such things? And I believe that if money is not spent on development, then the infrastructure for our people and our children will not be available in our day. Know this thing for yourself, understand it a little. If there is no infrastructure for our people, if there are no such investment opportunities for our people in the future, then what will we do? Attack cruise missile IELRLCM can now be included in the defense strategy of Greece. These discussions are in full swing. It is a simple matter. India would not have taken action on it earlier. It never would have. But this time when the war happened, a small war, then in the midst of it, India saw that Pakistan is totally supporting it. It is a simple matter. It is a simple matter. It has seen that Pakistan totally supported it in every matter. So what is India doing now? Will it support its enemies? Since yesterday, there has been a hue and cry in Turkey on this report. Because what we had said in your own channel, I had said that if not BrahMos, India will offer long-range land attack cruise missile to Greece.
And the long-range land attack cruise missile is the near-bay missile. Drone Turkey thought that it is the master of drones and it can destroy any country by using the SWAM drone technique. Its uproar was also silenced. Whatever drones Pakistan launched, we destroyed them all. Then they are saying to Greece that we will give you the missiles that are still there. There are 100 missiles, and these are the missiles, airbases, etc., etc. There is a lot of discussion about it in Greece that this has been offered, and Turkey is very concerned about the symmetry there. Jai Hind friends, Turkey is surprised to see India's new strategy, and the Turkish media is crying due to the fear of India. India would not have taken action on it earlier. But this time, when the war happened, the small war happened, then in the middle of it, brother, India saw that Pakistan is totally supporting it. It is a simple thing. It has seen that Pakistan has totally supported it in every matter. So what is India doing now? It will support its enemies, and that tit-for-tat thing is a scene, brother. They have been suppressed because a message has been given to them that, brothers, you guys remember the way Modi ji was standing and telling their mountains on the other side. On their side he was saying everything, he was watching, he will blow up everything. Then for Greece, Modi ji was standing in the mountains and sowing all this for you. Then he is saying with Greece that now we will give you the dependent missiles. So these are 100 missiles, and these are the missiles which will destroy the airbases, etc. All this, I mean Istanbul is connected with it. Yes, the work with it has to be done. The work has to be done. I mean India is saying that India is not directly telling it like this. This is what it is with Turkey. Those who reached there, etc. But the thing that was left, suppose it had no issues, it used to help other countries sometimes, now is also giving weapons to Armenia, Turkey and Azerbaijan are facing problems, and now it is also giving weapons to Greece. Turkey is facing the most problems, and India has said that you had given weapons to Pakistan. Now I will give weapons to these countries. India now slowly see, first of all, took a lot of action against Pakistan. Whatever happened to them, well, they keep taking action against each other. But this time, for the first time, it has been seen that India has taken action against the friends of Pakistan as well. It has taken action against them as well. This was seen for the first time. Before today, this thing was not seen. It was not seen. These are aggressive stunts this time. This time India is coming out very aggressive. Really, this time it means that the scene is not the same. The old spot of the previous, that scene is coming out fully aggressive this time. There is no doubt that it is fully aggressive. Now those days are gone. Look, it has been 50-60 to 60 years since the issues with Pakistan were going on. I would say that the most strict action that has been taken till date has been taken by Modi ji these days, be it Operation Sindoor or the Indus Water Treaty. Actually, the defense card that India has played has not only given strength to India's old friend, but at the same time, India's old enemy has also lost sleep. Yes, right now we are talking about that defense collaboration between India and Greece, the news of which has come out recently and which has given Turkey sleepless nights. Turkish media has published thousands of such articles one after the other, which are showing that India is going to take a very big action against Turkey, and India is directly targeting Turkey. Turkish media says that India is going to blockade Turkey's enemy Greece by 1500 km. Greece is going to give a dangerous missile with long range, and Greece will use this missile of India to cause destruction in Turkey. The missile developed by India, LRLACMIE Long Range Land Attack Cruise Missile, is the same missile that India showed for the first time on the international stage in DEFA 2025, and Turkey was surprised to see it. In simple language, if we say, the long-range land attack cruise missile developed by India can now be included in the defense strategy of Greece very soon. It is said that its range is 1,500 kilometers when launched from the ground and about 1,000 kilometers when launched from the naval platform. It was successfully tested in November 2024.
It has the accurate capability to carry both nuclear and conventional warheads and has such an accurate capability that it can destroy the enemy's secret hideouts. Let us tell you that at present discussions are going on between India and Greece regarding this deal. But because of the kind of relations Turkey has built with India, this deal will be concluded very soon. It is very clear that India is now openly saying that we are fighting not just one probably three adversaries when you said that. What will be its geopolitical impact? Since yesterday, people started crying in Turkey. Reports on this, because what we had said, I had said in your own channel that if not BrahMos, India will offer long-range land attack cruise missile to Greece. Long-range land attack cruise missile is the nearby missile with the indigenous Manik engine. It was offered to them. There's a lot of discussion about it in Greece that this has been offered, and Turkey is very concerned that the symmetry there, that symmetry gets broken if Greece gets that weapon system. Although Greece and Turkey both are part of NATO. But there is a figure of 36 in it, not from today. It is again quite a few thousand-year-old animosity. If someone watches the movie Troy, they will understand. That is the time it started, but never has in the recent past since 1940. After the Second World War, it has been going on, and their theater of conflict is the theater of conflict of its Cyprus. So Turkey is concerned that India is giving this missile. China is now more concerned because I think that after this, after Philippines and Vietnam, some more countries will be given BrahMos and the Akash survivors to our missiles. So the dominance of China in the South China Sea will to a certain extent get challenged. Because the versions that are being taken there, the Philippines is taking, those are almost probably anti-ship versions. Anti-ship versions, because for them there is no point in attacking mainline China. Their ultimate objective is to take control of South China. So, you will not see in this, see, it is because you said what is the geopolitical aspect of it. We are in a very interested in geopolitical aspect. And this, or you can say that geopolitics in today's times it has become very fluid. You have to do business with the one whom you call adversary, and he will also try to stop you. You have also started trying to stop him. But yes, there will be in certain areas business is useful. It will not be completely stopped. And that too is a leverage. There is a reason it is not just that no it is a business. That is not it. That business is also your leverage. If China exports these in such a large scale here, then you know eventually you will develop your own capabilities so that you can substitute it. But that also is your leverage that I will stop you if you don't do this. That is a leverage. So interestingly, what is happening is this. Yes, you have problems with China, and one interesting thing, General Rahul Singh said that China will try to do via Pakistan, then to directly do something in the northern borders. So it is like cut with a board knife. He said he used this dictum, cutting. Sorry, I am sorry, I will interject you. That is very interesting. What he mentioned there, cut with a board knife. This is the 36 stratums of China. Okay, 36 stratums of war fighting. Very interesting stuff. Chanakya nidhi means extracting the juice of Chanakya nidhi, and then there's a dirty Chinese copy. There is something in it which is very interesting to read. It is very this thing, and it talks about Chinese history. So he told this very interesting thing, and the Chinese don't like it when they're adversaries. They know about all this stuff. So I think this was also a message. Absolutely, and I would request everybody, you must read Shaju. You must read Shaju The Art of War. You must read Confucius. You should read. You should know. Look. PM Modi was invited for a dinner. The event was organized by Trinidad's Prime Minister Kamala Prasad Bash. But the most special thing in this dinner was the sori leaf on which the food was served. This is not an ordinary leaf. It is a part of a tradition that has been alive in Trinidad for generations. Serving food on this leaf on every festival and every special occasion is a living symbol of Indianness. How much passion is there in someone? How much desire? How much spiritualism? How much passion to reach there?
That is also kept in mind, and on top of that, whenever someone like this is definitely a Pakistani, in which I myself am also included. I believe that our DNA is Hindustani. Yes, our DNA is Hindustani. Our DNA is neither Turk nor are we Arab. And the turn will be towards Africa. That is something which is natural and that has to happen because the resources are in Africa and the next game will be in Africa. The current game hasn't even started, but in any case the next game is going to be Africa. So everyone is trying to strengthen their position there. So what do you think is the power in all these elements that has got so much popularity here? Now after that, to say that our DNA is not Indian and we have never been Indian and our elders, our seniors or the generations before us never had any link or any kind of connection with Hinduism or India, then I think we are saying absolutely wrong things here. India is also seen in the same way. Last year when Modi Sahab was traveling, he went to Nigeria, he went to multiple other countries. He had very good interaction with South Africa, very good interaction with the PM. Modi wrote, "I felt like home away from home." This made this emotional meeting even more special. Modiji's gift in which he handed over a beautiful replica of the Ram Temple of Ayodhya and the holy water of Saryu and Prayagraj to the people of Trinidad. Look at yoga, you find yoga centers everywhere. You can go to any big gym. The classes held there definitely include yoga classes. How much meditation has started here? We see big celebrities like this. In fact, I even saw President Obama. I was watching a clip in which he was telling how he keeps Lord Hanuman, his idol, close to him, and what does it mean? We see many such celebrities, from Julia Roberts to who else? So what do you think is the power in this one, in all these elements, that it got so much respect here? Pakistan, in which I myself am also a part. I believe that our DNA is Indian. Yes, our DNA is Indian. Our DNA is neither Turk nor Arab. I don't understand why Pakistanis feel so ashamed of saying that their DNA is Indian. Okay, in 1947, you created a country. You wanted to create one. You wanted to create a country. Your wish was that we will create a separate country and we will live there. We will live according to our wishes or whatever we do. But now after that, you say that our DNA is not Indian. And we have never been Indians. And our elders or our seniors or the generations before us never had any link or any kind of connection with Hinduism or India. So I think we are talking completely wrong here. There are many people in Pakistan who believe this, and there are many people like me. I am not alone, but it is definitely true that some people may think that. Namaskar friends, our Prime Minister Shri Narendra Modi is currently on a tour of 5 countries, and his first country was Ghana, where he received a lot of respect. I had also uploaded a video, and another country is Tierney. The Prime Minister there is of Indian origin and he has preserved his culture there, and many Indians also live in Tierney. That is, people of Indian origin also live there. So now our Prime Minister Modi ji was fed food on the sacred sal leaf there, which is a symbol of Indian culture. In our country also, in South India, it is a matter of great respect to be fed on a banana leaf, and we people do not believe in Western culture and like to eat food on a banana leaf. So our Prime Minister Modi ji was fed food on a sal leaf with great respect. People hesitate a bit while saying this. They get a little nervous. But I do not understand what is there to be so nervous about. Our DNA is completely Indian. In fact, the DNA of those who were here and did not go from here to there is also Indian. But I do not know why they do not believe this. It is very strange. And why do we feel bad while telling this? We always try to associate ourselves with Arabs in some way or the other. And the condition of Arabs is such that they do not take us into consideration, and they think that we are sidelined and are not worthy of being associated with Arabs.
But we do not give up our stubbornness and are told again and again that our generations will mix with Arabs much later. But our mindset is something like this. We try again and again to tell that who we are, either we are Turks, or our generation will mix with Arabs in some way or the other, and we do not know why we are afraid to associate ourselves with India, or to tell about ourselves with India, or do we feel ashamed? I have not been able to understand this thing till date. In every way, even after so many years, it has been 78 years since Pakistan was formed. Despite that, even today when our politicians and our brothers rise from here, they talk about the G2, the nation theory, and again, Hindus and Muslims cannot live together and we are superior. Firstly, we are so proud of our superiority that we may even spend our whole life on it. The whole world, the whole universe, whatever we call it, will come to an end, but this thought and this bug in our minds, we say, will not go away, that we are superior, and everyone else is inferior to us. And as long as we remain in this circle, I think, we cannot achieve anything. As long as we do not give ourselves the meaning of the term and we do not understand that others can be better than us, till then I think that nothing is going to happen to us. Today we will talk about a very interesting turn where India has turned towards Africa, and you might remember that I had done a geopolitical presentation in which I had said that the turn of the whole world will now turn towards Africa. That is something which is natural and that has to happen because the resources are in Africa and the next game will be in Africa. The game has not even started yet, but in any case the next game is going to be in Africa, so everyone is trying to strengthen their position there. Looking at India from this perspective, last year when Modi Sahib was traveling, he went to Nigeria and went to multiple other countries. He had very good interactions with South Africa, very good interactions with a lot of other countries in Africa, and now we are seeing that he was and what is the meaning of the song and what is the meaning of Africa. Plus let us talk a little about the other visits of Modi ji as well. Namaskar to Patty Bhai, welcome to the show. Namaskar. So see, actually, to be very honest, in Africa, as you said that lots of countries are moving towards Africa, that is true, but when Europe went to Africa or even China, till a few years ago, they exploited Africa, that is, they went there to exploit it, but it is not so with India. The reason is that we do not know how to exploit, that is the problem. The second thing is that Africa as a continent is at the same place where India was 30 to 40 years ago. So you will see that many countries there have also gone through a colonial past, colonial nightmare, just like we did. So you will see that there are many issues, there is a commonality between India and Africa. So India will go to India. Friends, have you seen the video? Our Prime Minister Shri Narendra Modi ji is respected so much abroad. Whenever he goes to any country, people respect him wholeheartedly. Recently, when he was in Ghana, he was honored with the highest honor of Ghana. Now he is in Trinidad, and there are many people of Indian origin living in Trinidad, and the current Prime Minister of Trinidad is also a Hindu Prime Minister of Indian origin, and he has given so much respect to our Prime Minister Modi ji. When he hosted a dinner, he fed him on the very sacred sal leaf. Just like in our country, feeding on banana leaves is a matter of great respect and sacredness. In the same way, our people of Indian origin in Trinidad are also preserving the Indian culture, and when our Prime Minister reached there, the Prime Minister of that place also showed this thing that our Prime Minister Modi ji was fed on that leaf, which we consider very sacred. This shows that we Indians respect the whole world. लेकिन इनको चूंकि मराहत मिल रही हैं, इनके पास गाड़ियां हैं, इनके पास जहाज हैं, जहाज पकड़ते हैं तो जनाब ये सऊदी अरेबिया पहुंच जाते हैं, जहाज पकड़ते हैं दुबई चले जाते हैं, जहाज पकड़ते हैं आज़रबाईजान चले जाते हैं, सैरें भी हो रही हैं, मजे भी हो रहे हैं, टीएडीए भी बन रहा है मेरे और आपके पैसों पे,
और ये स्ट्रेटेजिक सपोर्ट जो है वो लेने जा रहे हैं। अच्छा, हालांकि मैं आपको मजे की बात बताऊं, जब उस पे हमले किए तो वहां पे वो बोल पड़े, उन्होंने कहा भाई साहब आप क्यों वहां पे हमले कर रहे हैं, आप क्यों वहां पे जो है ये सब कुछ कर रहे हैं। तो वहां से एक थोड़ा सा पाकिस्तान को खतरा महसूस हुआ कि भारत जो है वो एक सपोर्ट कर सकता है और भारत जो है वो इस अंदाज से सपोर्ट करेगा कि पाकिस्तान को उससे मुश्किल पैदा हो सकती है। सो भारत हमें पेट्रोल में कहाँ है आलमी मंडी में कीमत पेट्रोल की, जानते हैं आप लोग? कहाँ पे है? पाकिस्तान में इस हिसाब से 140 रुपए लीटर पेट्रोल मिलना चाहिए। कितना पेट्रोल ले रहे हैं आप लोग? लेकिन वो हमने जो टैक्स इतना लिया है उसकी वजह से हमें शराइत माननी पड़ती है। हमने कहाँ लिया? हमने तो दिया ही दिया है और आज तक दे रहे हैं। और भाई गवर्नमेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट तो फॉर्म 47 की है और इसे लाने वाले जो है वो 76 साल से फॉर्म 47 पे गवर्नमेंट लेके आ रहे हैं। आप ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे उठाए ना जाए। सर उठा ले हमें। फैमिलीज भी इंजॉय कर रही हैं, प्रोटोकॉल भी है, इख्तियारात भी हैं, जो भी हैं इख्तियारात, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन जो भी हैं तो मजे हैं इनके। इनको क्या फर्क पड़ता है कि आम आदमी का बिल जो है वो 1400 आ रहा है, 14,000 आ रहा है, क्या फर्क पड़ता है, मजे कर रहे हैं ना। सर कहीं पे दोस्तों, अब पाकिस्तान के अंदर भी कंपैरिजन की बातें चल रही हैं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी विदेश यात्रा पर हैं और शहबाज शरीफ भी विदेश यात्रा के ऊपर निकल चुके हैं। परंतु भारत के प्रधानमंत्री मोदी को 2 दिन में 2 देशों के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुके हैं। पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को क्या मिला? ये एयरपोर्ट पे जब पाकिस्तान से जा रहे थे तो बड़े चश्मा लगाकर जा रहे थे। अजरबैजान जाकर वहां के राष्ट्रपति से खूब गले मिले, परंतु हुआ क्या कि जब मेन ईसीओ मीटिंग हुई तो वहां पर शहबाज शरीफ को साइड में खड़ा कर दिया गया कि तुम बगल में खड़े रहो, तुम्हारी कोई वैल्यू वगैरह है नहीं। वैसे भी यह इकोनॉमिक कोऑपरेशन की मीटिंग है और ये देश भी जानते हैं कि पाकिस्तान के पास इकोनॉमिक कोऑपरेशन के नाम पर केवल कर्ज का पैसा है, खुद की फूटी कौड़ी नहीं है, इसलिए इनको फैमिली फोटो लेकिन इनको चूंकि मराहत मिल रही हैं, इनके पास गाड़ियां हैं, इनके पास जहाज हैं, जहाज पकड़ते हैं तो जनाब ये सऊदी अरेबिया पहुंच जाते हैं, जहाज पकड़ते हैं दुबई चले जाते हैं, जहाज पकड़ते हैं अजरबैजान चले जाते हैं। सैरें भी हो रही हैं, मजे भी हो रहे हैं, टीएडीए भी बन रहा है मेरे और आपके पैसों पे, और फैमिलीज भी इंजॉय कर रही हैं, प्रोटोकॉल भी है, इख्तियारात भी हैं, जो भी हैं इख्तियारात, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन जो भी हैं तो मजे हैं इनके। इनको क्या फर्क पड़ता है कि आम आदमी का बिल जो है वो 1400 आ रहा है, 14,000 आ रहा है, क्या फर्क पड़ता है, मजे कर रहे हैं ना। सर कहीं पे मैं पढ़ी थी एक्सटेंशन, मतलब एक तो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होती है, लेकिन एक गवर्नमेंट अपनी एक्सटेंशन के लिए कोशिश कर रही है कि जब इलेक्शंस का टाइम आए तो इनका वक्त बढ़ा दिया जाए और इलेक्शंस ना करवाए जाए। क्या वाकई में इन लोगों को कोई एहसास नहीं है कि किस तरीके से मुल्क को चला रहे हैं, और हर चीज जो है वो इमरान खान के, ना मैं फैन हूँ ना आप फैन है, लेकिन हर चीज पीटीआई पे डाल देना कहाँ तक इनको नुकसान दे रहा है? देखिए, लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं, लोग चीजों को समझते हैं, देख रहे हैं। या तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इमरान खान से बेहतर होती, लोगों को रिलीफ मिलता, लोगों के रहन सहन में कोई बेहतरी आती, तो फिर तो ठीक है, आपकी बात में कोई वजन था। लेकिन हालात तो खराब होते चले जा रहे हैं दिन भर। बिजली पे इन्होंने कहा था कि जी हम 300 यूनिट हम फ्री करेंगे गरीबों के लिए, गौर किया? माशाल्लाह देख लो 200 यूनिट 201 यूनिट के थे 200 यूनिट से की फर्क है, मैंने दसन की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली हर इंसान को पता है, हर इंसान को। हम तो देखे ना उसके सामने वो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। अच्छा, हमने कश्मीर का कितना हिस्सा ले लिया अभी तक? आज तक हमने कश्मीर का क्या ले लिया? सर हम किसी का कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, हम किसी से कुछ भी नहीं ले सकते, हम जज्बाती बात कर सकते हैं। हम मुसलमान लोग हैं ना, मुसलमान कौम है ना, हमारा पहले उसके जो भी बात हम कर रहे हैं ना जज्बाती, उसके लिए पहले हमें यकजहती का तो मुजाहिरा करना है। अबे भाई अपनी यकजहती अपनी यूनिटी पहले यहाँ तो बना लो कि जो तुम्हें चाट के चले गए हैं 76 साल से अभी तक, तुमने उनके लिए क्या किया है इस मुल्क के गवर्नमेंट की बात? भाई मैं अपनी गवर्नमेंट की बात करूंगा जो तुम्हें चाट के चले गए हैं, जो तुम्हें खा पी गए हैं, जो तुम्हें खत्म कर रहे हैं, जो गुर्बत की लकीर को खत्म करने आए थे, गरीब को खत्म कर रहे हैं, उनके लिए हमने क्या किया है? इस मेजोरिटी ने क्या किया है? हमारे इन लोगों ने इकट्ठे होकर क्या किया है? छितर के डर से
भाई 26 को एक हादसा हो गया डी चौक में। हम अपने हकूक के लिए निकले थे, हमारे पंजाब का मैंडेट के ऊपर डाका पड़ा था। पंजाब के मैंडेट पे डाका, हम अपने हकूक के लिए नहीं निकले। पब्लिक में ये पब्लिक बोल नहीं रही, ये पब्लिक इधर भाई मौजूद थे, भाई वो अपने जज्बात का इजहार कर रही है कि हम ये कर सकते हैं, हम कर लेंगे, कानून हाथ में ले लें, पता कर लेंगे। अच्छा, हम इसराइल भी पता कर लेंगे। हम पाकिस्तान से जब बैठ के दुनिया के अपने हर दुश्मन को पता कर सकते हैं। हम अपने जज्बातों से तो हम बातें कर सकते हैं। यूनिटी होनी चाहिए, थोड़ी सी ना इत्तेहाद होना चाहिए। हमारे अंदर इतना तो इत्तेहाद है ना कि हम एक दूसरे की जान को छुड़ा लें। इतनी महंगाई हो रही है, बिल कहाँ से कहाँ चले गए हैं। इस हुकूमत को उतार के दिखाए ना मुझे, दिखाए मुझे इस हुकूमत को उतार के। अगर हमारे अंदर इतने जाने हैं तो उतारे मुझे, बैठे एमएलए एमपीएस, हमें अल्हम्दुलिल्लाह इनको आपको बिल की इनको मुझे लगता है बिल बहुत ज्यादा आ गया। मैं भाई बिल नहीं आया, मैं 60,000 रुपया सैलरी लेने वाला बंदा था। ना आपके मुल्क में इम्पोर्ट रही, ना आपके मुल्क में एक्सपोर्ट रही, ना आपके मुल्क में बिजनेस रहा, ना इंडस्ट्री रही। हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो यहाँ से मुल्क छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे। पाकिस्तान का सरमायादार यहाँ से चला गया भाई। मैं जज्बात में आके अगर बात करूंगा तो मैं अपने लोगों को उठाने की बात तो करूंगा। अच्छा, मैं किसी और से कुछ नहीं कहूंगा। हम ऐसा फतह कर जाएंगे कि हमें हमारे अपने ही जो है वो फतह करके बैठे हुए हैं। आपको पता है, हमें सब पता कर जाएंगे। थोड़ा सा होश के नाखून ले, हमें फतह की जरूरत है। पहले अपनों से फतह की जरूरत है। हमें आटा नहीं मिल रहा, टाइम पे घी नहीं मिल रहा, हमें पेट्रोल में कहाँ है आलमी मंडी में कीमत पेट्रोल की, जानते हैं आप लोग कहाँ पे है? महंगाई की सूरत हाल आप देख लें, आप इनकी प्रायोरिटीज देख लें कि बजट जो है, जो हमारे प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं, जो डेवलपमेंटल सेक्टर है, उसमें कम से कम किया जा रहा है और नॉन डेवलपमेंटल में बढ़ाया चला जा रहा है। फॉरेन रिलेशंस का बुरा हाल है इस वक्त। पाकिस्तानियों को बहुत से मुल्क जो किसी जमाने में वीजा दे दिया करते थे, अब उन्होंने भी हाथ खींच लिया है। तो पासपोर्ट हमारा 4th वर्स्ट पासपोर्ट है दुनिया में। तो ये सारी चीजें जाहिर करती हैं कि मुल्क के अंदर जो अवाम के दिलों में हुकूमत के लिए और जो हुकूमती इदारे हैं और जो हुकूमत करने वाले लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उनके लिए ज़रा भी इज्जत नहीं है। आप जाएं बाजार में पूछें, किसी बंदे से पूछ लें, यार तुम्हारा क्या ख्याल है इस हुकूमत के बारे में, तुम मुतमईन हो इनकी पॉलिसी से? कोई नहीं कहेगा आपको कि जी वो मुतमईन है। फिर फॉरेन रिलेशंस आप देख लें, फॉरेन रिलेशंस में भी बुरा हाल है हमारा। पूरे इस रीजन में हमारे तल्लकात दुरुस्त नहीं है किसी के साथ इस वक्त। Modi, 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 Modi. Love India, you Indians are just great. And when Indian prime ministers go to any country of the world, they get a red carpet welcome. Argentina had made all the preparations to welcome Prime Minister Modi. As soon as he reached Argentina's capital Buenos Aires, he was given a grand traditional welcome. He was given a guard of honor. The prime minister of that country or the president of that country or the king of that country comes to receive him near his plane. Football diplomacy will take the relations between the two countries to a new dimension. Wake up in the morning and get such a welcome as if you went to this country. Sir, in the evening the news comes that you have received an award. You have seen an interesting thing. The last time I went to two countries, I addressed their parliaments. I addressed the parliaments. I used to come running to the parliaments to shake hands with Modi ji. Yes, brother, he is a great leader, isn't he? When our prime minister goes to any country of the world, their prime ministers do not like to meet him. They are big leaders. When they leave their country once, they do not go to just one country. They go to 2, 3, 4 or 5 countries. So Modi Sahab also does a series of visits in the same way. This is how he acts and behaves. Some here also because big countries and Argentina also need a lot of money at this time, so India may invest there as well. Brother, India has money at this time. What was India before? Now as an investor goes to India. Now we Pakistanis mean our PM can be anyone. We go to ask for money, which is a simple thing. The Prime Minister of India goes there to invest. Wherever our Prime Minister goes, Pakistanis are present there. Why don't they welcome him? On the contrary, they are seen protesting against him. My question is that if Shahbaz Sharif goes, like the Indian Prime Minister went there,
Then slogans were raised there. Modi Hai to Mumkin Hai slogans were raised there. Now you are not even being given the right to speak properly. If someone raises his voice, the next day a press conference has to be held or something. Jai Hind, friends. So friends, everyone is surprised to hear the slogans of Modi Modi on the land of world-famous footballer Lionel Messi. That's right. In the morning I woke up and I was so welcomed when I went to this country. Sir, in the evening the news comes that I got an award. You have seen an interesting thing that in the two countries that went behind, I also gave this award from their parliament. I gave the award from the parliament. People used to come running to the parliament to shake hands with Modi ji. Yes, brother, a big leader went with him. It is a very big thing, friend. Brother and Modi ji have gone here because China is fighting with them for minerals and whatnot. So India is also here because China and Argentina also need a lot of money at this time, so India will probably invest there too. Brother, India has money at this time. What used to happen to India earlier as an investor, now we Pakistanis mean that our PM or anyone else, we go to ask for money, which is a simple thing, the PM of India goes there to invest. Look, first Shankar Sir goes there, he talks to them, does all the dealings etc. Then after that Modi ji goes and stamps it, brother, this is done, he gives them investment, and the biggest thing is that whatever countries you invest in, if you maintain good relations with them, that country will respect you a lot. We will be useful to you everywhere. We have not thought of this thing till date. Believe me, we have thought only this, brother, only money, we have done it with money. This is what happens to us, we don't try to make it. India is doing it because India, friend, what is ours now? We know that we cannot become a superpower, which is a very simple thing. It is a simple thing. The rest of the countries know that they cannot become a superpower. India knows that it wants to become a superpower. It may take 30 years or 40 years to become a superpower, but it definitely has to become one. India knows that it wants to become a superpower, so India will have a different attitude, ours will be different, which is a simple thing. This is the thing, we cannot blame Pakistan for this, that why we are not visiting, we are not needed at all. I leave aside some Pakistani people who are good people, who have a big thinking, I tell our Pakistanis accept those people. We have never thought about how we will take our country forward. We have not thought about this till date. Ask every child of India, he will say that we want to become a superpower. This is the difference between us and them. They spoke against it on TikTok. They did this, they did that. Those children grow up a little. They are interested in it. In science, they go towards science. They go towards something else. Now, in fact, Prime Minister Modi reached the American country Argentina on Friday evening as part of his two-day tour. Argentina is the same country which the whole world knows because of its football dominance, because Argentina comes second after Brazil in terms of winning the most number of football World Cups in the whole world, and now this same Argentina is continuously strengthening its relations with India. When Prime Minister Modi reached Argentina, he was given a grand traditional welcome here. He was given the Guard of Honor at Aziz International Airport. After this, when he reached the hotel, the members of the Indian community also welcomed him enthusiastically by raising slogans of Modi Modi and Bharat Mata Ki Jai. Along with this, Prime Minister Modi was felicitated with a cultural dance program. This visit of Prime Minister Modi to Argentina is important in many ways because for the first time in 57 years, an Indian Prime Minister has visited Argentina for a bilateral visit. However, before this, Prime Minister Modi had gone to Argentina in the year 2018 to be a part of the G20 summit. This is the first official bilateral visit of Prime Minister Modi, but Foreign Minister S. Jaishankar Sahib has already made a bilateral visit before this. Let us tell you that there is a trade of about $5 billion between Argentina and India, and both the countries want to increase it rapidly. Argentina is also a very important country for India in terms of resources because Argentina is a part of the lithium triangle. That is, Argentina is one of the 3 countries that have the highest reserves of lithium, and this lithium of Argentina will prove to be very helpful in making India's zero-carbon policy successful. Let's say that it has happened because Narendra Modi has made up his mind and say that we will see his rule coming back to the BJP party, and say that what cannot a person who can show his eyes to America do? See,
There are only a few people who can show their eyes to America. I have seen only a few people in the world who can show their eyes to America, and they have proven steps. See, anyone can show their eyes to anyone and later apologize. Later they start getting blackmailed. Later they kneel before them. But I found India to be the only country that has shown its eyes to America. It did not listen to any of its words. It has denied everything. There are many such cases which we have taken up with that issue 1,000 times. We denied it at big places, but it did not kneel. It always stood firmly. You can see before it today, when a person is powerful, when a person is strong, when he thinks for his people, not just for himself, then those countries prosper, they grow. Look at India today. I always used to say in the videos, madam, that Indian people are proud, but their prime minister plays a very important role in making their people proud. See, when the elder of your family is proud, then your children will automatically become proud. What is pride is that when our prime minister goes to any country of the world, their prime minister does not like to meet him. He does not come to receive him at the airport. They say, friend, a beggar has come. We will give him protocol. Then he has to ask something from us. And when Indian prime ministers go to any country of the world, then they get a red carpet welcome. The prime minister of that country or the president of that country or the king of that country comes to receive them near their plane. They get protocol. Now this does not happen the way it happens here, that the prime minister of Saudi Arabia or their king, who is their mastermind, Suleiman, visits India and passes over Pakistan, and we are getting only this lollipop. We are coming, we will come, and our prime minister is waiting. Well, I am going to give you another big news, madam, that a big change is going to come in the world at this time. Such a change is going to come in politics, in the politics of the world, in the wars of the world, and you will see it soon. Just a few years ago you must have heard that there is enmity between Saudi Arabia and Iran. They are such big enemies that they can have a war at any time. That is, they are such big enemies. Then the president of Iran and the king of Saudi Arabia patched up with each other. They met. They became friends with each other. Like your India has gone so far ahead in technology that today there is no comparison between them and us. You know that when Prime Minister Narendra Modi is making a statement in India and Pakistan is mentioned, he says that we do not even want to talk about Pakistan. That Means R in their graph means that they feel that Pakistan does not have that kind of graph now, that we can take their name or talk to them, or we can be hostile towards them, or we can bring Pakistan to the level of enmity. Now Pakistan does not have that kind of graph, madam. So they think this. Recently I was listening to a statement at a place and there the question of Pakistan came up. Then Modi Sahab said that you should not talk about Pakistan. They are not at that level with us. Meaning, we feel embarrassed in this. As a Pakistani, we feel ashamed that our leaders, our prime ministers, whom we placed on our heads, to whom we paid such huge taxes, today we have been disgraced in the world to such an extent that our name is not taken in the world. Our neighbors do not like to take our name. It means that you have brought us to this level, so you should also feel a little ashamed. You people maintain your own respect. You should also maintain the respect of Pakistan. Maintain Pakistan as well. If someone speaks against your elders, against your father, then you will feel very bad. If someone is speaking against Pakistan, then you do not feel bad. So Pakistan as well. और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। ऑपरेशन सिंदूर पर उपसेना प्रमुख का बयान आ गया है। बॉर्डर पर हम 3 दुश्मनों से लड़े, तीन दुश्मनों से हम लड़े। भारत ने चीन, पाकिस्तान, तुर्की को हराया है। One border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say 3 actually. Turkey, China, providing all possible support. Statement आया from General Rahul Singh without endorsement of the establishment ये नहीं आ सकता. इसमें this means this is not a random statement. कोई आर्मी के टॉप लेवल के कोई अगर बोलता है ना चाइना का नाम ओपनली ले रहा है, that means there is political endorsement to that statement. वजीर दिफा ने भी फरमाया एक टीवी चैनल पे बात करते हुए कि जी खतरा मौजूद है अभी भी भारत की तरफ से. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट. हमारे जो डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कायदे से भारत ने 3 देशों को हराया है। बॉर्डर एक था, ऑपरेशन भी एक था, लेकिन चाइना को सबसे करारी मात दी है। बड़ी स्टेटमेंट है कि चाइना लिटरली अपने वेपन्स टेस्ट कर रहा है अगेंस्ट
many air defense systems जब पाकिस्तान को ये वेपन पकड़ा देते हैं to use against India? अगला पॉइंट सुन ले सर। अगला पॉइंट ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो दुनिया में कुछ जानता ही नहीं है। आपके पल्ले तो है ही कुछ नहीं, आपसे मुज़ाकरात क्या करें। वो डोनाल्ड ट्रंप भी हमारे आर्मी चीफ को जो है बुला, वो हमारे वजीर दिफा को तो नहीं बुलाता। पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे। पाकिस्तान भी समझ गया है ये चीन सब डुप्लीकेट माल देता है और इसीलिए मुनीर अमेरिका भागा कि हमको आप स्टेट ऑफ द आर्ट एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी दो, ये दो, वो दो, मिसाइल दो, क्योंकि वो तो पता चल गया है कि चीन का तो कोई काम करेगा नहीं, हम तो मर जाएंगे। हिंदुस्तान ने इस बार तो छोड़ दिया, अगली बार तो छोड़ेगा नहीं। जय हिंद। तो दोस्तों, भारत ने एक साथ 3 दुश्मनों को ठोका। इंडियन आर्मी की तरफ से एक ऐसा बयान आया है जिसको सुनने के बाद पूरी दुनिया शॉक्ड हो चुकी है। पहले वीडियो देखेंगे, फिर बात करेंगे इस वीडियो के बारे में कि आखिर क्या है मामला। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। जो डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कायदे से भारत ने 3 देशों को हराया है। बॉर्डर एक था, ऑपरेशन भी एक था, लेकिन चाइना को सबसे ज्यादा करारी मात दी है। सर, चाइना सारी खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था, जबकि डीजीएमओ स्तर की बातचीत जो हो रही थी उस वक्त भी जानकारी दे रहा था। देखिए, चाइना के करीब कोई कहता है 115 सैटेलाइट, कोई कहता है 150 सैटेलाइट। मान लीजिए 115 सैटेलाइट की भी बात करें तो सैटेलाइट से हिंदुस्तान के पूरे मूवमेंट, ट्रुप्स मूवमेंट, इक्विपमेंट मूवमेंट, सब पर चाइना की दृष्टि लगी हुई थी और वो रियल टाइम सिस्टम इंटेलिजेंस दे रहा था पाकिस्तान को। और इसीलिए जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से बात किया तो उसने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा कि हमको पता है कि आप जो वेक्टर को इस्तेमाल करना चाहते हैं हमारे खिलाफ, कृपया वो मत कीजिए। शांति की बात करते हैं हम लोग, सीज फायर करते हैं। इसका मतलब है किसने उसके कान में ये बात डाली कि हिंदुस्तान एक वेक्टर इस्तेमाल करने जा रहा है जो बहुत खतरनाक होगा। स्वाभाविक है, चीन है, चीन का सैटेलाइट हमको सब मॉनिटर कर रहा था। तो एक तो पाकिस्तान तो खाली एक ज्योग्राफिकली, भौगोलिक रूप से युद्ध भूमि था पाकिस्तान, लेकिन उस युद्ध भूमि में कौन कौन सपोर्ट कर रहे थे? चाइना अपना सैटेलाइट के माध्यम से रियल टाइम इंटेलिजेंस, इक्विपमेंट सपोर्ट। 81% जो पाकिस्तान के पास मिलिट्री इक्विपमेंट है वो चाइना का है और करीब 20% या 19% करीब बांग्लादेश में जाता है। तो ये दोनों फकीर देश को तो चाइना अपना इक्विपमेंट बेचता है। तीसरा चीज जो एम था कि चाइना बहुत स्मार्ट गेम खेल रहा था कि इक्विपमेंट उसने पाकिस्तान को दिया और पाकिस्तान को एक लेबोरेटरी की तरह इस्तेमाल किया कि यदि पाकिस्तान उसके इक्विपमेंट को सफलपूर्वक परफॉर्म करने में सफल हो जाता तो वो दुनिया में, अफ्रीका में इस समय ढिढोर पीटा चीन, चाइना, देखो मेरा मिलिट्री इक्विपमेंट तो बैटल टेस्टेड है और कितना सफल इक्विपमेंट है, इसलिए तुम हमसे खरीदो। लेकिन उसका बैड लक हुआ कि हमने उसके मिलिट्री इक्विपमेंट की ऐसी धज्जी उड़ाई है कि अब अफ्रीका में कोई नहीं खरीदेगा मिलिट्री इक्विपमेंट। अब पाकिस्तान भी समझ गया है ये चीन सब डुप्लीकेट माल देता है। और वाइस चीफ ने कल लिटरली ही थ्रू अ बॉम्बशेल, एंड जिस तरह की बातें उन्होंने बड़ा क्लियरली बोली उससे तो ऐसा दिखता है कि साहब देयर इज अ वेरी क्लियर इंटेंट ऑफ भारत टू नॉट कीप क्वाइट अवे, ठीक है। और जिस तरह के एक्सपोजेस उन्होंने करे हैं, एंड ही नेम्ड इंडियन आर्मी इज नॉट नोन, ये तो हमको सबको पता है कि इंडियन आर्मी इज बड़ी क्वाइट अपना काम करते हैं ये लोग, दे आर नॉट नोन टू मेक बिग स्टेटमेंट्स एंड दिस एंड दैट। बट कल जिस तरह का स्टेटमेंट पाकिस्तान में चाइना एंड टर्की के ऊपर दिया गया, पाकिस्तान के लिए और चाइना और टर्की के लिए जो कोल्यूजन के बारे में बताया गया, दैट वाज वेरी सिग्निफिकेंट। एंड ये चीज हमको थोड़ी समझ में आनी चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट, भारत क्या सिग्नल करने की कोशिश कर रहा है, एंड लेट्स टेक द गेम फॉरवर्ड। परिकित भाई नमस्कार, वेलकम टू शो। नमस्कार। मुझे लगता है कि देखिए ऑन ग्राउंड एज सच यू विल नॉट सी एनी मेजर विजिबल चेंज, और जो इंडिया कर रहा था वही करेगा, बट इट इज लाइक टेलिंग द चाइनीज एंड द टर्किश एस्टैब्लिशमेंट कि ये जो इंडिया को बहुत साल से पता था और इंडिया इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता था, बट अब खुले में बात कर रहा है कि ये जो, क्योंकि तुम ये गेम खेल रहे हो और पाकिस्तान इज जस्ट द फ्रंट फेस। इनफैक्ट जनरल राहुल सिंह ने पहले उन्होंने कहा 3 एंड पहले उन्होंने 4 कहा, फिर उन्होंने कहा 3,
मतलब पाकिस्तान के साथ, he actually mentioned Turkey and China. The fourth one, we all understand who the country is. चौथा कौन था यार? आपके हिसाब में कौन था? Who was it? Who was it? It's US और क्या? अच्छा, It's America. Oh, really? अमेरिका? Oh. So, but and yes, he then said कि not four, three adversaries. And ठीक है, that's a sensible thing to do. There's no point taking USA's name. But it's a reality ना, सबसे बड़ा ally तो पाकिस्तान का US ही हो रहा है. तो उन्होंने दो चीज कहा कि 81% जो डिफेंस आर्सेनल है चाइना के, पिछले 5 साल में जो प्रोक्योर किया पाकिस्तान, मतलब 81% पाकिस्तान ने जो प्रोक्योर किया पिछले 5 साल में वो चाइनीज ओरिजिन के. और उन्होंने ये भी कहा कि टर्की किस तरह से रश किया वेपन सिस्टम्स और मैन पावर एट द लास्ट मोमेंट. और ये भी उन्होंने मेंशन किया वेरी इंटरेस्टिंगली कि डीजीएमओ लेवल का जब बात चल रहा था तो पाकिस्तान की तरफ से ये बोला जा रहा था कि तुम्हारे this and this vector, you can say the fighter planes are armed and they're probably going to come towards Pakistan, so you please stop it. तो इन्होंने कहा कि this kind of statement पाकिस्तान से दिया जा रहा था. Invariably, some of the targets जो था, some of the production facilities of Pakistan Air Force के GF-17 वाला, that was under target. And यहाँ पे जिस वेक्टर की बात की जा रही है, most probably it was a BrahMos armed, a Sukhoi armed with BrahMos, air launched BrahMos. दोस्तों आप लोग जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान का जो हश्र किया वो पाकिस्तान तो कभी भी नहीं भूलने वाला है. साथ ही दोस्तों भारत ने एक नहीं बल्कि तीन दुश्मनों का सामना किया जो भले ही पाकिस्तान के समर्थन पर खुलकर नहीं खड़े थे, लेकिन दोस्तों वो पाकिस्तान को हथियारों की बदौलत मदद जरूर दे रहे थे. और दोस्तों ये न्यूज ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी आई थी और तुर्की के ड्रोन इस्तेमाल किए गए थे और चाइनीज जो डिफेंस सिस्टम है वो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था. और उसके अलावा भी चाइना पल पल की खबर भी पाकिस्तानी आर्मी को दे रहा था. इससे समझ में आता है कि भारत एक नहीं बल्कि तीन दुश्मनों का सामना कर रहा था. उसी को लेकर के इंडियन आर्मी के जो पूर्व जनरल है उन्होंने बहुत ही सजगता से इस पर बयान दिया और बताया कि भारत ने एक नहीं बल्कि तीन दुश्मनों का सामना किया. और दोस्तों ये सुनने के बाद ये समझ में आता है कि तीन दुश्मन होकर के चीन जो बड़ी शक्ति अपने आप को बोलता है वो भी भारत को मात नहीं. Important news. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has a big statement regarding the trade deal. Commerce Minister Piyush Goyal has made a big statement regarding the trade deal. He has clearly said that India is not going to do any deal under the pressure of any deadline. Let's listen. US President refuses to extend the July 9th deadline for trade issues with various countries. In a conversation with the media, he said that there is a possibility of a deal with India. He has clarified that at present there is no plan to go to America to discuss the trade deal. Piyush Goyal said that the trade deal will not be signed under any strict deadline. He also said that national interests will be the top priority in this deal. Piyush Goyal stressed that no deal will be done until the mutual benefit situation between the two sides becomes clear and a consensus is reached. So this is the big news of the moment. America was putting a lot of pressure on India to do a trade deal. Do it by July 9th. The deadline is July 9th. 9. You know India has told America to wait, dear. This matter will not work with threats. A statement was issued. A statement of the Commerce Ministry was issued. Sir. What Modi ji has done today with America, I swear to God, no leader of the world would have done till date. Modi ji kicked Trump hard in the backside and brother, they are not getting along, everyone resigned, fighting among themselves, Modi ji played his charak nitty. Look friend. This is called the sharp mind of an Indian, brother, he made Trump's backside red, that means no kind of pressure will be tolerated. The stage is set, two global powers are face to face, the issue is of trade. America wants India to open its agriculture and dairy market for the US so that American products can get a big market like India. But the question is, will India hand over the rights of its farmers to foreign markets? No,
India's stand is very strict. Inshallah Rana Snow sir. These are very interesting developments. How much danger is there that you can pose on the borders from the Indian side because the statements coming from there are an extremist mindset that is ruling India at the moment? Going forward, how do you see how you will capitalize on this? Piyush Goyal also said that nation free will be the top priority in this deal. Piyush Goyal stressed that no deal will be done until the mutual benefit situation between the two sides is clear and a consensus is reached. India is adamant on its stand of not opening the agriculture and dairy sectors completely for the US. Along with this, India has also demanded more access to labor-intensive industries like textiles, gems and jewelry, leather goods, plastics and chemicals. The question is, what does America want? America wants India to completely open its agriculture and dairy market for the US, so that American products related to this sector can get a big market like India. However, the government led by Prime Minister Narendra Modi appeared to be taking a tough stand against the demand being made by the US. The Commerce Minister said in an interview that India never negotiates trade deals with a dead life, that any trade deal that we are going to negotiate will be done only if it is in the interest of both. We are not going to do any deal out of fear of any deadline. Isn't it the 56-inch thing? This is completely the 56-inch thing. And India managed it very carefully, very smartly and with great thought and understanding. While we are talking about the trade relations between India and America, let us also tell you that India imposes 100% tariff on some American agri-products and America is demanding to end it. That is, America wants to trade with India without any tariff. This is because if this happens, then Indian farmers will suffer and they will not get the right price for their produce. Show it. Khawaja Sahab, Washington never changes its line without its foreign policy interest. It is unconventional politics and he himself says that President United States. So I think that in this situation, if we become a spectator and do not become a player in it, then it will be a big mistake. You are going to become a player. We are the player. At this time you are MTR. What will you do if there is pressure on Ibrahim Records? In my few years, I used to feel that people look at us and think that they have come again to ask for money on loan. I once had an interaction with General Bawa on that background. So he made a similar comment that we go and say joppy wappy batty. But they are thinking that they have come and will talk about money again. So I think that due to this, America is repeatedly putting pressure on India and India is not accepting that pressure. India is putting pressure on America to open up the sectors which it has reserved or has put obstacles in. Now India has done another thing. Yes. The second thing India has done is that it has given notice to WTO that we will withdraw all the concessions we have given to the US in the steel sector, etc. And we will impose additional tariffs of $725 million. Why? Because the US has also imposed similar tariffs. See, there is a multilateral mechanism through WTO and World Trade Organization through which all countries should go. But since Trump Babu has come, he has made tariffs a kind of weapon and he does not care about WTO. Leave alone WTO, he does not care about any multilateral institution. He will look after his own interest. Umair Sahab, this should be discussed openly. On what terms should the engagement be? Because we have a long history of being allied with America and then imposing sanctions. Now this Abraham Records phenomenon is also a phenomenon which many Muslim countries have already gone through in the last era of Trump. Now it is the turn of Saudi Arabia and Pakistan. Look, the pressure of the New World Order is building up. In fact, it is said that now banners have also started appearing on television. So these things should be enough to make us pay attention. What should we say? Why? What happened that when we started from such good relations, then straight away our effigies were burnt? Are you understanding the point? So how did this crackdown come? What has actually happened? Okay. And America has imposed the so-called 10% tariff.
Okay. Then reciprocal tariffs on 57 nations, and it is heard that things are getting better among them. Now listen, I think there was a talk of 26% tax. Okay. And India managed it very carefully and smartly. Hello friends. So friends, India has given a tight slap to America. Because India has clearly told friends in clear words that we will not do any such trade deal in which our country suffers loss. Our country's farmers suffer loss. For that, India is not afraid of any kind of American deadline which America threatens that friends, the trade deadline is till the 9th of July. India has made it clear that we have no intention of going to America right now, and we are not afraid of deadlines either. Friends, actually the matter is stuck on the fact that America wants India to open its markets for America, especially for dairy and agri-products. But friends, this is not good for India at all, and if India opens America's dairy products, research has shown that American dairy products contain meat. If we buy anything from there, milk, cheese. Because friends, these people feed meat to the cows there. So if seen from religious point of view, it becomes impure for India, and here cows are considered like mother and friends. Their milk is considered absolutely pure. They are not fed meat. So friends, citing its religious cultures, India is not ready to agree on dairy products, and India is not agreeing on agricultural products also, because if India does this, the future of Indian farmers will be in danger. The market for them will be completely finished, because friends, America will sell its goods here so cheaply that it will create a big problem for the farmers here. That is why the Indian government is not ready to accept these two conditions. Because of this deal is stuck. So friends, let's see what happens next. If the video is good, then like and share the video, and also subscribe to the channel. Okay. Now what did Trump Sahab do on top of it that he said that he will impose a 20% tariff on Apple? If you manufacture iPhone in India, is that okay? And he called Team Coke and said that I don't want you to build this in India. If you want to take care of India, go away. I will impose a 25% tariff. Whatever production will be done from India. Earlier there was friend shoring, near shoring, now they are imposing a 25% tariff. But just letting you know, do you understand? Now India also has to do this work. Now the 4-day war has started. He said that I have got the ceasefire done. India rejects it. And India says that we ended the operation away from Pakistan on Pakistan's request. Vikram Misri Sahab, who spoke in Canada, said that India had agreed to the ceasefire. There was no such deal of butter trade in it. So Modi Sahab is very angry, and Trump is even more angry than him. मध्यम वर्ग हो, आज महंगाई की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। आप हमारे पड़ोस में ही देखें तो पाकिस्तान में याद दिलाते हैं आपको कि भड़कती महंगाई पर तेल छिड़क दिया गया है। रात गए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से बड़ा इजाफा किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा मुतवक्के। गरीब आवाम के लिए बुरी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा मुतवक्के। आलमी मार्केट में खाम शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया जाने वाला इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहरियों ने कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ फराहम करे, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस अशिया खुरोनोश की कीमत क्वालिटी भी चेक कर लें। आप इंडियन गवर्नमेंट के बारे में क्या कहते हैं? इंडिया के अंदर हर चीज सस्ती है, वहाँ पे सब्जियां भी सस्ती हैं, फ्रूट भी सस्ता है, हर चीज सस्ती है। यार उनका हुकूमत उनको फैसिलिटीज दे रहा है ना, हमारा हुकूमत हमको फैसिलिटी नहीं दे रहे तो हम कहाँ से सस्ता करेंगे? महंगा होते है मंडी में, इधर जब लाते ग्राहक ले नहीं सकते, हर चीज महंगा है, हर चीज हालात बहुत खराब है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले इंडिया में से सब्जी खरीदी जाती थी पाकिस्तान के अंदर, टमाटर, प्याज, खास करके टमाटर, प्याज, आलू वगैरह, और बहुत ज्यादा कम प्राइस होते थे पाकिस्तान के अंदर। इंडियन पंजाब से पाकिस्तान के अंदर आती थी सब्जियां, उससे प्राइस कम थे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर प्राइस बहुत ज्यादा हाई फाई है। गरीब बंदे की पहुंच से बहुत ज्यादा बाहर हो गए पाकिस्तान के अंदर सब्जी के प्राइस। चैन कर रहे हैं लोग। पेट्रोल के बारे में तो ये बताएं कि वो ईरान की जो जंग हुई है ना, वो तो खत्म हो गई, मगर पाकिस्तान की जंग कभी ना खत्म होने वाली जंग है। यहाँ पे पेट्रोल नहीं, यहाँ पे जरूरतें बिकती है, लोगों की मजबूरियां खरीदी जाती हैं।
उनको एक बहाना मिल गया जंग का कि चलो जंग के बहाने आवाम की जेबें टटोलो। बस क्या करे गरीब आदमी, बस जैसे इनकी आने के मर्जी चलती है करते रहते हैं। भाईजान देखो, ये बड़ा हमारी हुकूमत बहुत गलत कर रही है। पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है। हम गरीब बंदे 30,000 रुपए तनख्वाह में हम क्या करेंगे? घर का बिजली का बिल भरे, किराया भरे, पेट्रोल यहाँ पे लेके आए, क्या लेके आए? हुक्मरान, हम 100 प्याज भी खाएंगे और 100 जूते भी खाएंगे। खुदा के लिए अपनी यशकें छोड़ दे हुक्मरान। अवाम का आप जहाँ तक आ चुके हैं, कहीं पैमाना लबरेज ना हो जाए अवाम का। ठीक है, कल को आपका गिरेबान होगा और हमारा हाथ होगा। हमारी रोटी है, सब्जी है, चावल, क्या खाएंगे बताएं? कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट को इतना आसानी करें। पेट्रोल महंगा होने से ना सब्जियां हर चीज महंगी हो गई। गरीब बंदा कहाँ जाए? पेट्रोल महंगा करते हैं तो हर चीज के किराए 50-50 रुपए बढ़ जाते हैं, और अगर 2 रुपए 4 रुपए सस्ता करते हैं तो कोई चीज कभी सस्ती नहीं की जाती। अवाम तो मार देना इन लोगों ने। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना कितना मुश्किल है। एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही आज। अब तो ये सूरत हाल हो गई है, एक वक्त की रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गया। तो अब 4 से 5 हज़ार रुपया एक दिन का खर्चा है एक मामूली सी फैमिली का। तो आमदनी जो हो रही है वो 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार रुपया। बड़ा मुश्किल है, डबल एक्सपेंडिचर है। उस दिन से गरीब कभी पेट्रोल से मर रहा है और कभी किसी और महंगाई से मर रहा है। हर चीज महंगी की हुई है इन्होंने। तो इस हुकूमत से तो अब जो है हमारा दिल खट्टा हो गया है, दिल बर्दाश्त हो चुके हैं हम लोग। मैं ये कहूंगा, ये जो जालिम आए मौजूदा, इन जालिमों के आगे हम ये अपील करते हैं, जालिमों आयो तो कुछ मुल्क का बनाओ। अगर ये हमें सब हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि दोस्तों पाकिस्तान के अंदर महंगाई का परचम लहरा चुका है। और दोस्तों इनका पेट्रोल तो इतना महंगा हो गया है कि भाई पूछो मत। और इनकी और दूसरी चीज़ें भी हैं भैया, वो भी बहुत महंगी हो चुकी है। अब इनकी हालत ये हो गई है कि ये बोल रहे हैं खुद ही कि भैया ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने सब्जी वगैरह और भी बहुत जो रोज़ की मर्रा की इनकी चीज़ें वो बंद कर दी हैं जब से पाकिस्तान के अंदर और महंगाई हो गई है। दोस्तों अब ये भारत से पंगा लेने की नहीं सोचेंगे, इनकी हालत इतनी ज़्यादा डाउन हो गई। इनके लिए खाने की एक टाइम की रोटी नहीं है। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, बेचारा वो बोल रहा था कि 2 टाइम की छोड़ो, 1 टाइम के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। मतलब पाकिस्तान इतना, ये समझ लो इस समय बहुत गरीबी के क्राइसिस से गुजर रहा है और बहुत हालत ख़राब हो चुकी है पाकिस्तान की। क्योंकि दोस्तों को युद्ध लड़ना है, युद्ध लड़ने के लिए पैसा ख़राब होता है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी पाकिस्तान की? इन्हीं का खून चूसेगी। अब इन्हीं से अभी ये वाहवाही लूट रहे थे, अब इन्हीं का खून चूसेगी, इन्हीं से पैसे निकाल के फिर इनका लूट लाट के फिर बोलेगी देखो हमने युद्ध जीता। ऐसे बकवास करते रहते हैं। दोस्तों वीडियो आगे देखते हैं पाकिस्तान का रिएक्शन। हमें इंडिया से कोई डर नहीं लगता। ये पेट्रोल से डर लगता है। इंडिया से हमें कोई नहीं, हम इंडिया के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। लड़ना भी क्यों है? वो अपनी जगह काम करें, जो कर रहे हैं हम अपनी जगह करें, लेकिन डर नहीं है। लेकिन वो दहशतगर्दी खत्म करे। अच्छा, पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म करे। आपसे एक सवाल और पूछूंगा, 1 मिनट बस रुकिए। आपको इंडिया के बम से डर लगता है या पेट्रोल के बम से डर लगता है? पेट्रोल से। इंडिया से नहीं लगता। ठीक है, ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि भाई हम पूरी दुनिया से, ये पब्लिक जो है वो लड़ लेती है, लेकिन जो आप ही अगर महंगाई कर देंगे तो पब्लिक जो है वो परेशान होगी। गवर्नमेंट को आप पैगाम देने लगे थे जरा। हम ये पैगाम दे रहे हैं मरियम नवाज साहबा को, हम ये पैगाम देते हैं कि इन जो गरीब है ना, इनका सोचे, क्या सोचे? वो कहते हैं हम दिन रात सोच रहे हैं, लेकिन नहीं, जो बड़े लोग हैं उनके लिए सोच रहे हैं, गरीबों के लिए नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, गरीबों के लिए सोचे। ठीक हो गया। ये अच्छे काम करेंगे तो अवाम इनको आगे भी लेकर आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, अवाम पाकिस्तान के साथ खड़ी है। बिल्कुल, फौज के साथ खड़ी है, इनके साथ खड़ी है। ठीक है, लेकिन ये हमारे साथ खड़े हैं या नहीं? ये हमारे साथ खड़े हों, इंशाल्लाह अवाम इनके साथ खड़ेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे? अंकल ने तो बड़ी गुस्से से, बड़ी जज्बात से बात की और धड़ल्ले से बात की। आप क्या कहते हैं? ये पेट्रोल महंगा हो गया है, इससे क्या फर्क पड़ेगा आम आदमी की जिंदगी पे? ये जो पेट्रोल पंप गिर गया है, सबको फर्क पड़ेगा। क्या? लेकिन यही बम महंगाई का। अच्छा, बस ये खत्म कर दो बम। ये खत्म होना चाहिए। गवर्नमेंट को कोई पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा, ये जो बम है ना महंगाई का, ये बहुत खतरनाक है, ये खत्म। नहीं, गवर्नमेंट क्या करे इसके ऊपर, कैसे खत्म करे? वो कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे कीमतें बढ़ रही हैं। सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन बहुत गरीबों के जज्बातों से खेल रहे हैं। आपके ख्याल से दूसरे जो कंट्रीज, गवर्नमेंट तो कहती है हम शहरियों का सोच रहे हैं, हम आवाम का सोच रहे हैं, पंजाब हुकूमत जिंदाबाद। ये तो सब आपके सामने है, कितना सोच रहे हैं, इतना देते नहीं, जितना ले लेते हैं। बिजली के बिल वो इतने ज्यादा आ रहे हैं, गैस के बिल वो आ रहे हैं, पानी आ नहीं रहा, पानी के बिल भी आ रहे हैं, फिर आप आटा भी महंगा कर रहे हैं, हर चीज तो बढ़ती जा रही है अंकल। क्या क्या सकते हैं?
मर्जी है हुकूमत की। कोई पैगाम, कोई मुतालबा करना चाहेंगे? हुकूमत का अपना खुद अपना समझदार है, अपना गरीब का कुछ सोचे, अवाम का कुछ सोचे। कोई एक मुतालबा के भाई साहब सोच लो, हमारा भी कुछ कर लो, हम भी ख्याल करो हमारा। एक तो ये अपना 200 रुपए का जो अपना रखा हुआ यूनिट का अपना, उसको वो कम करे। जो 201 होगा तो अपना 6,000 रुपये पड़ जाता है एक यूनिट का, 6,000 रुपये। तो खुदा का खौफ करे कोई नहीं, खौफ खुदा इंशाल्लाह। सही है जी, चले ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है। कितने का पेट्रोल आपने डलवाया? 1350। 1350 का। सर कल रात को पेट्रोल की कीमत एक बार फिर से बढ़ गई, 8 रुपए 36 पैसे। तो कैसे देख रहे हैं आप बढ़ते हुए पेट्रोल को? पेट्रोल को क्या, यहाँ पे हर चीज ही बढ़ रही है, महंगाई इतनी है कि समझ ही नहीं आती कि पेट्रोल डलवाएं या घर में राशन डलवाएं। ऐसा ही है सर, ये जो एकदम 8 रुपए इजाफा कर दिया इन्होंने, अवाम की मजीद और दुआएं समेट रहे हैं। क्या दुआ देना चाहेंगे? कोई नहीं दुआ देना चाहेंगे, क्या दवाई देना चाहेंगे? दवाएं तो क्या दुआ देना चाहेंगे? बस यही कि अल्लाह इनको हदायत दे, और क्या। कहा गया कि भाई आलमी सतह पर पेट्रोल महंगा हुआ है, इसलिए पाकिस्तान में भी हो गया। इसमें टैक्स काफी है ना, इसमें टैक्सेस हैं बहुत, इसका इशू है। नहीं तो पेट्रोल तो सस्ता ही है। अभी पेट्रोल जो है चल रहा है मुल्क में। सही है, ठीक है। आपने देखा कि पेट्रोल पंप पर हम इस वक्त मौजूद थे, हमने बहुत से लोगों से बात की, सभी पेट्रोल महंगा होने की वजह से परेशान है। मजीद हम कुछ और लोगों से बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। दोस्तों जैसा कि हमने देखा पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन, दोस्तों किस प्रकार से पाकिस्तान अपनी पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहा है। इनको बस भारत से दुश्मनी का और भारत से युद्ध जीत गए का चूरन चटा दिया है, और वो चूरन ऐसा चटाया दोस्तों, उसे एक बार चाट लेते हैं पूरे दिन में और उसी को गाते रहते हैं। मतलब इनकी पब्लिक को ये नहीं दिख रहा कि हमारा नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन ये जैसे बोलते हैं वैसे ही कम मान ले जाता है। मतलब इतनी गरीबी और महंगाई हो चुकी है पाकिस्तान की, पूछो मत। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भारत और पाकिस्तान के बीच अगर एक बार फिर जंग छिड़ जाती है तो इस बार भारत पाकिस्तान पर ऐसी मिसाइल दागेगा जो हमेशा के लिए पाकिस्तान को खत्म कर देगी। और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। भारत अपनी एक खतरनाक मिसाइल में बहुत बड़े बदलाव कर रहा है। भारत की ये नई मिसाइल अब पाकिस्तान को हवा या जमीन नहीं बल्कि जमीन के नीचे घुस कर मारेगी। भारत बना रहा है अमेरिका के B2 बॉम्बर से भी खतरनाक बंकर बस्टर बम। दोस्तों भारत अपना खुद का बंकर बस्टर बना रहा है, और ये ऐसा बंकर बस्टर है जिसके लिए कोई B2 बॉम्बर की आवश्यकता नहीं है। जहां पे यूएस का B2 बॉम्बर GBU-57 लेके जाता है और उसके बाद लंबी दूरी तक उड़ान भरता है, एनिमी के एयर स्पेस में एंटर करता है, उस बीच में उसे कोई गिरा सकता है। हमारे बंकर बस्टर के साथ वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब भारत 1 लाख करोड़ रुपए का असलहा खरीद रहा है, और ना सिर्फ ये बल्कि अब उसने ये दावा किया है कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं जो ईरान पे बरसाए गए वो भी बना रहा है। खुदा ना ख्वास्ता, खुदा ना ख्वास्ता, खुदा ना ख्वास्ता कि ये जो कर रहा है मोदी ये गलत है। हमारे यहाँ जो कंट्रोलर्स हैं, मालिक व मुख्तार हैं हर चीज के, निजाम के, मुल्क के, उनसे गुजारिश है कि बाकी सारे मामलात अपनी जगह होते रहेंगे। तैयारी कैसे करनी है जंग की, मुझसे करोड़ गुना ज्यादा आपको पता है। एक चीज का शायद आपको अंदाजा ना हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप बाद में कहते हैं ओहो हमें तो पता ही नहीं था। आपको पहली फुर्सत में ही अपने न्यूक्लियर एसेट्स दाएं बाएं करने हैं। फौरन से पहले उनके खिलाफ एक ठीक ठाक महाजराई शुरू होने वाली है, जिनमें से फिजिकल अटेम्प्ट भी शामिल है। यानी कोई बैद नहीं कि बंकर बस्टर्स तक इस्तेमाल किए जाएं। तो ईरान ने तो बहुत ज्यादा गहराई में अपना मामला रखा हुआ था ना। अगर आपने रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखा तो प्लीज इसकी केयर करें। और ये जैसे ही चर्चा का विषय बना, अमेरिका समेत चाइना पाकिस्तान की नींद अभी से उड़ चुकी है कि आने वाले टाइम में इनका क्या होने वाला है। तो दोस्तों भारत बनाने वाला है अमेरिका, चीन और रसिया से भी ज्यादा घातक बंकर बस्टर बम, जिसे देख करके कई देशों की नींद गायब हो चुकी है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियाज बंकर बस्टर। अब इंडिया को वही कैपेबिलिटी चाहिए जो अमेरिका के पास है, GBU-57, जिसको आप जानते हैं। हम भली भांति उसको आपके सामने डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब भारत को वही कैपेबिलिटी चाहिए, वही मिलेगी कैसे? क्योंकि यार एक तो आपके पास बॉम्ब है, दूसरा आपके पास हवाई जहाज है। वो बॉम्ब जो है हवाई जहाज के नीचे टंगेगा, हवाई जहाज उड़ेगा, फिर उसको गिराएगा, तब बम नीचे जाएगा और सब कुछ बर्बाद कर देगा। भारत के पास ऐसा हवाई जहाज है ही नहीं। इसका जो वेट है
इसका जो साइज है, भारत के पास वैसा कोई है ही नहीं एयरक्राफ्ट जो उसको उठा ले और उठाने के बाद उड़ जाए। आपको तो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर चाहिए बड़े, जो एक दो ले जाएं और गिरा दें वहां पे, जैसे अमेरिका के पास है और रूस के पास भी है, चाइना के पास भी है। अब ये देखिए साहब, DRDO गिविंग अग्नि 5 अ डिवास्टेटिंग अपग्रेड। व्हाट इज बंकर बस्टर मिसाइल? ये है क्या, ये जानते हैं। Bunker buster missiles achieve penetration through a combination of high mass hardened casing and advanced guidance systems. The new variant of Agni 5 missile is under development by the DRDO. It is reported to carry a massive 7,500 kilogram conventional warhead. Both Pakistan and China maintain fortified command centers. ये देखिए साहब, राइट, 7.5 टन उसके अंदर हाई एक्सप्लोजिव होगा, यानी कि बहुत हाई क्वालिटी का बारूद, 7.5 टन बारूद एक मिसाइल के अंदर, राइट। और यह भी लिखा है कि बोथ पाकिस्तान एंड चाइना मेंटेन फोर्टिफाइड कमांड सेंटर्स, यानी कि जो उनके कमांड सेंटर्स हैं या उनका न्यूक्लियर वाला जो भी मामला है वो जमीन के कई 100 फुट नीचे दबा हुआ है कि ऊपर से अगर बमबारी हो तो उनको पता भी ना लगे। नुकसान तो बहुत बड़ी बात है, उनको पता भी ना लगे ऊपर क्या चल रहा है, कोई बात नहीं। तो भारत ने ऐसी चीज कर दी है बंकर बस्टिंग, जो कि हवाई जहाज की जिसको आवश्यकता ही नहीं है, आप भारत से ही उसको फायर कर रहे हैं। और भारत में भी कहां, कहीं मध्य भारत या दक्षिण भारत से आप फायर कर रहे हैं। आपको उतना जाना भी नहीं है बॉर्डर के पास, आपने दक्षिण भारत से फायर करा, पाकिस्तान के किसी भी कोने में गया, सीधा घुस गया। ये किराना हिल्स की बात देख लीजिए आप, जहां पे ये बड़ी बात हुई थी कि साहब वहां पे न्यूक्लियर लीकेज हो गया है, रेडिएशन। अब वो तो सिर्फ हमने दस्तक दी थी, हमने दरवाजा तोड़ के अंदर थोड़ा घुसे थे। इस बार जो वेपन वहां पे इस्तेमाल करा गया था, मिसाइल इस्तेमाल करी गई थी, सिर्फ हल्के से दरवाजे पे नॉक नॉक करा था, तब पाकिस्तानी इतने वहां पे हिल गए बुरी तरीके से। अब आप ये सोचिए कि किराना हिल्स के ऊपर अगर ये अग्नि 5 मॉडिफाइड गिर जाती है, 300 फुट जमीन के नीचे जाएगी और वहां पे फटेगी, क्या बचेगा किराना हिल्स का? जब 7.5 टन 7.5 टन ऑफ हाई एक्सप्लोजिव, वेरी हाई एक्सप्लोजिव। भारत 1 लाख करोड़ रुपए का असला खरीद रहा है, और ना सिर्फ ये, बल्कि अब उसने ये दावा किया है कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं, जो ईरान पे बरसाए गए, वो भी बना रहा है। जाहिर है हम ही उसका निशाना है। इसको आप कैसे देखते हैं? प्रिपेयर्ड वी आर टू डिफेंड आवर एसेट्स। जनरल साहब जी देखिए काजी साहब, इसको मैं इस तरह से देखता हूँ कि मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ जी, और बहुत अरसे से ये कह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान को एक और एक जंग की सूरत की तरफ जरूर ले जाना चाहेगा जी। उसकी वजूहत ये है कि ये जो अभी पहलगाम में इन पर एम्बैरेसमेंट हुई है, और उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने ये $2 बिलियन के और इमीडिएट ऑर्डर्स दिए हैं वेपन्स एमिनेशन के, इनके 2-3 चीजें हैं जी। एक तो इनका एक सिस्टम है, ये एक वॉर की सिचुएशन क्रिएट करते हैं और इसके अंदर ही इनके काफी इंटरेस्ट ग्रुप्स है जी। अब ये बिजनेस, ये अडानी और अंबानीज और इस तरह के लोगों का ये मुल्क हो चुका है, तो लॉट ऑफ किकबैक्स, लॉट ऑफ करप्शन इज ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड जी। तो ये एनवायरनमेंट का पूरा फायदा उठाता है। बट हैविंग सेड दैट, हमें दुश्मन की जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है उसको मद्देनजर रखकर अपनी तैयारी करनी होगी। इसमें कोई शक नहीं, आपने बिल्कुल 100% सही फरमाया कि ये पाकिस्तान स्पेसिफिक है और किसी के स्पेसिफिक नहीं है। चाइना को तो कभी जिंदगी भर चैलेंज नहीं करेंगे, उनके साथ इस तरह जंग नहीं करेंगे, इट इज पाकिस्तान स्पेसिफिक। पाकिस्तान को वो एक अपना जो हेजेमोनिक डिजाइन है ना जी, उसको लगा के एक ऐसा रिड्यूस करना चाहते हैं अपने अजाइम के साथ के वो, ताकि जो रीजन की बाकी कंट्रीज हैं वो उसी से सबक सीख ले। तो ये जो हेजेमोनिक स्टेट की जो एक एप्लीकेशन होती है, जो उसका मजाज होता है, उसके मुताबिक ये चीजें कर रहे हैं। और पाकिस्तान तो उनको बिल्कुल ही जी बर्दाश्त नहीं हो रहा, और खासतौर पर पहलगाम के बाद तो बिल्कुल ही इसका वो आजार खुल के कर। लेकिन जनरल साहब, जो भारत है वो तो अपना असला की दौड़ में लगा हुआ है, असला खरीद भी रहा है, 1 लाख करोड़ का असला खरीद रहा है, लेकिन बंकर बस्टर जो बम जो है वो बना रहा है, वो क्यों बना रहा है? क्योंकि वो तो न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उसको बरस्त करने के लिए या उसको तबाह करने के लिए होते हैं। अगर वो इस तरह के घनौने इरादे रखता है तो हमारी क्या तैयारी है, हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो के मैकेनिज्म्स है, दे आर वेरी इफेक्टिव जी। मैं यहाँ पे शायद उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं कर सकूंगा टीवी प्रोग्राम को, बट दे आर वेरी इफेक्टिव, बी वेरी कॉन्फिडेंट। ऑफ कोर्स ये इनको आदत है मॉडल्स लगाने की। पहले दोस्तों आप लोग जानते हैं जो बंकर बस्टर बम है, अभी वो अमेरिका ने ईरान के ऊपर इस्तेमाल किया था, और दोस्तों इसके बाद बंकर बस्टर बम बहुत ही ज्यादा सुर्खियों पर आया था। और दोस्तों अब खबर आ रही है कि भारत भी बंकर बस्टर बम पर काम कर रहा है। और दोस्तों अभी के
टाइम पे जो बंकर बस्टर बम है वो अमेरिका, चीन और रसिया के पास ही है। और दोस्तों भारत भी इस पर काम कर रहा है और भारत जो बंकर बस्टर बम बना रहा है वो इतने ज्यादा घातक होंगे कि ये अमेरिका, चीन और रूस से भी ज्यादा प्रभावी हो सकता है। दोस्तों और दोस्तों ये जो बंकर बस्टर बम है भारत अग्नि 5 मिसाइल के ऊपर बना रहा है, उसे मॉडिफाइड करके बंकर बस्टर बम बना रहा है। और दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि बंकर बस्टर जो बम है उसे फायर करने के लिए अमेरिका का जो B-2 बॉम्बर है वो ईरान के ऊपर गया था, तब उसने वहां पर वो फायर किए थे। लेकिन दोस्तों भारत ये जो बंकर बस्टर बम बना रहा है इसके लिए भारत को किसी भी सीमा पे नहीं जाना पड़ेगा, किसी भी देश की सीमा पर नहीं जाना पड़ेगा और वो भारत में रह करके ही बंकर बस्टर बम किसी भी देश के ऊपर दाग सकता है, जिसके बाद पूरी दुनिया में भारत की तारीफ हो रही है और पूरी दुनिया के लोग भारत। We are the citizens of a poor country, but this community has no food to eat. After 25 years, how Microsoft, a well-known tech giant in the world, shut down its operations in Pakistan. Microsoft has cited economic instability and anarchy in Pakistan for this. This is a big setback. Sir, even after 2 months of ceasefire, India being in a state of denial can be very dangerous for the peace of the country. The departure of Microsoft has sent a message across the board that Pakistan is not worthy of investment. People are spreading the news here that people are forced to commit suicide due to unemployment, poverty, and inflation. This is the condition of the country at present. We are constantly stressing on the fact that the rulers of the present government will have to understand that the country is not able to move forward. The country which was showing dreams of bringing $200 billion is now struggling and is not able to understand anything. We are very big cheaters. We are very liars. We are dishonest people. It is true. Pakistan has taken a loan of more than $1 billion from the commercial banks of China. The country cannot afford commercial loans. This is its name, the way we are seeing that even a tech joint like Microsoft winds up its operations from Pakistan. So how does this create the image of Pakistan globally that there is such economic uncertainty in Pakistan, or how investor confidence is showing a declining trend here? So, in practical terms, Pakistan has come third among the lowest ranked countries. That means Pakistan has won the bronze medal. Trade between India and Pakistan starts in the lowest ranked passports. Some business matters start. Some fruits, vegetables and clothes start coming from the border. So how much prosperity will come to the country of Pakistan? Hello friends. Pakistan, which runs on begging and loans, has got another big shock today. Even a company like Microsoft has shut shop and fled from Pakistan. Pakistan is becoming more and more poor. After Operation Sindoor, the condition of Pakistan was already bad, and now such a big company has also packed its bags and left Pakistan. Seeing this, the Pakistani media is shedding tears. So friends, let's watch another latest video of Pakistan's poor condition. The 2 years' economic numbers testify to how the country was made a victim of instability from a good situation, and now the way we are seeing that even a tech giant like Microsoft is winding up its operations from Pakistan. So, what kind of image does this give to Pakistan globally that there is such economic uncertainty in Pakistan? Or how investor confidence is showing a declining trend here? Which is the capital sitting outside? Because it is the present government which tells us with great force that investors like Gentry Beach want to bring billions of dollars of investment to Pakistan and invest in Pakistan. We are repeatedly stressing that investors will come only when they see stability in your country. All the factors will seem conducive to them, will seem so good that they will feel that their investment will be safe here. In such a situation, let us look at one more thing: Pakistan's currency reserves. In fact, I am making it bigger so that you can understand it better. Pakistan's currency reserves have increased very big twice. This is one of the biggest increases in the history of Pakistan, which has happened suddenly. The first increase, which is number 1 till now, is the 14th of July 2023, and the second increase is the 27th of June 2025. Do you know how these increases in Pakistan's foreign exchange reserves are happening? Loans are being taken from commercial banks.
Pakistan has just taken a loan of more than $1 billion from China's commercial banks. The country cannot afford commercial loans. Normally, countries take country-to-country loans so that interest rates come down. And the number one priority is that IMF, World Bank, Asian Development Bank and other such institutions should give loans. No one can afford commercial loans. Pakistan takes loans only to do as much as it says according to the IMF's requirement for its foreign exchange reserves. Their father will be able to repay this loan of more than $3 billion, but they keep taking it. So how important was it to address all these factors? Microsoft has given other reasons in the reasons, in which global loans are also a part of their strategy as well. In which when Microsoft has gone into the mode of worldwide restructuring, it is being said to be around 9,000 to 91,000. The job cuts up to 9,100, that is, 4% of their workforce, they are doing layoffs. To further streamline their operations and reduce the cost. So these 9,000 to 9,100 job cards were part of their restructuring strategy. The strategic shift that is visible is that where Microsoft has its physical presence, now it is in smaller markets, that is, Pakistan is obviously counted in smaller markets. Now it is removing from there and now these operations will be managed remotely from hubs like Dubai and other markets. He is also giving the reason for the partner model that the company has already scaled back its direct operations and is again relying on the partner-based model for business-to-business sales in Pakistan. In practical terms, Pakistan has come third among the lowest-ranked countries. That means Pakistan has won the bronze medal among the lowest-ranked passports. Pakistan's ranking of 100, i.e. 1.25 number, includes two partner countries of Pakistan. Somalia and Yemen, and below Pakistan's rank in 101 rank are Iraq and Syria, and the last rank after that, i.e. in 102 rank, is Afghanistan. The point about Afghanistan is also understandable, that they do not have the number one army, nor do they claim it, and Syria and Iraq are also war-torn countries, and they do not have any claim that they have the number one army, and the two other countries along with Pakistan in the rank of 100 include Somalia and Yemen. There is a food war going on between the two. It has been going on for a long time. And they do not claim that they are the nuclear countries of the world or they are the Pasmanda countries of the world. Those poor people only say that we are war-torn countries. We are going through a food war. But Pakistan's clubbing with them, that is, with Somalia, with Yemen, that is actually the ground reality, is telling us that the way Pakistan's army wins elections, the way it wins wars, then the kind of big claims they make that they are far ahead in the world in science and technology, and God knows in what other things they are ahead. But the reality is that Pakistan's passport has once again come on the lowest rank, and in that rank the countries in Pakistan's group are Somalia, Yemen, and a little behind them are Syria, Iraq and Afghanistan. And listen to the things said by Pakistan's kingdom. They talk such big things that God saves the name. Now, if we look at the top-ranked countries of the world, then Singapore is the only one which has achieved that number one rank. भारत के ऑपरेशन सिंदूर का डर पाकिस्तान की सरकार को और वहां की सेना को अब भी सोने नहीं दे रहा। पूरे पाकिस्तान में खलबली है क्योंकि वो जानता है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को बंद नहीं किया है, इसलिए वहां की सेना अब भी सजग रहने का ढोंग कर रही है। शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर और उनके बाकी अधिकारी इस वक्त ट्रंप की ऐसे चापलूसी कर रहे हैं जिसे देखकर आप ये कह सकते हैं कि अगर चापलूसी का कोई नोबेल होता तो विजेता पाकिस्तान ही होता। है कि वो F-35 अपना जदीद तरीन फाइटर जेट पाकिस्तान को दे। इसका जो वाज़े और बड़ा कैटेगोरिकली जो जवाब है वो है नहीं।
नहीं देना चाहता। वायुसेना प्रमुख का अमेरिका दौरा साफ बताता है कि पाक आर्मी में बड़ी गड़बड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों पिट चुके और कूटनीतिक तरीके से कुचले जाने के बाद पाकिस्तान के शीर्ष अधिकारी बारी बारी से अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। अमेरिका को ये खदशा बहरहाल मौजूद रहता है। वो ये बेहतर समझेगा कि पाकिस्तान की बजाय हम भारत को दे दें। चीनी हथियारों पर सवाल खड़ा होने के बाद पाकिस्तान अपनी वायुसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए F-16 ब्लॉक 70 फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम सहित कई एडवांस अमेरिकी हथियार खरीदने की कोशिश में लगा है। इससे साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी आ गई है। दे वांट एयरफोर्स टू गिव अवे 3 एयर बेसेस। की कशीदगी बढ़ती है, जंग बढ़ती है, तो पाकिस्तान जो है वो अपना F-16 जो तैयारा है फाइटर जेट जो अमेरिका ने दिया हुआ है, वो भारत के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो जो कंडीशन लगा। जय हिंद दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान के गाल पर सीधा थप्पड़ मारा है और अब यह सब कुछ देखने के बाद हवा में उड़ने वाले पाकिस्तानी धड़ाम से आकर जमीन पर गिरे हैं। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने वाशिंगटन DC का दौरा किया और इस दौरे की खबर कल आई और ऐसी खबर आई जिससे तासुर ये मिला कि जैसे वो अभी तक अमेरिका में मौजूद हैं, जबकि अभी एक प्रेस रिलीज सामने आई है जिससे इस बात का इल्म हो सका है कि वो 1 हफ्ता अमेरिका के अंदर मौजूद थे। अब इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि क्या 2 बुनियादी जो सवाल जो इस वक्त हर पाकिस्तानी के जुबान के ऊपर हैं कि क्या अमेरिका इस बात का ख्वाहिशमंद है कि वो F-35 अपना जदीद तरीन फाइटर जेट पाकिस्तान को दे। इसका जो वाज़े और बड़ा कैटेगोरिकली जो जवाब है वो है नहीं देना चाहता। अमेरिका की ऐसी कोई ख्वाहिश ही नहीं। उसकी वजह यह है कि अमेरिका को हमेशा अपने जदीद तरीन फाइटर जेट या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जो रिसेंटली टेक्नोलॉजी होती है, जो फ़िलहाल अमेरिका ही के पास होती है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इसराइल के पास होती है, वो बिलखसूस पाकिस्तान को देने के ऊपर कभी भी वो राज़ी नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि उसे ये खटका रहेगा कि अगर हमने ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दे दी तो ये चाइना के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई नेक्स्ट लेवल के हैं। तो इसलिए अमेरिका को ये खदशा बहरहाल मौजूद रहता है। वो ये अब दरअसल हाल ही में यह न्यूज निकल कर आई है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट मांगा था, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान को साफ साफ इनकार कर दिया है। हुआ यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस तरीके से चीनी हथियारों को एक्सपोज किया है और चीनी हथियारों को जिस तरीके से बर्बाद किया है, और अब यह सब कुछ देखकर वह बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं कि अब अगर दोबारा से वह भारत से उलझने की कोशिश करते हैं और अगर उस वक्त भी उनके पास ऐसे ही चीनी हथियार होते हैं तो भारत से बच पाना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन हो जाएगा। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पर जो भी मिसाइल और ड्रोन दागने की कोशिश की थी तो भारत ने उन्हें पूरी तरह से असफल बना दिया था। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उनके कई सारे लॉन्च पैड और कई सारे एयरबेस को तबाह कर दिया था। और बिल्कुल अब इसी सब को सोच कर पाकिस्तानियों के अंदर बेचैनी बढ़ रही है कि अब अगर भारत हम पर अटैक कर देता है तो हम तो एक ऐसी स्थिति में हैं जहां पर भारत से युद्ध जीतना तो बहुत दूर की बात है, हम भारत के समक्ष खड़े भी नहीं हो पाएंगे। और बिल्कुल इसीलिए पाकिस्तान नए और मजबूत रक्षा साझेदारी के तौर पर अमेरिका की ओर देख रहा है। पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख ज़हीर अहमद बाबर वाशिंगटन पहुंचे और अमेरिका से उन्होंने F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट की मांग की, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान को देने से पूरी तरह से साफ तौर पर इनकार कर दिया। अब क्योंकि पाकिस्तान को यह भूल थी कि अगर अमेरिका भारत को F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए मना रहा है तो पाकिस्तान तो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, और ऐसे में संयुक्त राज्य अमेरिका हमें 2 मिनट में F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट बेचने की मंजूरी दे देगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान के मुंह पर इनकार करके यह बता दिया कि वह केवल और केवल पाकिस्तान का उपयोग कर रहा है और भारत उसके लिए कितना ज्यादा खास देश है। तकरीबन 4 बार अगर गूगल वगैरह के ऊपर बिलीव किया जाए तो 4 बार FATF में जा चुके हैं और टेरर फंडिंग और कई दूसरे मनी लॉन्ड्रिंग और कई दूसरे रीजंस दिए गए जिसकी वजह से पाकिस्तान गया। बार बार ये लश्कर तोयबा और इस तरह के कई ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अंदर बात की जाती है बल्कि भारत की तरफ से भी कई बार कहा गया है। आपके ख्याल से पाकिस्तान आखिर इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करता और हमें बार बार क्या शौक है कि हम FATF में चले जाएं या फिर हमारे सर के ऊपर FATF की तलवार लटकती रहे?
अच्छा देखिए, कार्रवाई तो हुई है और वो कार्रवाई इस तरह से हुई है कि पहले तो ये जो टेरर आउटफिट्स थी ये खुलेआम असला लेके घूमती थी। इनके जो लीडर्स हैं वो आपको नजर आते थे, इनके साथ कई बॉडीगार्ड्स होते थे, गन्स उठाई हुई, इवन यूनिवर्सिटीज में जाके लेक्चर दिया करते थे, तालीमी इदारों में जाते थे, सड़कों पे नजर आते थे, जलसे करते थे ये लोग। उसके अलावा इनकी जो अपनी मसाजिद हैं, यहाँ I8 में एक मस्जिद थी और उसके बाहर वो गन्स लेके खड़े होते थे और वहां पे इनका एक सेक्शन था जहां पे वो बाकायदा इनका लिटरेचर अवेलेबल था जो कोई भी खरीद सकता था, एम्बुलेंस सर्विस थी, लेकिन वो सारा बंद हो गया। यानी अब जो है ना, अब ये इस तरह खुलेआम आपको कहीं पे भी नजर नहीं आएंगे। हाफिज सईद गायब है, मसूद अजहर इस वक्त मंजर आम पे नहीं है, सलाहुद्दीन एक यहाँ पे आया हुआ था, फजलुर रहमान खलील वगैरह वगैरह, ये सारे इस वक्त मंजर आम पे नहीं है। ये अंडरग्राउंड चले गए, उनको भेज दिया गया। लेकिन जो इनकी एक्टिविटीज थी जो कि विजिबल थी, जो कि नजर आती थी और जिस तरह खुली छूट इन लोगों को मिली हुई थी, वो अब नहीं है। और उसकी जो बुनियादी वजह है वो यही है कि FATF जो है उसकी शरायत को अगर हम पूरा ना करते तो हम ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चले जाते। तो एक्शन तो गवर्नमेंट ने लिया और बाकायदा तौर पे एक सेल बनाया गया जिसका मकसद ये था कि FATF की जो भी शरायत हैं उनकी कंप्लायंस की जाए, और वो कंप्लायंस बहुत हद तक हुई, वो कंप्लायंस की गई। और खास तौर पे जो टेरर फाइनेंसिंग थी उस हवाले से बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए और ये सारा कुछ जो है ये हुआ, तभी फिर हम ग्रे लिस्ट से बाहर निकले, अदरवाइज हम ब्लैक लिस्ट में जा सकते थे। तो ये कहना कि कोई एक्शन नहीं हुआ तो इससे डिसएग्री करूंगा, एक्शन बहरहाल उनके खिलाफ हुआ। जी आरजू। लेकिन सर बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, और इसीलिए शायद कहा जाता है कि जी बाहर भी बार बार इसीलिए निकल पाए कि उस वक्त वक्ती तौर पे सही लेकिन कुछ एक्शन लिया गया। लेकिन सर ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ कि यहाँ पर इस तरह के आउटफिट बन गए? जाहिर पाकिस्तान बनने के साथ ही तो यहाँ पे इस किस्म के टेररिस्ट या इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस नहीं आ गई होंगी। तो कहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ कि इस किस्म के लोगों को सपोर्ट किया जाने लगा, और कश्मीर जिहाद के नाम पर और कभी फलस्तीन के नाम पर? ये सिलसिला किसने जाओ लगने शुरू किया था या उससे पहले का है? देखिए, ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस तो मौजूद रही हैं इस मुल्क के अंदर किसी ना किसी शक्ल में, लेकिन जो इनको बाकायदा तौर पे एक ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में इस्तेमाल किया जाने लगा वो ज़ियाउल हक के दौर में हुआ, जब ये सोवियत यूनियन ने ऑक्यूपाई किया अफगानिस्तान को और यहाँ पे। Hello friends, welcome to Breaking Raj News. Friends, today we are talking about India's Prime Minister Narendra Modi's Babur Share Foreign Minister Jay Shankar, who reprimanded the superpower America by threatening it in a very measured manner to stay within limits. Friends, you heard it right. India's Foreign Minister Dr. S. J. Shankar responded to America on behalf of the Modi government in the same manner as America threatened to impose 500% tariff on major buyers of Russian oil. He said that India will definitely take appropriate steps on this threat and issue of America when the time comes. Friends, Jay Shankar further said that India does not see profit or loss in front of friendship. This is the same threat which is like crossing the bridge. We'll tell when the time comes. Friends, which means that India will take a concrete stand in this matter only when the situation is clear. America should take steps first. Friends, let us tell you that Modi's brave lion Jay Shankar is on a 4-day visit to America. During this, he made it clear that India has expressed its concern about energy security to the US MP who introduced a bill to impose 500% duty on countries doing business with Russia. Friends, Jay Shankar said in a press conference held in Washington that we track very closely such developments which are in the interest of India or can affect it. Friends, Jay Shankar, the master of Chanakya Nidhi,
famous for sometimes strictness and sometimes softness, told that the government of India and the Indian embassy are in touch with American Republican Senator Lindsey Graham because Graham is the same senator who introduced this strict bill. Friends, while presenting the bill in the Senate, he specifically named India and China and alleged that these two countries of America's enemy Russia are buying 70% of oil together and are giving America a snub. Friends, Jaishankar further said that I think we clearly shared our energy security related concerns and interests with the US. Now it has to be seen how far this bill progresses. When the time comes, we will cross that bridge. Friends, China and America have expressed their displeasure over the bill demanding 500% import duty. America bowed down to China but is adamant on India. Those who are still doing business with Russia, these include India and China. Friends, experts believe that this bill is part of America's strategy through which it wants to put pressure on Russia to negotiate on the Ukraine war. If this bill is passed, then India's exports to America may be badly affected. 500% duty will prove to be a big setback for Indian trade. Friends, meanwhile India and America are working fast towards finalizing a trade agreement. The purpose of this agreement is to avoid the 26% retaliatory tariff announced by Trump in April. If this agreement is reached, then Indian exporters can get great relief in America. Friends, India's purchase of crude oil from Russia is continuously increasing. In May 2025, this import reached 1.96 million barrels per day, which is the highest in the last 10 months. Now the situation is that India has started buying more oil from Russia than from West Asian countries, due to which America is now getting furious. Friends, India's buying oil from Russia reached its peak when Russia attacked Ukraine and Western countries imposed many sanctions on Russia. After this, Russia started selling oil to countries like India and China at discounted rates, which was readily accepted by Indian refineries. India currently meets 40 to 45% of its energy needs from crude oil, in which Russia's share is increasing rapidly and is also continuing. But America is adamant on imposing sanctions on India regarding this, which may prove to be a bad news for India. But India is also adamantly adamant. Friends, do not forget to give your opinion on this entire news. If you have not yet subscribed to our channel, then please subscribe to our channel now by pressing the bell icon. We will be present among you once again with the next latest news. Till then, namaskar. Jai Hind. मुसलसल हजीमत उठाने के बाद भारत के जंगी जुनून में इजाफा हो गया है। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने दावा किया है कि भारत ने अपना बहरी बेड़ा शुमाली बहर अरब में कराची के करीब तैनात कर दिया है। क्या भारतीय बेड़ा कराची के करीब है और बैनुल अक़वामी पानियों में मौजूद है? इस वक्त कराची से 900 किलोमीटर से भी ज्यादा फासले पे साउथ में खड़े हुए। की बड़ी ख्वाहिश थी कि कराची एयरपोर्ट के ऊपर अटैक किया जाए, लेकिन के कुछ जहाजों पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नस्ब हैं जो 500 मील तक हदफ को निशाना बना सकता है। और अब जरा मोदी सरकार का जंगी जुनून आपको बताते हैं। भारत ने चौथी एटमी आबदोज लॉन्च कर दी है। बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि भारत इस टाइम कुछ भी कर सकता है पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के हवाले से। राजनाथ सिंह की जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर है 20 लाख आर्मी के हेड हैं और हेड ने बात की है कि इस दफा अगर हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे तो इंडियन एयरफोर्स ने इंडियन नेवी सामने आएगी। बार बार पाकिस्तान को जंग का इन्विटेशन इंडिया की जानिब से भेजा जा रहा है। मोदी का जंगी जुनून खित्ते को एटमी तसादुम के दहाने पर ले आया। खदशा जाहिर किया गया कि जून 2025 तक जून 2026 वादी के लिए खून साबित होगा। कश्मीर का तनाव किसी भी वक्त खित्ते को जंग में झोंक सकता है। भी पता चला है कि इंडियन नेवी जो है वो एक स्टील्थ फ्रिगेट है जिसका नाम INS तमल है। उसको आज उन्होंने कमीशन किया इंडियन नेवी के अंदर। एक मैसेज देना चाहता हूँ फॉर होल इंडियंस को कि हम तो ऑलरेडी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। जो एक तैयारी के हवाले से देखें भारत इसको अफोर्ड कर सकता है। वो इंडिजिनस अपनी जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसकी तैयारी के हवाले से देखें तो जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वो जो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं वो उसकी तैयारी के हवाले से भी इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी है और उसके ऑलरेडी प्रोटोटाइप के हवाले से ये वो चल रहा है कि उनकी अप्रूवल के बाद ये इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ सैटेलाइट्स के हवाले से देखा जाए वो उसमें भी तैयारी के हवाले से, क्योंकि भारत का माशी तौर के ऊपर वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा आगे है। लेकिन नमस्कार दोस्तों, रियल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। भारत ने एक और खतरनाक युद्धपोत समंदर में उतार दिया है, INS तमाल। भारतीय नौसेना में आज शामिल हुआ INS तमाल एक ऐसा स्टील फ्रिगेट जो समुद्र में दुश्मन को बिना दिखे तबाह करने की ताकत रखता है। इस खबर को सुनते ही पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मच गया है। कोई कह रहा है कि भारत अब पूरी तरह जंग की तैयारी में है, तो कोई चिल्ला रहा है कि अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान के पास जवाब देने की ताकत नहीं।
आईएनएस तमाल को ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस किया गया है, वही मिसाइल जिसने पाकिस्तान आज भी खौफ खाता है। एक पाकिस्तानी रिपोर्टर तो यहाँ तक कह बैठा कि अगर भारत का आईएनएस तमाल अरब सागर में घूमने लगा तो पाकिस्तान की नेवी पूरी तरह से छुपने के लिए जगह ढूंढेगी। दोस्तों, ये वही पाकिस्तान है जो भारत को रोकने के सपने देखता था। आज भारत की ताकत इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तान को अब अपने पानी और समंदर तक डर लगने लगा। आईएनएस तमाल के आने से भारत की समुद्री ताकत और बढ़ गई है और यही ताकत अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो भारत आपको पता है तकरीबन 78 बिलियन डॉलर से ज़्यादा डिफेंस का बजट रखता है, और अभी पता चला है कि इंडियन नेवी जो है वो एक स्टेल्थ जो फ्रिगेट है जिसका नाम आईएनएस तमल है, उसको आज उन्होंने कमीशन किया इंडियन नेवी के अंदर, और कहा जा रहा है कि ये लास्ट वॉरशिप है जो कि आउटसाइड इंडिया बिल्ड की जा रही है। लास्ट वॉरशिप, इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि सारी वॉरशिप जो है वो इंडिया के अंदर अब की जाएगी। और इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर आप देखें इसको, इस पूरी की पूरी जो जिसे कहते हैं ना, इस एक्सरसाइज को आप देखें तो आपको पता ये चलेगा कि इंडिया जो है ये तो इनकी एक वेस्टर्न नेवल कमांड है, वहाँ पे एक ऑफिसर हैं वाइस एडमिरल संजय सिंह साहब, जो कि इस जितनी भी सेरेमनी हो रही है जिसमें बाकी इंडियन और रशियन गवर्नमेंट जो है उसके लोग मिलके इसको कर रहे हैं। और इसका नाम तमल जो है, कहा जा रहा है कि ये जो 8वीं शिप है इन द सीरीज ऑफ क्रिवॉक क्लास फ्रिगेट्स, जो कि रशिया से 2 डेकेड्स पहले इन्होंने इंडक्ट करनी शुरू की थी। और कहा यह जा रहा है कि ये जो तमल है ये दूसरी शिप है तुशील क्लास की, और जिनको अब अपग्रेड किया गया है, और ये जितनी भी ये तलवर एंड डेक क्लासेस जो हैं इनकी भी आई थिंक 3 शिप्स इंडिया के अंदर मौजूद है। इंडिया जो है वो एक अब वो इंडियन नेवी जो है उसको लार्जली कभी जंग में एक्टिव नहीं हुई, ना ही पाकिस्तानी नेवी, क्योंकि सिचुएशन इस तरह की रही है कि ज़्यादा एयरफोर्स और ऑन ग्राउंड चलता है। अभी रिसेंटली क्योंकि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि नेक्स्ट टाइम इंडियन नेवी विल अटैक, तो वो वहाँ पे इंडिया के अंदर अटैक पाकिस्तान पे करना बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, और अगर पाकिस्तान ये चीज़ करेगा तो इंडिया उसको कहेगा देखें पाकिस्तान के मिनिस्टर क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर अटैक करना मतलब मसला ही कोई नहीं है। इट्स सो इजी, वहां पे वो कहेंगे हम इस दफा इस पे हमला करेंगे, इस दफा इससे हमला करेंगे, तो ये एक चीज वहां पे नॉर्मल समझी जाती है, क्योंकि वो मैंने आपको बताया था ना, वहां पे फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी दे आर पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कैंपेन का हिस्सा है। अब देखें कि इंडिया एज ए ब्रॉडर, जिसका वो जिसे कहते हैं ना, उसने एक अपनी अप्रोच अडॉप्ट की है, और मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, या मेरी जो अप्रोच है वो ये है कि इंडिया अब ज़्यादा आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है कि हमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सारी की सारी इंडिया के अंदर करनी है, और इंडियन नेवी जो है वो उसकी काफ़ी बड़ी तादाद में जो शिप्स वगैरह हैं वो अब वो उसको खरीद रहे हैं, नेवी को एक्सपैंड कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर पहले ही उन्होंने लिए हुए हैं। अब इंडिया की जो टीम है, कहा जा रहा है कि वो वहाँ पे मौजूद थी रशिया के अंदर, और वो इंडियन टीम वहाँ पे काफ़ी देर मौजूद रही है। और ये आप समझ लें कि ये जितनी भी शिप प्रोडक्शन हुई है, ये आप समझ लें कि एक वॉरशिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन एक कंट्रोलर होता है, उसके नीचे ये उन्होंने की है। और अब ये सारी की सारी एक जगह है रशिया के अंदर जिसे बोलते हैं कलिनिनग्राड, एक वहाँ पे शिप यार्ड है, यंतारा शिप यार्ड है, वहाँ पे ये हुई है। तो सवाल ये बनता है कि जैसे मैंने बताया ना कि ये लास्ट शिप बायर बन रही है, अब वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कह रहे हैं। और इस शिप की भी अगर मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कहा जा रहा है कि इस शिप के अंदर जो 26% जो कंपोनेंट्स हैं वो इंडिया कहता है जी हमारे अपने हैं, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है, जो कि लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है, जो कि समंदर और लैंड दोनों पे हमला कर सकता है। और इसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेशन की सेंस में कि जितनी भी वर्टिकल लॉन्च जो सरफेस टू एयर मिसाइल हैं, और इसी तरह 100 mm गन भी इसके अंदर है,
और भी काफ़ी सिस्टम हैं, हैवी वेट इसके अंदर टॉर्पेडोज भी हैं, क्योंकि टॉर्पेडोज नॉर्मली सी टारगेट्स पे हिट करने के लिए होते हैं। तो ये फिर ये अर्जेंट अटैक एंटी सबमरीन रॉकेट भी लॉन्च कर सकती है, कि अगर इधर इनको पता चल जाए कि सबमरीन बहुत करीब है, तो अर्जेंट अटैक करना हो तो ऐसे रॉकेट भी इसके अंदर होंगे। और सर्वेलेंस भी किसी हद तक कर सकती है, फायर कंट्रोल, बाकी छोटी-मोटी चीज़ें जो इसके अंदर हर एक जहाज़ के अंदर होती हैं। तो ये इंडियन नेवी जो है वो ये कह रही है कि ये हमारे लिए बड़ी फोर्स मल्टीप्लायर है, क्योंकि ये एक एयर अर्ली वार्निंग और मल्टी हेलीकॉप्टर जो है वो भी इसके अंदर होंगे, ठीक है जी। जो इसके डेक के ऊपर से ऑपरेट कर सकेंगे। ये अमूमन आजकल तो हर जहाज़ में ये चीज़ आती है। मैंने बाय द वे मैंने ये पर्सनली पाकिस्तान नेवी का ये मैंने तजर्बा खुद किया हुआ है, देखा हुआ है उनकी मैंने नेवी के ऊपर जब हेलीकॉप्टर ऊपर आते हैं तो वो बड़ा सीन होता है। वैसे मतलब कोई आम चीज़ नहीं है, मैं आपको बात बताऊँ, इट्स नॉट एन ईज़ी थिंग, ये कोई आसान चीज़ नहीं है, ये बड़ी मुश्किल चीज़ है जो होती है, नज़र आती है। बहरहाल हेलीकॉप्टर्स भी होंगे डेक के ऊपर, और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो फ्रिगेट है वो भी आप समझ लें कि उसके ऊपर 200-250 बंदा भी होगा। सो असल में तो जो चीज़ समझने वाली है कि लास्ट है, आत्मनिर्भर भारत को देखते हुए इन्होंने 26% चीज़ें जो हैं वो अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन में डाली हुई हैं। और जिसे वो कहते हैं ना, ये इंडो रशियन जो कोऑपरेशन है, इसमें ज़ाहिर बात है अमेरिकन्स भी इसको देख रहे हैं, और उनको तो वट चढ़ते हैं अमेरिकन्स को, जब वो पता उनको गुस्सा आता है कि यार ये हमारे दोस्त अच्छे हैं, सारा कुछ तो लेते हैं, ये क्या चीज़ है। The girls of Jammu and Kashmir are not only preferring Hindu boys for marriage instead of Kashmiri boys but are also seen leaving their religion Islam and converting to Hinduism. But there must be some problem due to which these Kashmiri girls are marrying outsiders instead of preferring Kashmiri boys. You, like Indian Hindu boys, what qualities do they have that you like them? I mean the qualities that attract me a lot towards them, that they marry only one at a time. When you were a Muslim and now you are a Sanatani, you have also seen Islam religion and you are following Sanatan Dharma. Where did you feel more relaxed in both? Felt more safe? What difference did you see between the two? I got a lot of relaxation after coming to Sanatan because I feel that even an animal is hungry for respect and love, which I got after coming to Sanatan. Earlier it used to happen that Hindu girls used to convert to Islam. Now it is happening that Islamic girls are converting to Hinduism. This has become a question. Those who worship cows, the dirtiest race right now is Hindus. Another person says that we are relatives of Arabs. However, how are you relatives of Arabs? You are all Hindus, you became Sikhs from Hindus or you became Sikhs. I myself, who am and who is from Hindu to Sikh, became Muslim from Sikhs. I am from Jat community. The problem is that you have worn the glasses of Islam so deeply that now you do not understand your own culture, Hindu culture. What is in Sanatan cannot be compared with Islam. So my perception, my thought is that in Hindu and Sanatan religions, the respect for women, the status of women, the respect for women is very high. Very high. And in our Pakistan, it is 4, make it 8. Okay, if you do it in the Sunnah, which is the Sunnah of the Prophet, then do it. But do it with those who are compelled, like those who are widows. But here they will not see that they have to do it with widows only, they will catch hold of them. Even then they will catch singles only, I think. The most I think deprived and suppressed woman is an Islamic woman. Whether you believe it or not, because I have seen it, she cannot go anywhere. She always needs a mahram. Why can't a woman be free? Why can't she go out? Why can't she speak? She should say only what the husband says or say only what the people say. This does not happen. Friends, as you just saw in the video, how Kashmiri girls are marrying Hindu boys and at the same time adopting Sanatan Dharma. But on hearing this news, Pakistanis are going mad. Pakistani Muslims who themselves used to be Hindus at one time. Today, so much hatred has been filled in their hearts against Hindus that they have started finding the religion of their ancestors wrong in front of Islam. And these people ask the Mughals who made them accept Islam at the point of sword. Kashmiri or Muslim girls are marrying Hindus now because the freedom and peace they get in Sanatan Dharma, they never got it in Islam.
Also, after marrying a Hindu man, they get rid of the trouble of 4 marriages. So today in this video we are going to see the reaction of Pakistanis on this news. So that is why you must watch this video till the end. What do you want to say? This news has come out from Jammu Kashmir that Kashmiri girls are not only preferring Hindu boys for marriage instead of Kashmiri boys, but they are also converting their religion for them. They are seen converting to Hindu religion by leaving Islam. Look, the biggest responsible for this is our government itself. Because if you are talking about Kashmir, Jammu Kashmir, then they do not stand with them, they are not taking a stand. Due to which that poor Kashmir has fallen into the hands of India, okay? Due to which, their poor young men, young husbands, young people die. Indian girls prefer Hindu boys and then Islam, and the biggest and the second biggest issue is that we have social media. Due to which, social media is everywhere. It is not just in Pakistan, not in Jammu and Kashmir, internet is everywhere, so they watch it. They watch videos etc. Their parents must be watching special videos. So, like in the dramas of Pakistan, the culture of jazz is increasing and then they talk about jazz. They are not satisfied with boys, those boys are poor, they are poor, and in Kashmir, there are no opportunities for progress, neither in factories etc., nor is there that. So, because of which, the Hindus get it easily and the parents of the girls would not want that we should get married in this poor family, so they will do it with Hindu boys. And it is again very clear that when your husband is a Hindu, then automatically the girl. Earlier it used to happen that Hindu girls used to convert to Islam. Now it is happening that Islamic girls are converting to Hindu. This has become a question. I would like to talk about the issue of divorce first, that the concept of divorce and the concept of khula has nothing to do with this. Neither is she accepting Hindu religion because of divorce nor because of khula. Okay? If the man does not want to live with his wife, then he has the right to divorce her, and if the wife does not want to live with the man, then she has the right to give khula. She has the right to take khula. So this concept is clear. Because of this concept, there is no such thing and the principles of Islam cannot be better than that, and this has been proved. As for the rest, the matter of accepting Hindu religion is this. I have talked about this earlier, that when all those who become flag bearers of this religion will roam around, or will have differences among themselves, will fight among themselves, will die, then what effect will it have on others? Those who know a little about this will say that those who know are killing each other, so what are we to be? Quran and history are witness that these Muslim men have never respected women. According to them, according to their fabricated, false, rogue hadith, Muslim women are never completely pure. Why not? Because we have periods. So we have not taken these periods as a gift. Or we had not taken note that hello give us periods. We did not do it. This is nature. Nature has given it to us. What can we do in this? But they say that there are not enough restrictions on women. This has happened to me in a debate. There are not enough restrictions on women. They have to bathe. They have to perform ablution. They have to be pure. They have to cover their heads. I said the same restrictions apply to men. They also have to bathe. They also have to be pure. They also have to cover their heads. And the Quran talks about gender equality. So where did you come from? About gender inequality. He quickly said that she is an RSS agent. I said, why? Did you see her on the bed? Did you see her with your own eyes? So he became silent. This hypocrite, this illiterate, this japat who has never stepped out of a madrasa in his life, will teach educated girls like us. These educated girls like us, who have read the Constitution, who have read the articles, who have read the Quran properly, will tell her what is Quran and what is Hadith. If you ask a normal Sanatani what is the status of women in your eyes, do you know what he will answer? Brother, we have read since childhood that there are 9 forms of Durga, 9 strengths of Durga, 9 charismas of Ma Durga, and every goddess has a different strength. Saraswati Ma has the strength of education. Lakshmi Ma has the strength of wealth. Durga Ma has a different strength. Earth Mother has a different strength. Kali Ma has a different valuable art strength. So in this way there are 9 forms of Durga. There are 9 Mas and their different strengths have been described in a valuable way in Sanatan Dharma. Now you tell me where in the Quran has a woman been described as valuable? It is very easy to criticize me sitting from a distance. But coming close to me and sitting in front of me and winning in confrontation with me is a very tough game. I am not an easy task. So, now you tell me, you are in an Islamic country, and am.
Have you read the Quran? Have you read the Sharia law of 1937 made by Jinnah? Have you read the Hadith? Have you read all those things? Read them since childhood? Because in your Islamic country Pakistan, you people are given religious education since childhood. In your madrasas, children are told about jihad since childhood. If you don't believe me, then I can show you those clippings which the madrasa children are saying that your minds are filled with the idea that Hindus are kafir. Any woman, the pen is you or me, you are from Pakistan, I am from India, but we both are Muslims. We would never want that there are 3 more women in our bed and my husband is enjoying with 4 bodies. Or my halala should be done or your halala should be done. So, all the educated Muslim women in India, all the educated families, all the well-educated, well-qualified Muslim families, they have come forward and have completely supported this thing. रिपोर्ट हुई है भारत से कुछ बड़ी एक शॉकिंग खबर है। वहां पे जनाब ऑपरेशन चातरू का आगाज किया गया। ऑपरेशन सिंदूर आपको याद होगा भारत ने शुरू किया था, अब उन्होंने ऑपरेशन चातरू का आगाज किया है और जो एरिया है जिसको टारगेट किया जा रहा है दैट इज मकबूजा कश्मीर। ये ऑपरेशन चातरू क्या कर रहा है, किसको टारगेट कर रहा है? मुंबई में मस्जिदों में अली साहब असल तो अभी करना है, ये तो प्रैक्टिस थी। सबके बाद अभी भी लगता है कि मोदी के सर पर जंगी जुनून सवार है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये एक समझे एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। ये कह रहा है कि हमने प्रैक्टिस कर लिया है, अब इस दफे या अगली दफे मुझे नहीं पता। मगर सोचिए तो सही, उनका एक रिटायर्ड जनरल ने अभी तकरीर किया है, उसने कहा ये हमारे लिए बड़ा फायदामंद एक्सरसाइज हुआ है, इसलिए कि हमने अब पाकिस्तान को बता दिया है कि अगर हमारे यहाँ तक कहा गया कि ये तो कोई जंग ही नहीं थी जो अब जंग होने वाली है, और वो जंग किसके बीच में होने वाली है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया हमला करने वाला है पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर। मोदी जो है वो प्योर काइनेटिक्स में बिलीव करता है जी। दिस इज द चेंज दोनों की माइंडसेट में। मोदी जो है वो काइनेटिक्स, वो कहता है जो भी काइनेटिक्स मेरे पास अवेलेबल है, चाहे टेक्निकल, ऑपरेशनल या स्ट्रेटेजिक लेवल की है, उसकी मैं एप्लीकेशन करूंगा। वो समझ रहा है कि जो मेरे हाथ में थोड़ा, ये अपनी रिसर्च में ये इंकशाफ किया है कि इजराइल और इंडिया बहुत बड़ा अटैक करेंगे पाकिस्तान की तरफ, और ये रिसर्च आम नहीं होती। और दूसरी तरफ उसने ये बोला कि न्यूक्लियर की तरफ जो है वो देख रहा है। ये हामिद मीर साहब ने भी बोला, और ये कैनेडा का बहुत बड़ा को पीएचडी प्रोफेसर है, ये उसकी रिसर्च है और ये मजाक नहीं होती। उसके अलावा आपको बताएं कि आप एक आइंदा चंद दिनों के लिए सैलाब के हवाले से भी है, इसलिए कि हमने अब पाकिस्तान को बता दिया है कि अगर हमारे खिलाफ जिधर भी एक्शन होता है, मिसाल के तौर पे कश्मीर में फॉर इंस्टेंस, तो हम उधर जाएंगे और उनको बॉम्ब करेंगे जिधर से ये एमिनेट किया, जिधर से ये निकला है, ये जो प्लानिंग और डायरेक्शन है। तो मैं सोचता हूँ कि अगले दफे अगर बलूचिस्तान में और या पाकिस्तान में कोई ऐसा मैस मर्डर हो तो हम तो जाके सीधा दिल्ली में दोवाल के दफ्तर को बॉम्ब कर देना चाहिए। माने हमें भी तो वही एक्सेप्ट करना चाहिए ना, वो कि ये जो कह रहे हैं। तो कहने की बात सिर्फ ये है, मोदी की पॉपुलैरिटी जा रही है। देखिए केजरीवाल ने जो कहा है वो भी शायद आपने सुना होगा, जो दौलत ने कहा है वो भी सुना होगा, जो सिन्हा ने कहा है को कुर्बान करोगे, और करेक्ट, और जो मनमोहन सिंह ने कहा है वो भी। और कई सालों से इंडिया, जब से यूक्रेन की जंग चल रही है और खित्ते में दूसरी जंगें चल रही है, इंडिया रियल टाइम में अपनी वॉर डॉक्ट्रिन भी एडजस्ट कर रहा है, वेपन इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करके, इंडक्ट करके डिप्लॉय कर रहा है। पाकिस्तान ने अभी तक एफपीवी ड्रोन इस्तेमाल नहीं की। इंडिया ने पूरी रेजिमेंट्स रेज कर दी हैं जो एफपीवी ड्रोन्स पे काम कर रही हैं। दे आर फार मोर अहेड ऑफ अस इन डिप्लॉइंग द टेक्नोलॉजी, अनकन्वेंशनल टेक्नोलॉजी, जो जिसके लिए पाकिस्तान अभी तैयार नहीं, और खास तौर पर पाक फजाइया की जो बात कर रहे हैं। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल नाउ। व्हाट इज मनमोहन सिंह ने कहा है वो भी शायद आपने सुना होगा। तो इसकी पॉपुलैरिटी 21 पार्टीज, शाजिया 21 पार्टीज इन पार्लियामेंट मिलके एक रेजोल्यूशन पास किया है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि दोस्तों किस प्रकार से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया था, और पाकिस्तान के जितने भी आतंकी कैंप थे सबको उड़ा के रख दिया था, और पाकिस्तान के अंदर कोहराम मचा दिया था आतंकवादियों के मन के अंदर, पूरी तरह डिस्ट्रॉय करके रख दिया था ऑपरेशन सिंदूर से। लेकिन दोस्तों अब भारत नया जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन चातरू शुरू कर चुका है दोस्तों। इसमें भी इन्हीं आतंकवादियों को ढूंढ के मारना है और देश की सुरक्षा का दायित्व निभाना है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात जो निकल आ रही है पाकिस्तान की मीडिया को इस बारे में पता लगा है कि भारत ने ये वाला ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो ये वाला ऑपरेशन सुन के भाई पाकिस्तान की मीडिया की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। उनका कहना भाई ये कोई नया ऑपरेशन चालू कर दिया है, कहीं हमें दोबारा घुस के ना पेलें। और जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया बोल भी रहा है कि भाई भारत जो घुस के मारेगा, पूरी तैयारी कर चुका है वो,
मजाक में नहीं है भारत इस टाइम। इसके साथ साथ दोस्तों उन्होंने कहा कि भाई भारत मोदी जी नहीं मानने वाले, मोदी जी हमें छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों यही इस वीडियो में इन्होंने बोला है। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया का और वीडियो में रिएक्शन क्या रहा है। जो है वो जनाब इंडिया ने एक नया ऑपरेशन जो है उसका आगाज कर दिया है और वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये हम दहशतगर्दों के खिलाफ जो है वो हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उनका टारगेट जो है वो मुसलमानों को जो है वो प्राइम फोकस के अंदर रखते हुए जो है ये पूरा ऑपरेशन किया जा रहा है। तो कल इसमें मकबूजा कश्मीर का जिला किश्तवाड़ है, इसके चातरू के इलाके में जो है वो ये ऑपरेशन किया गया इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से और वहां पे उन्होंने ये क्लेम किया, मैं दोबारा ये कह रहा हूँ उनका क्लेम है कि जनाब हमारे ऊपर जो है फायरिंग हुई है और उसके बाद हमने भी जो है वो आगे से फायरिंग की है और बेसिकली जम्मू के खित्ते के पहाड़ी इलाकों में जो है उन्होंने कहा कि जनाब हम ये ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं और यहाँ पे पाकिस्तान के जो एफिलिएटेड लोग हैं वो घुस आए हैं और इसकी वजह से वो इनके चैनलों की आदत है, इन्होंने जब मुसलमानों को टारगेट करना होता है ना तो ये वाला पत्ता जो है वो खेल लेते हैं कि ले जनाब ये हमने जो है वो पाकिस्तान फेवर्ड जो मुजाहिदीन है उनके अगेंस्ट जनाब हमने या दहशतगर्द है उनके खिलाफ जनाब हमने ये ऑपरेशन जो है वो शुरू किया। ये ऑपरेशन चातरू है जनाब इंडिया का, जो ऑपरेशन सिंदूर आपको याद होगा, अब ये ऑपरेशन चातरू है जिसका इन्होंने वहां पे आगाज किया है। इसके अलावा पाकिस्तान पर एक और हमला करने के लिए और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पर इस बार हमला इंडिया का इजराइल के साथ मिलकर होगा, यानी ये कि इजराइल भी इंडिया के साथ होगा पाकिस्तान पर जो हमला किया जाएगा। और ये भी साथ में कहा जा रहा है कि ये जो पाकिस्तान पर इस बार हमला किया जाएगा वो ड्रोन्स उसके अंदर यूज किए जाएंगे, उसके अंदर जो साइबर फोर्स है वो यूज की जाएगी और ड्रोन्स के थ्रू जो है वो ज्यादा इस जंग के अंदर इस्तेमाल होगा, यानी एक और नई जंग की बात की जा रही है। क्योंकि देखें वैसे तो इंडिया ने कहा हुआ है कि न्यू इज नॉर्मल, उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा कि अब कुछ भी होगा तो पाकिस्तान पर जो है वो हमला होगा। अब बात पता क्या है कि कुछ भी होगा तो हुआ तो कुछ नहीं वहां पर, तो फिर जब कुछ नहीं हुआ तो फिर भी ये बात क्यों की जा रही है। अच्छा, इसके अंदर एक बात और है, वो ये है कि अभी जो है वो एक दिन पहले अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो की कॉल आई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को। अब वो जो बात की गई तो सबके जो हैं नजरें पाकिस्तान की तरफ हो गई कि जी पाकिस्तान को ये वाली कॉल क्यों आई है या शहबाज शरीफ को ये वाली कॉल क्यों गई। तो इंडियन चैनल्स में देख रही थी, उनकी तरफ से एक ये भी स्टैंड देखने को मिला कि पाकिस्तान को जो है ये कहा गया है या ये धमकी दी गई है कि ईरान का साथ नहीं देना, या ईरान जो है वो किसी भी किस्म का अगर वहां पर एक बार फिर कोई न्यूक्लियर बनाने की तैयारी की गई या न्यूक्लियर बनाया गया तो उसको नहीं छोड़ेंगे हम। और ये जो है इसी तरह की कोई बात पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से भी की गई है, एलिजिडली रिपोर्टेडली जो है ये बात की जा रही है। अब मुझे तो नहीं पता कि क्या बात की गई। पाकिस्तान की तरफ से तो ये कहा जा रहा है, ये कहा जाएगा कि जी बड़ी अच्छी बात हुई, मुबारकबाद दी गई कि जी पाकिस्तान ने इतना अच्छा रोल प्ले किया है इस जंग में और बड़ा साथ दिया। पता नहीं किसका साथ दिया ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि पहले ये कह रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का साथ दिया, उनको कहा कि नॉमिनेट किया जाए नोबेल पीस प्राइज के लिए, लेकिन फिर उसके बाद ये कहा गया कि हम ईरान के साथ हैं तो ईरान का भी साथ दे रहे हैं, ईरान का तो समझ में नहीं आई कि किसका साथ दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि जी ये जो है ना लोग कह रहे हैं कि ये इसलिए है कि ये कहा गया है कि ये जो है ना पाकिस्तान के अंदर जो एक जिसे कहते हैं सरकारी या इस तरह का स्टैंड ये है। लेकिन क्योंकि अभी जंग बंद हुई है तो उसके अंदर कुछ आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं और ये जो रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स हैं ये इसके बारे में क्या कह रहे हैं ये भी तो देखना जरूरी है ना। क्योंकि जब हम ये बात कर रहे हैं कि जी इंडिया जो है वो पाकिस्तान पर हमला करने वाला है, तो बात यह है कि कह रहे हैं कि जी अभी तो ईरान और जो इजराइल है उसकी जंग खत्म हुई है, तो आप कहां पर बैठे हुए हैं कि ये तो जंग कोई थी नहीं। यहां तक कहा गया कि ये तो कोई जंग ही नहीं थी जो अब जंग होने वाली है, और वो जंग किसकी। हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि किस प्रकार से दोस्तों वीडियो में पाकिस्तान के अंदर दहशत का माहौल देखा जा सकता है इस ऑपरेशन से, क्योंकि दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के अंदर जो तबाही मची थी वो पाकिस्तान का मरहम अभी तक नहीं लग पाया है। और दोस्तों जिस तरीके से आपने देखा होगा कि किस प्रकार से पाकिस्तान वाले धमकी देते रहे हैं, तो भारत ने वो ऑपरेशन नया सिंदूर जो था उसके बाद नया ऑपरेशन चातरू शुरू कर दिया है। अब पाकिस्तान के मीडिया में, पाकिस्तान की आर्मी में, पाकिस्तान की फौज में, पाकिस्तान की पब्लिक में वही खलबली मच चुकी है क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। रूस में हो सकती है बड़ी डील, ये खबर देखिए। मैं मासूम श्रीवास्तव आपके पास आने वाला हूं, परमाणु पनडुब्बी और
जब ट्रेड डील करके अमेरिका भारत को मनाने में जुटा था, पुतिन ने भारत से दोस्ती निभाने खोल दिया हथियारों का खजाना। खुद ट्रंप भी रह गए हैरान, जो हथियार अमेरिका भारत को देने तक राजी नहीं, उन्हें टेक्नोलॉजी सहित भारत को सौंपेगा रूस। तो मिसाइल की डील संभव, भारत दौरे पर पुतिन कर सकते हैं पेशकश। सितंबर में दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया इस विजिट पर निगाह बनाए हुए होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। सीरियसली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अब तक की जो सबसे अहम, सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी जो खबर आ रही है रूस वाले से आ रही है, और ये बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है। समंदर पर भारत को चुनौती देने के मूड में था चीन। पुतिन ने भारत दौरे से ठीक पहले सीक्रेट सबमरीन सौदे पर कर डाला गेम। पुतिन के दिल्ली दौरे से ठीक पहले पीएमओ के टेबल पर है टॉप सीक्रेट फाइल। साइन होते ही भारत के पक्ष में हो जाएगा हिंद महासागर का शक्ति संतुलन। इस साल सितंबर 2025 में जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली की धरती पर कदम रखेंगे, तो वो अपने साथ सिर्फ दोस्ती का पैगाम नहीं, बल्कि एक ऐसा रक्षा प्रस्ताव ला रहे हैं जो भारतीय सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। रूस और भारत में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी एक और सिफारिश से दो चार। पाकिस्तान जफर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। एक और बड़ा बयान जो रूस के वजीर खारजा का आया है, वो कहते हैं जी अब बात होती है इसमें हमें शायद न्यूक्लियर पनडुब्बियां भी मिलने का वो है जी। दो हमारे ये कोई मामूली हथियारों की खरीद फरोख्त नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी महाविनाशक ताकत का हस्तांतरण है